Ah, eu já posso ir daí, acredito.
गोंदेगाव, बंदे, फरदापूर, जामती, बनवटी, निंबाती, जरंडी. हॅलो, बनवटी, निंबाती, जरंडी. एक मिनिट. हो, गोंदेगावचं दोन्ही गेलेलं आहे. एक मिनिट. आधी तर दोन्ही गेले होते, तुम्ही आता काय केले का? आता काय केलंय का तुम्ही त्याला? म्हणजे आधी दोन्ही राऊंड झाले होते. 3G चालू झाले गोंदेगाव. नाही, ऍक्च्युली 2Gच डाऊन होतं. नाही 3Gच डाऊन होतं. हे सॉरी, 2Gच डाऊन होतं गोंदेगावचं रात्रीपासून. गोंदेगावचं फक्त 2G डाऊन होतं रात्रीपासून. हा, सोयगावचं 2 डाऊन आहे. वर्धापनचं 2G बंद आहे ना. काय झालं युवराज? कार्ड कुठले गेले? हा, नाही, सोयगाव दोन्ही गेलेले आहे 2G 3G. सोयगावचं दोन्ही गेलेलं आहे 2G 3G. कशामुळे भेटायला पाहिजे? तुम्ही काय काम केलं? तुम्ही आता काही काम केलं का? कशामुळे भेटेल रात्री बंद पडलेलं? कार्ड होतं का? काय काम केलं? काय टाकलं तुम्ही तिथं? आणि कार्ड कार्ड खराब आहे, कार्ड खराब आहे काय म्हणले मग सगळे? कार्ड खराब आहे म्हणले ना काही? हाँ वो जैसे बना मॉर्निंग में बना वैसे ही। अरे वो अलग चीज है, ईब अलग है, उबालना है ईब दो। तुम्ही यार वो बोलले का देवेंद्र मॅडमशी चालू का बोलणं? खाने के टाइम की बात है, पत्ती नाही भेटलं तुम्ही? लावलं तुम्ही पेन? नाही. नाही, अजून तरी नाही भेटत पेन. सगळे 2G डाऊन आहेत, फक्त सोयगाव आणि जरंडीचे 3G पण डाऊन आहे. हा, म्हणूनच मग सांगायचं तुम्हाला. हो, चालेल. सेम टाइम डाऊन, सेम रात्री 10 वाजून किती मिनिटं? 1 मिनिट, 5 मिनिटं, 10 वाजून 5 मिनिटं.
हॅलो. हा, एक मिनिट. नाही भेटत ते अजून. हॅलो. नाही भेटत. नाही. देखा तुमने अभी जो है, अब तुम अपने आप को देखोगे ना। हा सर. तर तो आहे ना साईटवर, आता काम करतोय तो पॅच युवराज. हो. सर आता मिश्रा सरांना मी फोन करून अपडेट केलं, त्यांनी तसं म्हणलं इक्विपमेंट हे मीडिया केबल मीडिया कार्ड खराब आहे असं त्याचं म्हणणं आहे. मिश्रा सरांचं म्हणणं की केबल कार्ड खराब आहे आणि हा म्हणतोय मॅम पॅच कॉर्ड मी चेंज केली पण अजून तरी आप नाही झाले. सर थोड्या वेळात बघूयात देवानी मॅडम.
हेलो। हाँ वसीम खान जी, वो ये बंद है ना, कागजीपुरा 2G।
પછી જોઈ લેજો ડિસ્કશન अपन निकल गया आया सवाल आंसर सही हाँ हाँ अभी स्टार्ट का 15 लोग ही आए हैं अभी। ఈ దీంట్లో సేవ్ చేసి ఉంటుంది మనం కొట్టుకోవచ్చు వాళ్ళని అడిగేది ఏం బతిలాడి ఇచ్చేసిన చూడు అప్లోడ్ జీరో అమౌంట్ పేమెంట్ ఉన్నా కూడా అది ఎందుకు పెట్టుకునేది జీరో ఉంది అవును అదే చూసిన
ये ये एग ये क्या ABCD है ABCD Zero. 4E HW. Wait for now. Koई ना जाता है. Okay. ये वाला नंबर बोल दो. Yeah, good morning all. Nageshwar Rao, Lalit Kumar. Indumati ma'am, please mute your. Hello, please mute your speaker. अच्छा मुझे तो ये रहता है चुनकर. Training ఉంది కదా క్లాస్ చెప్తున్నాను. క్లాస్ వినాలా? అదేనా ఇప్పుడు సుప్రభాత్ అదే స్టార్ట్ కాలే 10 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది. హలో మేడం ఓటీపీ చెప్పరా ఒకటి వచ్చింది. మళ్ళీ కొట్టినా. ఓకే మేడం.
बनाओ अभी नहीं तू अरे पी तो सही आप पी अरे और नहीं मतलब पी ले सही पी హలో డివిజనల్ ఆఫీసర్ మాట్లాడుతున్నాండి మీరు చెప్పలేదుగా మీరు లెటర్ ఇచ్చిపోయారు కానీ అదే అండి ఇక్కడ కౌంటర్ లో కట్టేసాను లేకపోతే లక్ష్మణ్ ఉంటాడు నెంబర్ పంపిస్తాను ఆయన గూగుల్ పే చేస్తే ఆయన పెట్టేసి కట్ చెప్తే వాళ్ళు క్లోజ్ చేస్తాం మళ్ళీ 3వ తారీఖు బిల్ వస్తుంది అట్లా కాదండి నేను అనేది ఏంటంటే అవును నేను అట్లా అంటలేదు మీకు కట్టుకుంటే మీకు మళ్ళీ బిల్ రాదు ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತದ ನೀನಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಅವರ ಟ್ರಾವೆಲ್
Hello everyone, good morning. How are you? ये तो हुई की बात करूं जो मैं छोटे तो मुझे ठीक है लड़के सारे नोड़े पड़ा करती यहाँ जाना यहाँ नहीं जाना ये खाना वो नहीं खाना और सच्ची में मैंने तो कह रहा कौन सा ऑर्डर ग्रेवी आलू तो ग्रेवी है और दूसरी बात ये कि उस खाने की बात करनी जो मैंने तुम्हारे यहाँ से ऑर्डर किया है तो मुझे भूख लगी है ये जो हिंदी पॉसिबल नहीं है इतने दिन में आ जाती है बिकॉज़ आई एम थिंकिंग कि नवंबर में इंग्लिश का शो शुरू करूं पहली बात ये जो इंग्लिश है ना वो कितने दिन में नहीं आती है ये ना करूं सच्ची क्यों नहीं होती 10 सालों से जानता हूँ वही 2-3 वर्ड बोल रही है बड़ी आई प्रिंसेस ऑफ मलाड आज तुम छोड़ के गए थे तो मेरे अच्छे बेटे के चलते मेरे को कटवाई निकाल दिए So now I'm working for देखिए ये सब कौन कब निकल जाएगी पता नहीं है और किसके फिनांशियल पे आके बैठते हैं तो पता नहीं अपना अपना साइकिल करना पड़ता है भाई साहब क्योंकि हम सब ले लेके सोनी के हाथ में दिए हैं खर्चे इतने क्या करें अलग अलग काम धंधे करने पड़ते हैं आपको तेल का भाव क्या हो गया और दो ठीक है दोनों में मैं सरसों की तेल की बात नहीं कर रहा मैं ऑलिव ऑयल भी खाना खाता हूँ पकड़ा फोन ले जल्दी बात कर रही हूँ मेरा वो तो बोतल में सामने मेरे सामने नाम लिख दे पहले बीएसएनएल का तो नीचे ये है साफ बड़ी बड़ी ये आगे गेट डायरेक्ट ऊपर से ऊपर रोज मार्केट करवा रहे हैं क्या अच्छा लग रहा है रोज जा रहे क्या चल रही
four, three, four, ऑडिबल मेरी आवाज आ रही है सभी को? थोड़ी कम आ रही है के। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है सर? अब ठीक? हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है के, अब अच्छी, अब अच्छी है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज ईबी का पोर्शन कवर होगा और इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसा कि नरेंद्र सर ने बताया कि एक पावर प्लांट एडमिन का पार्ट भी होगा। ठीक है, तो सर ये एडमिन वाला सेकेंड सेशन है ना सर? हाँ, सेकंड ही है। सेकेंड में ठीक है, तो उसके बाद ये सेकेंड पार्ट जो सेशन है वो एडमिन का, बाकी जो पूरा दिन है वो आपका ईबी पे होगा। ठीक है, होपफुली कि मेरी आवाज आ रही होगी सभी को। ठीक है, थैंक यू।
ਜਿਹੜਾ ਆਈਪੀ ਕਿਹੜਾ ਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪੀਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ 186 ਵੈਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ
Okay, good morning to all of you. हमारे बीच welcome to Nitin Sharma ji on behalf of LTTC. Today is a delivered session on the EB part, and on behalf of LTTC, welcome to you. Handout से नहीं तो आप उसमें ऐसा करिए ना, आप वहां से ले लीजिए। Good morning, sir. Good morning, good morning. Just wait now, Nitin Sharma sir ji here for today's session delivery. Okay, sir. Okay, and on time. New business. Okay. कैसा? अच्छा, ठीक है. Good morning, all of you. I'm audible? Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Yes, sir. First of all, I would like to introduce myself, Nitin Sharma, and here in ALTTC Ghaziabad since 2019, I am handling the post of JTO, EB and MC, Enterprise Business and Management courses here. As per my qualification concern, I have done my Electronics and Communication BTech in 2005 and MTech in VLSI Technology and Design in 2011. After that, I have done my MBA in Project Management, and presently I'm trying to pursue my PhD as a research scholar in Artificial Intelligence. So today's topic given to me is which we will discuss about. Hello? Hello? Is there language would be the only English language would be prefer, or I should mix the Hindi and English? सर मिक्स भी चलेगी, मिक्स भी चलेगी. मिक्स भी चलेगी. ओके, तो अगर हम डिस्कशन करें न्यू बिजनेस से पहले हम ये जानना चाहेंगे आप लोग बिजनेस से क्या समझते हैं. कोई भी व्यक्ति मुझे बताए बिजनेस से आप क्या समझते हैं. इंग्लिश बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस. कोई भी पर्सन मुझे बताए कि बिजनेस से वो क्या समझता है. कोई एक सर प्लीज इन इंग्लिश सर. पार्डन, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी. सर काइंडली इन इंग्लिश. Okay. Someone from the south who could not understand English. And Yeah. my question is that what do you mean by business? Basically, when business comes to your mind, what do you think about what is business? If you will define, not the definition written in any book. What basically you understand about business? Give and take, sir. Yes, give and take. Okay, means we give something and we take return back something. Okay, and basically in terms of it's a very basic definition. Okay, right.
So when we talk about business, business is basically a system. Business is a system which create wealth, which create money, which create revenue, right? So in terms of BSNL, what system we have created? Anyone? What is the We ISP of provide BSNL? we provide services, data, Okay. and earn by the services. Okay. We are basically service provider. That is why we provide services, and our services related to the telecom and data, voice, and data may be in any form. It may be text, it may be voice, it may be video. That is called data. So we are service provider, but our ISP is not the services we are providing. Our ISP is BSNL. Basically, each and every corner of the country, we are having network. We are having infrastructure, right? So when it comes to the new business, we are having a telecom business, we are having a service provider. Then what is new business and what is the significance? Why we are introducing new business? Anyone? नंबर बोले Anyone? If there is any no any, so I will explain. Okay. In any company or any businessman, business is somewhat a system creation. We have created a system, public using a part of that system through our services, and we are collecting revenue. A big network. Company which will be having the largest network, that will be the richest company. This is the basic funda of any business. So in terms of BSNL, if I ask you, what is the customer base of mobile? ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ ਜੇ ਭਰਿਆ ਦਾ ਭਰ ਦਿਓ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ Can you mute yourself? If somebody is talking on the phone, then ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ then it will be ready. Mute yourself, please. सर आप एक बार जो है ना सभी को म्यूट कर दीजिए, अपनी तरफ से म्यूट कर दो सभी को एक बार। हाँ सर, मैं सर ऑफिस तो हूँ, मेरा सेशन चलता है, मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में। क्लास है ना सर, ऑफिस तो हूँ लेकिन क्लास में। So, we are talking about the new business. In terms of BSNL, BSNL is a service provider in telecom sector, established company, largest network, largest infrastructure. But when it comes to the new business, because change management says that change is law of the nature. And if we are having a lot of competitors in the market who are using latest technology, and we are still using 2G and 3G. So to survive in the market and to earn revenue, to earn bread and butter, we'll have to stand in the market with the same strength as well. So for that purpose, BSNL is going to expand the business areas. And today we are collected here to discuss what are the areas in which BSNL is now working as a new business opportunities we are seeing. So we are our learning objective for this session basically are, first is software as a service, that is SaaS. Software as a service, which is going to be given through a service provider. That will directly not going from the BSNL. That will be a collaboration, that will be a mutual agreement between the service provider and the BSNL. And this is totally revenue share basis model. Second is monetization. Third is infrastructure sharing. Fourth is virtual network operator, that is VNO. And last is satellite business. So these are the opportunities we are having with us. And today we are going to discuss one by one. So this subject as a new business, today we are going to study at the
exam point of view. In exam point of view, when we prepare something, and we prepare the subject as a prepare the question can be put up in the exam. अच्छा क्या वही कोई तो सीधा क्योंकि ये First of नंबर का all, पता नहीं पूरा कि नहीं चलता है we should know about नंबर कितने 62 38% सर सर आप आज इनको नहीं सबको सर मीट कर दीजिए just a minute. That is now it is okay. So am I audible? So what we were discussing first the areas in which we have seen the opportunity. These are software as a service, that is SaaS. Second is monetization. Third is infrastructure sharing. Fourth is virtual network operator, that is VNO. And fourth is satellite business, satellite because we are having the Inmarsat and the setup for the Earth station. So we can use this this band of frequency also for a new business opportunity. So when we talk about the new business in the BSNL, we know that because in thought cut competition in the market, and we are having a lot of competitors, and there is a very much downfall in the customer base of BSNL. So we are moving to new business opportunities. First one is the SaaS provider. When we talk about the SaaS provider, BSNL, as we know, that having in this document, this is written more than 98 million subscribers, except Delhi and Mumbai, mobile services across the nation, except Delhi and Mumbai has a subscriber base of more than 98 million. So, in the exam point of view, mobile customer base should be updated to you. So, in this document, this is 98 million. And it was in 2014, it was 94.6 million. The data is changing, and this 98 million is not the correct. At present, it has been increased up to March 2023. It became around 105 million. Customer base is enhancing of BSNL mobile section. So in your exam point of view, if you see the answers for options, then choose wisely for the mobile customer base, subscriber base, if question put up from this line. So the document we are reading for the preparation of the exam point of view, we will have to focus on this particular document. As per document, this is 98 million. But if the scenario is exam came in front of you and there is no option of 98 million subscriber base, then you should know about the current data around 105 million. That will be the answer. Okay answer. More than 105 million, maybe it is enhancing mode. So you may choose wisely. Answer will be correct. Okay. So BSNL is the only service provider making focused effort and planned initiatives to bridge rural-urban digital divide in ICT sector. What does it mean? That is, ICT means one kind of question maybe arises about the full forms, like SaaS. It may ask about the SaaS. What is the full form of SaaS? Abbreviation of SaaS. Then you should know about SaaS stands for the software as a service. What is VNO? VNO is a virtual network operator. It is kind of question can be put up. So if we talk about ICT, what is ICT? Information and Communication Technologies. So we should know about the full forms of abbreviations used in the document. Question may be put up like the abbreviations. Excuse me, sir. Can you tell me the full form of ICT? ICT is the Information and Communication Technologies. You can write down. Okay. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So it is a one kind of question because theoretical topic is having a narrow band to generate the questions. So how much kind of questions can be generated from a particular document? You should be prepare your mindset like this when you preparing the subject. So if you are preparing the business subject,
most of the part are theoretical and to understand what is going to be. But in the exam point of view, if you will prepare, you will have to focus on from which line a question can be put up. A multiple choice question can be put up from that particular line. So study the document like this, right? Got it? So it is a special class. So you just focused how to crack the exam from where the question is going to be put up. So either question may be in this particular document, either question may be put up the full forms, abbreviations, or question may be based on the data, or question may be if we are talking about the service providers facilities, what are the new businesses? All the new businesses, BSNL is not going to invest any capital. So all the businesses are the provider bases, which are the third parties, which are the private players. So when we are talking about the private players or the third party business model, so always all kind of businesses depends on the revenue share basis in BSNL also. So we should know about what is the ratio between BSNL and the third party to share the revenues. Question may be put up from there. And what are the terms and conditions on which that particular business is going to be exist in the market? Okay. So focus. Only three kind of question can be put up from this topic. So first one is your full forms. So always take care when you go through the document. I will important abbreviations I will tell you as ICT you know now, VNO you know now, SAS you know now. In wake of government thrust in as Indian government is expanding the network up to the rural areas, and no rural in any rural areas and any border areas, no private player in the competition. So in coming times, our customer base is going to be increased whenever the network work has been completed. No fun project, and these projects are creating the infrastructure for the BSNL growth. So government is very much supportive for the digital India, e-governance, and other initiatives focused primarily on the technology-based services. And this coming era is from for the AI era, artificial intelligence era. So government is preparing BSNL to be strength with the strength in the market. So when we talk about the SaaS revenue share policy, it is 40:60 ratio. BSNL and the provider and the revenue share model is 40:60 basis, irrespective of SaaS offering. Whatever SaaS will be, whatever the service provider will be giving the offer, the minimum that should sharing would be 40:60 ratio. And pricing model, discounts, etc. for the offered solution shall be detailed in the agreement which will be signed between BSNL and the SaaS provider. In SaaS software as a service, when provider will give a plan using the BSNL network, if he or she wants to give some service to their customers, they are having some customer base and they are getting some software based services, and they need network infrastructure which they are borrowing from the BSNL, then revenue share basis would be 40:60. It is clear? So it should be in your mind. Now the responsibility, what will be the responsibility of SaaS provider and what will be the responsibility of the BSNL? So here it is. Responsibility of software as a service provider, SaaS provider, that shall be responsible for complete implementation of software solution during the period of agreement with customer, including comprehensive AMC, including wherever required by the customer. Complete implementation means full responsibility to implement software solution for the customer as specified by them. मीन्स सास जिस प्रोग्राम के साथ में BSNL के साथ में एग्रीमेंट करता है सर्विस प्रोवाइडर, उस एग्रीमेंट में यह है पहले से सुनिश्चित हो कि जो सॉफ्टवेयर सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, उसकी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की होगी, BSNL की नहीं होगी. फर्दर
Comprehensive AMC means full responsibility to this AMC means, you know, AMC is annual maintenance charges. Annual maintenance charges means full responsibility to undertake effective and efficient operation and maintenance activities as specified. जो उसने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की स्पेसिफाइड की होंगी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारी की सारी सास प्रोवाइडर की होगी. This includes all incidental or services, materials, manpower, permissions, licenses, spare consumables, whether explicitly listed or implicitly required for the satisfactory completion of the performance of the system as per the specifications, meeting international codes and standards. जो सर्विस प्रोवाइडर बीएसएनएल के साथ में एग्रीमेंट करके सर्विस को प्रोवाइड करा रहा है और जिसकी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इन सब बातों का एश्योरेंस देगा, तभी उसके साथ में कोलैबोरेशन किया जा सकेगा. गॉट इट? सास प्रोवाइडर शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल, सब कुछ वो एक्टिविटीज जो हैं इन्वॉल्व इन एंड टू एंड डिलीवरी टू द कस्टमर. सॉफ्टवेयर वैल्यू की चेन भी वही बनाएगा, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग. लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है. सॉफ्टवेयर के केसेस में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है. सॉफ्टवेयर के अपडेशन का भी इशू होता है, टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट करना. सॉफ्टवेयर में अगर कोई बग आ जाता है तो उसको रिमूव करना. तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर की सास की होगी. शैल have to finalized as per the requirements of the customer, और कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार वो जो भी चेंजेस करेगा सॉफ्टवेयर सर्विस में, उसकी जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की होगी. अब बीएसएनएल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसमें? बीएसएनएल विल बी रिस्पॉन्सिबल टू इंटरेक्शन विद द कस्टमर इंडिविजुअली और ज्वाइंटली विद सास प्रोवाइडर. बीएसएनएल कस्टमर के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन में रहेगा और वो इंडिविजुअली भी रह सकता है और वो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू भी रह सकता है. बीएसएनएल विल प्रोवाइड टेलीकॉम कनेक्टिविटी टू सास प्रोवाइडर. इस केस में बीएसएनएल टेलीकॉम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा सास प्रोवाइडर को फॉर इंटीग्रेटिंग सॉफ्टवेयर सोल्यूशन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी आर एसएमपीपी कनेक्टिविटी फॉर एसएमएससी, पीआरआई कनेक्टिविटी फॉर वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, WAP connectivity, broadband connectivity for internet, subscriber identity module, SIM, etc. ये सब प्रोवाइड कराने का काम किसका है? बीएसएनएल का. ये बीएसएनएल कराएगा. बीएसएनएल will provide short codes, long codes, access point name, APNs, SMS, USSD, IVR, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएसएनएल की रहेगी. बीएसएनएल में यूज इट्स मैन पावर फॉर डिप्लॉयमेंट. It depends upon the BSNL because the word may use is here. BSNL may use its manpower for deployment, field support, for day-to-day operation and maintenance if required and feasible. It's a conditional statement. BSNL may use its manpower for deployment, field support for the day-to-day operation and maintenance if required and feasible. BSNL will provide support for telecom network related problems or its services. BSNL shall ensure complete compliance of all licensing and regulatory guidelines related to its network during the whole agreement period. BSNL shall make effort that revenue is realized from the customer in the time-bound manner so that SaaS provider is not undue delay in payment after he has completed the obligation under the contract. Here, revenue collection is the responsibility of BSNL. When revenue will be collected, then only the part of the service provider can be paid. BSNL shall ensure complete compliance of all licensing and regulatory guidelines related to the network. BSNL can provide landline and broadband connectivity to end user customers to access SaaS hosted application. However, in such cases, service provider
will not have any share in the revenue. The above broad roles and responsibilities are only indicative and tentative. It may be changed and may differ on case-to-case basis at the time of discussions with the SaaS provider based on type of solution proposed and responsibility matrix finalized. Is it clear? एक्सक्यूज मी, SaaS, sir. ये सास प्रोवाइडर का कोई एग्जांपल बताएंगे? कौन है सास प्रोवाइडर और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बीएसएनएल के साथ? जो सॉफ्ट नेटवर्क को यूज करके अगर प्रोवाइड कराना चाहता है, और अगर एग्जाम्पल की आप बात कर रहे हैं, एज सच अभी कोई एग्जाम्पल नहीं है, बिकॉज दिस इज न्यू बिजनेस। ये न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन की है बिजनेस के लिए कि अगर कोई मार्केट में कोई नया ऐप डेवलप करता है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करता है जो कस्टमर्स की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और वह उसके पास में नेटवर्क नहीं है, उसको टेलीकॉम नेटवर्क चाहिए, तो वो बीएसएनएल के साथ कोलैबोरेट करके अपने कस्टमर्स की डिमांड्स को पूरा कर सकता है। उसके लिए जो नियम बने हैं वो नियम आपके साथ अभी डिस्कस किए गए हैं, राइट? ओके ओके, ठीक। इट्स अ न्यू बिजनेस, राइट? ये नया प्लान है, इसमें ऑफर है, ओपन ऑफर है। अगर आप भी कल को कोई सॉफ्टवेयर बना लेते हैं और वो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको एक नेटवर्क चाहिए, जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन पूरे सॉफ्टवेयर का आपके पास में पूरा होल सोल कमांड है कि उसका अपडेशन और उसका आपके पास पूरी टीम है, तो आप भी बीएसएनएल के साथ में कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि मैं सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा सकता हूं। आई एम ए सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। तो वो सॉफ्टवेयर जो कस्टमर की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो और उसकी डिमांड हो मार्केट में डिमांड होगी। तो अभी एग्जांपल के लिए आप देखें कि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे गेम्स खेलने के बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स, गेम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जिनको जिनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि वो गेम ऑनलाइन खेले जाएंगे। अब कोई भी ऑनलाइन गेम अगर खेला जाएगा तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए, राइट? तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं कि जिनको आप गूगल ऐप से डाउनलोड करते हो और सीधा यूज कर लेते हो। Sir, what is the difference between infrastructure, sir, as a service or software as a service? इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस मीन्स कि आपका जो केबल पड़ा हुआ है पूरे भारत में, आपके जो बीटीएस लगे हैं पूरे भारत में, आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हार्डवेयर जो एग्जिस्ट करता है जिसको आप छू सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग पहले से जो सर्विस दे रहे हैं वो तो हम दे ही रहे हैं। अभी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके और हम क्या दे सकते हैं उस पे बात चल रही है। तो उस पे जब बात चल रही है तो अब बीएसएनएल क्योंकि केवल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, अपने यहाँ आरएनडी तो है नहीं, डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है सॉफ्टवेयर का या फिर हार्डवेयर का, तो फिर किसके साथ में मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे ना। तो अभी क्या है कि कोई हमारे पास आता है कि जिसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन उसके पास में सॉफ्टवेयर का सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन कस्टमर को रिक्वायर्ड है, उसकी डिमांड है। तो ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर आएगी बीएसएनएल के पास में तो उस पर विचार किया जाएगा और 60-40 रेशो के रेवेन्यू बेस शेयरिंग बेसिस पर टर्म्स एंड कंडीशन, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि केस टू केस बेसिस विन विन सिचुएशन जहां पे होगी एग्रीमेंट साइन होगा और अपन लोग उसके साथ काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज सास, राइट? सपोज इतने सारे एप्लीकेशंस, इतनी सारी कंपनियां नए नए आ रहे हैं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लेके, किसी भी समस्या का समाधान अगर कस्टमर की हो रहा है और उस समस्या से पीड़ित लोग ज्यादा हैं तो वो डिमांड में हो गया, डिमांड और सप्लाई का गेम है। तो अगर वो डिमांड में होगा और ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा किसी सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से तो उस पर विचार किया जाएगा। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस विद द हेल्प ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर नाउ। Okay, sir. Okay. ओके सर हाँ सर ये जी। 40 और 60%, 40 किसका, बीएसएनएल का, और 60? 40 बीएसएनएल का है,
क्योंकि बीएसएनएल इसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है, सिर्फ टेलीकॉम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देखा ही होगा, ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सर्विस प्रोवाइडर की है। और अगर आप कहें कि बिल कलेक्शन की जिम्मेदारी बीएसएनएल को क्यों दी गई है, भाई सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करा रहा है तो बिल भी वही करे। तो बिल इसलिए क्योंकि बीएसएनएल इज ए ब्रांड नेम, वो सर्विस प्रोवाइडर को कोई जानता नहीं होगा। तो बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी का जो एक वो है, तो इसमें इसकी बिलिंग में लोग थोड़ा सा जागरूकता के साथ बिल जमा करेंगे, तो रिवेन्यू रिवेन्यू कलेक्ट करके और फिर रिवेन्यू शेयर हो जाएगा। Operation and maintenance. Sir, maintenance and operation. हाँ, मेंटेनेंस का भी सब वही देख रहा है। BSNL can do maintenance. BSNL कैन हाँ, मेंटेन, मे बी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में मे बी वर्ड यूज है, मे यूज इट्स मैन पावर। सर ये बीएसएनएल का मैन पावर यूज कर सकता है मतलब, है ना? हाँ, मतलब ये कि कुछ कंडीशंस में जी बीएसएनएल अपनी मैन पावर को डिप्लॉय कर सकता है फील्ड में। जी 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 तो जी इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए अगर वो रिक्वायर्ड है, अगर उसको जरूरत है, लेकिन उस केस में उसका रिवेन्यू से कुछ ना कुछ कट करेगा ना बीएसएनएल, बिल्कुल सर। तो वो उसकी एग्रीमेंट में शर्त होगी, कुछ ना कुछ जी एग्रीमेंट सर। में शर्त लगाई जाएगी, ठीक है। और उसमें जी ये भी जी देखा जाएगा कि डिप्लॉय करना स्टाफ को फिजिबल है कि नहीं है, जी सर। ये भी देखा जाएगा कि फिजिबल है कि नहीं है, राइट। तो जी सर बीएसएनएल, जी ये आपका हमने जो भी डिस्कस किया, ये किया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर के केस में, और नया बिजनेस का नाम था सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सर। नाउ द सेकंड वन इज मोनेटाइजेशन ऑफ को लोकेशन फैसिलिटीज। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोगों के पास में जितनी भी प्रॉपर्टी। ऑफिसेज, जितनी भी बिल्डिंग्स में हमारे पास स्पेस वैकेंट है, हम उन जी वैकेंट जो स्टेशंस हैं, चाहे वो एक्सचेंजेस हों, चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर्स हों, जहां पर भी हमारे पास में प्रॉपर्टी है जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है, तो उसको मोनेटाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं। मोनेटाइजेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं उनको, उनको हम को लोकेशन फैसिलिटीज दे सकते हैं, हम बैंकों के साथ में टाई अप कर सकते हैं, हम दूसरे संस्थानों के साथ में टाई अप कर सकते हैं जिनके पास में स्पेस नहीं है। तो अपने पास तो स्पेस अपना है, तो उसमें क्या है कि रेंट बेसिस पे हम उनको कोलोकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट being rolled out by state government have parallel demand of data centers growth as a result द डिजिटल इकोसिस्टम। अभी क्या है कि जितने भी स्मार्ट सिटीज डेवलप हो रहे हैं, एआई के आने के बाद में तेजी से जो चेंज आने वाला है, उस चेंजेस में लोगों के पास में नए नए बिजनेस आइडियाज हैं, लेकिन उनके पास में ऑफिसेज नहीं है, ना ही उनको ऑफिस परचेज करना, प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत हाइक पर हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, रेंट पर वो एग्जिस्टेंस में बिजनेस प्लान लेके आते हैं, तो उसमें रेंट बेसिस पे वो बिजनेस चलते हैं, right? In view of emerging scenario, BSNL intends to monetize its spare infrastructure and space available in its technical oblique exchange buildings in smaller cities across the country by promoting co-location services due to increased business opportunities in digital ecosystem. For co-location is a practice of renting space for the third party data center services provider DCSP। एक और यहाँ पर मिला है, इसका एब्रिविएशन है डाटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर। सर्वर्स एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर एट एनी प्रीमाइस और डेटा सेंटर फैसिलिटीज। जितने भी ये स्मार्ट सिटीज और आगे आने वाले टाइम में डेटा का इंपॉर्टेंस इतना बढ़ जाएगा कि डेटा को स्टोरेज करने के लिए और डेटा को हैंडलिंग के लिए जो सर्वर्स हैं, उनको रखने के लिए जो स्पेसिस चाहिए, रेंट बेसिस पर हम अपने प्रीमाइसिस के वैकेंट प्लेसेस को रेंट पर दे सकते हैं कंपनीज के लिए, डेटा सर्वर्स को डेटा सेंटर्स बनाने के लिए, डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर एट एनी प्रीमाइस और डेटा सेंटर फैसिलिटी। द फॉलोइंग फ्यू इंपॉर्टेंट सर्विसेज विल बी ऑफर्ड बाय पार्टनर थ्रू को-लोकेशन फैसिलिटीज। को-लोकेशन में हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? मैनेज स्टोरेज, क्लाउड होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग, content delivery servers, etc. This policy is aimed at facilitating the entities interested in starting a data center or provides co-location services by providing ready infrastructure with power connection and
रेडी बैंडविड्थ बीएसएनएल के पास में दोनों ही अवेलेबल होता है, हर एक्सचेंज पर अवेलेबल होता है, और हर ऑफिस में कनेक्टिविटी और ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो डेटा सेंटर्स को जिनको रिक्वायरमेंट होती है वो हमसे ले सकते हैं, उनको अप्रोच किया जा सकता है कि हमारे यहाँ वैकेंट स्पेस है, अगर आपको यूज करना है तो आप रेंट बेसिस पर इसको ले सकते हो, सर्विस रेवेन्यू शेयरिंग पे ले सकते हो। रेवेन्यू शेयर एग्रीमेंट बिटवीन बीएसएनएल एंड पार्टनर। In case the partner is using the premises for cloud services in the data center, then BSNL can provide free cloud bandwidth for such business while all other fixed charges will remain same. इसमें कुछ चार्जेस फिक्स्ड होंगे, कुछ फ्लेक्सिबल होंगे. However, in lieu of BS bandwidth, BSNL will share 20% of bill revenue for all the business in 1 year of agreement and 25% of bill revenue for all the business subsequent years, other than business continued from 1 year with 20% revenue share. क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब तो है पहले कि साल में 20%। हाँ, पहले साल में 20%, सेकेंड ईयर में 25%, पूरे साल का जितना उसका बिलिंग होगा, जितना रेवेन्यू वो अर्न करेगा, उसका 20% बीएसएनएल को देगा. ठीक है. और सेकेंड ईयर मतलब 1 ईयर के एग्रीमेंट में, और उसके बाद 25%, 5% बढ़ जाएगा. ठीक है. सर और समय के लिए हो जाएगा 25%। 25% अभी इसमें लिखा है कि सब्सिक्वेंट ईयर्स. एग्रीमेंट का जो डेट होता है, एग्रीमेंट में एक टाइम बाउंड एग्रीमेंट होते हैं इस तरह के, तो वो एग्रीमेंट जितने साल के लिए होगा उतने साल तक चलेगा 25%, और उसके बाद एग्रीमेंट रिन्यू होगा तो उसमें फिर नई नए रेवेन्यू शेयरिंग और नए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगे. गॉट इट. इन केस पार्टनर वांट्स बिलिंग टू बी डन बाय बीएसएनएल, ऐसा भी हो सकता है पार्टनर कहे कि बीएसएनएल बिलिंग जो है वो बीएसएनएल करेगा. The revenue share will be 25% in the first year in that case and 35% in subsequent years. Got it? अगर पार्टनर wants billing to be done by BSNL तो पहले साल का रेवेन्यू शेयर जो होगा वो 25% होगा और बाद के सालों का 35% होगा. The revenue share of revenue billed by BSNL will be net of license fee. The revenue share shall yield more than the bandwidth charges provided for cloud services. Any shortfall in such revenue share can be made up in fourth और fifth year. चौथे पांचवे साल तक शॉर्टफॉल देखा जा सकता है कि कुछ शॉर्टफॉल आ रहा है क्या. मतलब जितना हम उनको बैंडविड्थ दे रहे हैं, बैंडविड्थ का भी तो चार्ज कैलकुलेट करेंगे. और बैंडविड्थ इस केस में हमने ऊपर लाइन में लिखा हुआ है कि बैंडविड्थ फ्री प्रोवाइड कराएगा बीएसएनएल, तो फिर उसमें लॉस तो नहीं हो रहा, शॉर्टफॉल तो नहीं हो रहा, रेवेन्यू मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, ये चीज देखी जाएगी. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस पार्टनर. इस केस में मोनेटाइजेशन के केस में बिजनेस पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? Various security guidelines issued time to time by BSNL and Government of India shall be complied. Power backup system to be installed and maintained by the partner or BSNL based on feasibility. वहां पर पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो सर्विस प्रोवाइडर जो पार्टनर है बीएसएनएल का वो लगाएगा या बीएसएनएल लगाएगा, ये फिजिबिलिटी पर बेस्ड होगा. बिल्डिंग सिक्योरिटी शुड बी 24/7 365. पूरे साल 24/7 की वहां पर सिक्योरिटी की व्यवस्था, बिल्डिंग की सिक्योरिटी की व्यवस्था कहाँ पर? एक्सक्लूसिवली उनकी एंट्रेंस पर, उन बिल्डिंग्स की एंट्रेंस पर, और जहां पर भी ऑथराइज्ड पास सिस्टम होगा वो बिजनेस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. The annual charges for leasing out the infrastructure will be payable from the 15th day of signing of the agreement. जो एनुअल चार्जिंग होगा जिस पर हमने लीज आउट कर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एग्रीमेंट होने के 15 दिन के अंदर उसको जमा करना होगा, एनुअल चार्ज. Any internal renovation of the allotted space will be the responsibility of the partner.
आपने उनको जो भी स्पेस दिया है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, जितना स्पेस अपने ऑफिस में, एक्सचेंज में या प्रोवाइड कराया है, उसमें वो इंटरनल कोई भी डेकोरेशन कराना चाहता है, रिनोवेशन कराना चाहता है, तो उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की होगी, बीएसएनएल नहीं करवा के देगा उसको। सेपरेट इलेक्ट्रिकल सब मीटर विल बी इंस्टॉल्ड टू मॉनिटर द पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन के लिए वहां पर सेपरेट मीटर लगाया जाएगा। इफ रिक्वायर्ड पावर चार्जेस विल बी हाउएवर पेएबल एज पर एप्लीकेबल फिक्स्ड एनर्जी चार्जेस रेट फॉर द साइट। द एसी चार्जेस विल बी इन एडिशनल इफ बीएसएनएल प्रोवाइड द एसी। अगर बीएसएनएल एसी प्रोवाइड कराएगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उसके चार्ज अलग से लिए जाएंगे। Security measures like firewall, etc., as well as access to the system shall be arranged and managed by the partner. Security system in software provided by the partner. It is mandatory to take bandwidth from BSNL. इस बिजनेस में, मोनेटाइजेशन के बिजनेस में, अगर बीएसएनएल अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई अपना लैंड या कोई अपना ऑफिस अगर दे रहा है किसी को अपने डेटा सेंटर के लिए, तो शर्त यह होगी कि उसके लिए मैंडेटरी होगा कि प्राइमरी बैंडविड्थ उसको बीएसएनएल से ही लेना पड़ेगा, वो किसी और कंपनी से नहीं ले सकता। Only activities related to running of data center, cloud service, managed service, co-location data servers will be carried from BSNL premises. वो वहां पर बीएसएनएल प्रीमाइसेस से इन्हीं सर्विसेज को रन कर सकता है। एंश्योर दैट नो अदर एक्टिविटी इज कैरिड आउट, और ये भी एंश्योर करेगा कि वो इनके अलावा कोई और एक्टिविटी वहां पर नहीं कैरी आउट कर रहा है। गॉट इट? ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने डिस्कस करी मोनेटाइजेशन के केस में पार्टनर की, सर्विस पार्टनर की। अब इस केस में बीएसएनएल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? BSNL shall provide space, air condition wherever possible, including that for UPS power plant, etc., and electrical main power supply to the co-location partner. The space and power and AC as required shall be provided by BSNL on chargeable basis, subject to the technical feasibility and availability. It is clear? In case AC is provided by BSNL and is used for cooling of BSNL area in the same building or premises, also then based on the area rented out to co-loc partner will be the basis for calculation of electricity charges of AC, which will be fixed up by a committee of BSNL and partner representative at the time of agreement. ये क्लियर है? ये वाला पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी के डिस्प्यूट्स ना हो उसके लिए ये पॉइंट बनाया गया है कि जिस प्रीमाइसेस में बीएसएनएल का ऑफिस भी चल रहा है और को पार्टनर का भी ऑफिस चल रहा है, अगर वहाँ पावर प्लांट, पावर सप्लाई बीएसएनएल प्रोवाइड करा रहा है और वहाँ पर एसी की फैसिलिटी भी दी हुई है जो कि चार्जेबल होगा, तो एग्रीमेंट में ये तय हो जाएगा कि किस तरह से उनसे फिक्स्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिया जाएगा। इट शैल बी मैंडेटरी टू हैव प्राइमरी connectivity from BSNL. The connectivity can be provided to the servers as per the discounting policy of BSNL. This shall be charged to the partner on annual basis in advance. Primary connectivity is an internet link provided by the BSNL from its MUX to the respective internet data center or distributed or edge data center as backhaul bandwidth. However, DCSP or prospective customer may take another link as secondary connectivity from any other TSP for redundancy purpose. The secondary link bandwidth cannot be more than primary bandwidth. ये एक प्रोविजन दिया गया है कि वो किसी और टीएसपी से, किसी और नेटवर्क से कुछ बैंडविड्थ ले सकता है इमरजेंसी के लिए, सेकेंडरी बैंडविड्थ उसको बोला जाएगा, और वो सेकेंडरी बैंडविड्थ जो है वो प्राइमरी बैंडविड्थ से हाई नहीं होनी चाहिए, उससे लो हो सकती है। What is the responsibility of BSNL in this case? Now, the third new business is infrastructure sharing and renting out.
Telecom infrastructure like mobile tower, core networks are shared with other company to generate revenue from there. बीएसएनएल अपने बीटीएस मोबाइल टावर्स भी रेंट पर देने लगा है दूसरी कंपनीज को, वहां से भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है. Vacant building spaces offered on rent in premises situated at prime locations all over the India. The spaces are ideally suited for banks, institutions, and autonomous bodies. Land and building portal developed and maintained by BSNL facilitates DOT and its PSU organization to upload the details about the vacant space proposed to be rented them. ये वाला तो सिंपल है, इसमें तो कोई ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है. रेंटेड आउट प्रॉपर्टीज को जहां भी वैकेंट प्लेसेस हैं उनको हम रेंट पर दे सकते हैं, बैंक को दे सकते हैं, किसी छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस को दे सकते हैं, और मोबाइल टावर को रेंट बेसिस पर हम लोग यूज कर ही रहे हैं. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शेयरिंग, दिस इज ऑल्सो न्यू पार्ट ऑफ न्यू बिजनेस. नेक्स्ट इज स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस. नाउ government is very much aggressively developing the country in the case of smart cities, and Bharat Sanchar Nigam Limited, a fully owned public sector enterprise of Government of India that is leading service provider in this country. So in this smart city project, connectivity will be also needed in the smart cities too, and it is the era of artificial intelligence and IoT. So in coming umbrella of a smart city, it is essential component in the smart city, that is transformation, is the implementation of new smart ICTs, that is information and communication technologies. Network setup should be there. Solution or implementation of smart solutions over existing infrastructure. Whatever the infrastructure we are having, we will have to utilize that infrastructure in smart cities also. The most important requirement for the smart city implementation is core network, core communication network infrastructure to interconnect various smart elements. In smart cities, what would be the smart? The maximum use of digital electronic devices or some smart IT devices. So to connect them, there should be some core network would be required. So BSNL can provide that infrastructure. Great role of BSNL in this smart city mission is emphasized. As per current trends, complete end-to-end smart solution implementation, which includes the bandwidth provisioning as well as other IT hardware or software, sensors, smart element, command and control centers, it is demanded. The business aim of BSNL is to utilize the existing telecom infrastructure, basically in that case, of BSNL for creation of smart city infrastructure. Whenever the smart city infrastructure would be developed, the existing BSNL infrastructure can can play intermediate role for the interlocking with the new system and the oldest one, right? The business aim. The foremost requirement from service provider will be to design smart ICT solutions using the BSNL existing infrastructure to the fullest. Now, this is the list of smart city work which in smart cities, there is no need of manpower to off and on offer on the smart poles for displaying the weather conditions on the crossroads. You may see in the smart cities in the coming future. CCTV surveillance everywhere would be the CCTV surveillance, and activities of the public or the concern would be under the coverage of a smart CCTV in smart cities. It also need connectivity, smart parkings, smart kiosks, smart transport management system, smart building management system. Everywhere network would be required, everywhere the infrastructure would be required, everywhere connectivity would be required. Citizen-centric application or GIS, command and control center, smart utility management system, water system, electricity system, all would be smart in a smart city. Wi-Fi hotspot, web hosting and related cloud computing services,
ICT based solid waste management system would be in the smart cities. There would also be connectivity required, tele-education, telemedicine, public information and grievance redressal system would be there. Other Nigam systems all would be connected. Online system, OFC network readiness as per work and requirement, including supply of OF cable and ducts. So these all the opportunities which are coming in the smart city project with the existing infrastructure of BSNL, and we are hoping that we'll get this. Now the next one is virtual network operator, that is VNO. Bharat Sanchar Nigam Limited, complete telecom service provider in India, that is BSNL. A virtual network operator is an entity which has been granted license by the Department of Telecommunication. It is a new kind of business opportunity where Department of Telecom is giving some license to some small companies or the service provider, which will be known as virtual network operator. That network operator having no infrastructure with him, he will use the infrastructure of BSNL on revenue share basis and will provide the service, whether the telecom service, data service, internet service, voice service, all what we are providing right now. A virtual network operator does not own spectrum. He will not purchase spectrum from the BSNL or DOT. Core network infrastructure he will not purchase, but provides telecom services by purchasing capacity from NSO, network service operator, or TSP, telecom service provider like us, that is BSNL, using his or her access network. From the access network of BSNL, he will use the network and will provide the service to their customers. VNOs are treated as an extension of NSOs, network service operator, or TSP, telecom service provider, and are not allowed to install equipment interconnecting with network of other NSO. VNOs can connect with the NSO or TSP and deliver services to their own VNO set of subscriber. This means the delivery of services can be provided by VNO while the network may be owned by the NSO or TSP. BSNL intends to partner with VNO to provide voice, SMS, and data to eligible virtual network operators who is allotted license by DOT and intend to enter into agreement with BSNL on non-exclusive basis for offering such service. Now, in the case of virtual network operators, responsibilities of BSNL in case of mobile services. Mobile originated calls generated by the VNO's customer from a service area in home and intra-circle roaming network to the other destinations. Mobile originated SMS generated by the VNO's customer from a service area in home and intra-circle roaming network to the other destinations. Mobile data traffic, whether the traffic of 2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 4G, LTE generated by the VNO's customer from a service area to a packet data network either via GGSN of BSNL or upon BSNL's decision via a GGSN or PGW of the VNO. BSNL shall provide required connectivity from the concerned network element of BSNL to VNO on cost basis. BSNL shall provide standard interfaces and any cost for integration or adaptation for these interfaces shall be borne by VNO. BSNL shall provide VNO end-to-end delivery of mobile terminated calls from a national or international network to the service area where the VNO customer is located. BSNL shall provide VNO end-to-end delivery of mobile terminated SMS messages from a national or international network to the VNO where the VNO's customer is located. BSNL shall provide VNO the roaming interconnection services through its existing agreement for national and international roaming.
BSNL shall provide VNO end-to-end delivery of mobile originated roaming calls generated by the VNOs roaming customer from a roaming network to the destination. BSNL shall provide VNO end-to-end delivery of mobile originated roaming SMS messages generated by the VNO's roaming customer from a roaming network VPN to the other destinations. Mobile data traffic 2G, 3G, 4G generated by the VNO's roaming customer from a roaming network. Now, what will be the responsibility of VNO in that case? Responsibilities of BSNL for VNO landline. In case of landline, originated calls generated by the VNO's customer from a service area in home and intra-circle network to the other destinations. Landline data traffic generated by the VNO's customer from a service area to a packet data network either via a data network of BSNL or upon BSNL decision via a data network of the virtual network operator. Basically, virtual network operator will work as BSNL working right now. We are just deploying some virtual operator, giving opportunity to someone who can handle this, and we are focusing on some other. BSNL shall provide required connectivity from the concerned network elements of BSNL to VNO on cost basis. BSNL shall provide VNO end-to-end delivery of landline terminated calls from a national or international network to the service area where the VNO's customer is located. In case of broadband, the responsibilities of BSNL shall own and merge the ISP network including FTTH, copper as an infrastructure provider through which VNO will connect the retail, SME and enterprise subscribers and offer its broadband services under its own brand name. VNO shall connect the subscribers to the BSNL ISP network by laying cable at its own cost. BSNL shall provide required connectivity from the concerned network element of BSNL to VNO on cost basis. VNO shall provide customer premises equipment to provide services to the subscriber at its own cost. इस पैराग्राफ में दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग डिफाइन की गई हैं. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ VNO फॉर मोबाइल लैंडलाइन ब्रॉडबैंड. क्या रोल्स होंगे VNO के? अभी तक हमने सुने हैं. Now the roles of virtual network operator would be: the eligible companies are also required to do all the end-to-end management of the customer marketing, selling and servicing activities. Customer marketing, selling and servicing activities would be cleared by VNO. VNO may be the fully equipped with all the technical infrastructure, telecom grade platform and all relevant NSS and PSS applications required to the function as a telecom operator under VNO license. VNO may be responsible for its branded SIM card, vouchers production and distribution to its supply chain only for mobile VNO. मोबाइल के केस में सिम कार्ड की जरूरत होगी. अगर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सिम कार्ड उसी को देना होगा अगर वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है तो हम सिर्फ उसको कनेक्टिविटी देंगे. VNO shall be fully responsible for the CAF process and compliance obligations. VNO may be fully equipped with its own billing platform for purposes of retailing its product services billing to its customer. VNO is responsible for billing and collection from its end subscriber. VNO shall have its own users records, tools and systems to service all the legal requests, lawful interpretation of regulatory as laid down from time to time by DOT. VNO will liaison with relevant agencies to fulfill their data requirements and install the necessary applications to liaison with appropriate LEA to fulfill such requests.
VNO may be fully equipped with its own CRM, customer relationship management, supply chain management, voucher management, channels for servicing, and the subscribers up to the quality of service obligations. VNO may have its own mobile number portability MNP system application to service its customers and integrate to the MNP gateway via BSNL approved interfaces. VNO shall have its own uses, records, tools, and systems to service all the legal requests of regulatory as laid down from time to time by DOT. VNO shall provide BSNL with mutually agreed information relevant for compliance to regulations and agreements. VNO shall be fully responsible for all customer care and customer feedback for the services rendered. VNO shall be responsible for distribution, provisioning, retail price setting, sales and credit check, revenue assurance with relevant applicable laws or other obligations provided by the relevant authorities. VNO shall hold responsibility of identifying and taking corrective action on any kind of fraudulent use of its subscribers without undue delay for reasons of minimizing the commercial losses and or any adverse effect for BSNL. VNO shall be singly responsible for managing all the customer information and storing the data. VNO shall provide BSNL with all relevant information on faults or planned maintenance notices which are deemed to impact BSNL. Got it? VNO is clear? सर बीएनओ एज ए प्राइवेट ऑपरेटर ही हो गया सर, पहले जैसे इंटरफेस यूज करता था बीएसएनएल की तरह। जी जी वही है। VNO वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर है जो इसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है BSNL का और नेटवर्क का चेहरा पब्लिक के सामने चेहरा वो है। इसको वर्चुअल कहा जा रहा है ना, नेटवर्क ऑपरेटर वर्चुअल है ये वर्चुअल है कि इसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन ये सर्विस वही प्रोवाइड कर रहा है जो नेटवर्क ऑपरेटर प्रोवाइड करता था, जो हम करते थे। जी जी जी। तो सर पहले जैसे प्राइवेट ऑपरेटर स्टार्टिंग में आए थे तो वैसा ही करते थे वैसे बीएनओ की तरह। हाँ ये वही है बेसिकली। ये VNO मॉडल वही है कि BSNL ओपन है VNO मॉडल के लिए भी, नया बिजनेस के रूप में देखता है कि भाई कोई उतरना चाह रहा है अगर टेलीकॉम में और वो लैंडलाइन में बिजनेस करना चाह रहा है या वो मोबाइल में बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको जो है वो वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर एक हमने बनाया है और उसको हम एग्रीमेंट करके उसके साथ में वो कर सकते हैं। उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने अभी डिस्कस की हैं कि क्या रोल BSNL का रहेगा और क्या VNO करेगा। गॉट इट? तो ये हमारे टी जो है जो FTTS प्रोवाइडर्स फॉल इन दिस वेरी कैटेगरी और नॉट? बिल्कुल, जो आपके TSPs हैं वो इसी कैटेगरी में तो हैं। वो आपसे आपका नेटवर्क यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके जो FTTH के कनेक्शन दे रहे हैं TSP हाँ मॉडल के टीआईपीज। TIPs जो है वो यही तो है, VNOs ही तो है वो वर्चुअली वो BSNL के नाम से बिजनेस नहीं कर रहे हैं। वो BSNL का नेटवर्क यूज कर रहे हैं और अपने वो कस्टमर भी खुद ही ढूंढ के ला रहे हैं, उनको सर्विस भी दे रहे हैं और BSNL का नेटवर्क क्योंकि यूज कर रहे हैं इसलिए रिवेन्यू शेयर कर रहे हैं। तो ये VNO जो है ये वही FTTH वाला जो मॉडल है वही मॉडल है ये। सर बीएनओ में रेवेन्यू शेयर नहीं होगा फिर? कैसा? वो तो लाइसेंस फीस देगा एज ए कोई एग्रीमेंट के तहत जो उसका चार्ज होगा वो देगा। हाँ रेवेन्यू शेयर नहीं रहेगा इसमें मतलब इस केस में। मॉडल जो है वो FTTH जैसा है लेकिन यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है कि DOT से उसे लाइसेंस मिल जाएगा कि वो यस सर यस नेटवर्क सर। बना सकता है। तो फिर उसकी बिल्कुल कुछ बिल्कुल। शर्तें होंगी कि वो उसने लाइसेंस फीस अगर दे दी है गवर्नमेंट को तो BSNL ऑन कॉस्ट बेसिस उसे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, फ्री में नहीं करेगा। बिल्कुल यहाँ पर जी रिवेन्यू जी शेयर नहीं जी। होगा, यहाँ पे ऑन कॉस्ट होगा, वर्ड ऊपर It ऑन means कॉस्ट it वर्ड means आएगा। T-quality service providers are not VNOs नो because they are not maintaining their information records and all. Provisioning, pricing in this case is also setting by BSNL only. हाँ जी। So we should move on the next. Next is satellite business because we are having the Earth station.
and BSNL having the Inmarsat facility, and BSNL in case of national disaster cases, we can rescue if all the telecom infrastructure has been collapsed. In that case, the satellite can only be helpful. So BSNL is a government sector, and in BSNL, currently operations across the nation except in Delhi and Mumbai. BSNL is deployed satellite gateway in India and provides global satellite phone services, GSPS, using Inmarsat satellite. We are having our own satellite, which is known as Inmarsat. Now, BSNL wish to provide additional satellite-based services through the GSPS gateways, such as M2M communication. M2M समझते हैं आप? What does it mean, M2M? M2M means होता है machine to machine communication, because this is the new era of technology where devices will communicate with each other. You can see in the olden days, before 2010, the equipments were not can take decision for route diversion, and if cable cut, whether if straight cable cut, then you will have to move towards the route with the route party and to splice the optical fiber in the midnight. We have done it so. But now the DXC system came into the existence. If someone route has been cutted down, then it may reroute the traffic from the another route. Digital cross connect came into the existence. Now it may be delay occur. It may be delay occur in the attending the faults, but network will not be affected, right? So in satellite business model, what we are going to do is the satellized business provider shall produce the end user equipment from OEM, that is original equipment manufacturer. Here OEM means is original equipment manufacturer or the manufacturer, the end user equipment in India for supplying to end customer. The end user equipment should be compatible with the BSNL GSPS gateway, and the bidder shall obtain necessary approvals from concerned authorities of government for manufacturing the end user devices in India. The satellite business provider shall do marketing and selling of the end user devices and services and generate the business. इसको समझिए कि ये क्या है. इनमारसेट में जो सैटेलाइट सर्विस बीएसएनएल प्रोवाइड करा रहा है, उसके उस यूनिट के दो पार्ट होते हैं. एक उसमें जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर, दो पार्ट जो हैं. तो एक इन हाउस यूनिट होती है, एक आउट हाउस यूनिट होती है. और सैटेलाइट से डायरेक्ट सिग्नल इन एंड आउट होते हैं. तो उसका जो इक्विपमेंट है, लाइक मोबाइल, अगर उसका जो इनमारसेट का जो डिवाइस है, हैंडसेट है, उसका कॉस्ट 1 लाख के अराउंड है, 1 लाख से ऊपर ही है. तो अभी उसका इतना बिजनेस नहीं बढ़ा है कि हर कोई उसको परचेज कर सके. दूसरा, सैटेलाइट सिस्टम यूज करने के बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं, लाइक कि वो सैटेलाइट सिस्टम में भी मिसयूज. सो इसमें ऊपर टर्म है कि गवर्नमेंट उसको, मतलब जो जो भी उसको परचेज करेगा, मतलब तो वो या तो अथॉरिटी होना चाहिए, या फिर अब क्या है कि सैटेलाइट को एज ए कम्युनिकेशन का एक वो मान के, अगर हम उसको, उसके लिए कोई सर्विस प्रोवाइडर मार्केट ओपन करना चाहता है और ऐसे हैंडसेट लेके आना चाहता है जो कंपैटिबल हो बीएसएनएल की सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी के साथ में काम करने के लिए कंपैटिबल हो, तो वो सर्विस प्रोवाइडर अगर ऐसा कस्टमर बेस क्रिएट कर लेता है और इस रेंज में अपना प्रोडक्ट लेके आता है, जो पब्लिक जो है उसको, public can choose to purchase that particular model handset. So it may be a new business opportunity, wide satellized business model. So in business, in this kind of business model, if service provider will create a customer base who are having a handset which is compatible, technically compatible with the GSPS of BSNL, BSNL gateways,
So it is another business opportunity. There will be revenue share arranged between BSNL and the satellite business provider for sharing revenue earned from the sale of the end user equipment and services. The satellite resources will be provided by BSNL. Here, the infrastructure is only with BSNL. That is why the satellite resources will be provided by the BSNL. The service provisioning will be done by BSNL, for which necessary support will be provided by the satellite business provider. The support services to end user will be provided by the service provider. Got it? The satellite business provider will set up billing platform if needed. The tariff and commission structure for the services will be finalized by BSNL in consultation with So, the what is this GSPS? gateway है. GSPS, GSPS gateway. What does it mean? it means Global satellite. phone services. Global satellite phone services, GSPS. And this is using by the Inmarsat satellite, which is having by the BSNL. Inmarsat is the satellite of BSNL, and using the technology gateway global satellite phone services. It is for voice only phone services. Now, the satellite business provider will set up billing platform if needed. Tariff and commission structure for the services will be finalized by the BSNL in consultation with the service provider and based on the business plan of the satellite business provider. The satellite business provider shall provide only such service or services for which he will be authorized by BSNL. Authorization is in the hand of BSNL. The satellite business provider shall provide maintenance, repair, and warranty support for the end user equipment to the end customers. The satellite business provider shall provide customer care of 24/7 basis to all the customers who utilize the services. The satellite-based business provider must follow and must require end customer to follow the procedures established by the entities that supply the services and equipment. The satellite business provider acknowledges that the procedures may be modified from time to time by BSNL agreement, and at any BSNL will provide satellite business providers with a copy of the applicable procedures upon execution of the agreement and at any time when the procedures are modified. The satellite business provider shall obtain customer acquisition form from customers and hand over the completely filled CAF to BSNL before providing services to the new customers. The satellite business provider shall support BSNL in realization of bills from customers and also in the take-up and growth of these services in India. The satellite business providers are required to be technically and financially capable and therefore able to operate in the market in a fairly autonomous manner. However, it should be noted that BSNL is committed to make this business a success and as such will provide support as requested to make our joint business as a success. The satellite business provider will be required to submit an initial and thereafter an annual business plan in which, as a minimum, they will need to specify which type of users they will be seeking to secure business from, what investment or resources they will be devoting to this activity, what level of sales they are forecasting over a rolling 3-year period, and what support they would like to have from BSNL and Inmarsat. Regulatory approval, if required, will be obtained by BSNL and the satellite business provider shall provide full support to BSNL for the same.
Is it clear till now? Sir, can you just repeat? Is Inmarsat owned by BSNL or BSNL is only having a license for Inmarsat? Regulatory approval, if required, will be obtained by BSNL and oh, sorry, you are talking about BSNL a part of Inmarsat or Inmarsat is a part of BSNL? Sir, because Inmarsat, as I remember, is a British company. Inmarsat is a not the company here in the aspect of BSNL. In the aspect of BSNL, Inmarsat is basically a satellite wing of BSNL, as NTR, WTR, ETR, and other wings of BSNL are doing several work related to the business infrastructure in BSNL. Likewise, satellite earth station having satellite, which satellite name is Inmarsat, and Inmarsat itself having a full form. Okay, so Inmarsat is a part of you can say satellite infrastructure of BSNL. Got it? Is it clear? Hello, madam. Getting my voice, ma'am? Hello. Yes, sir. You got it? What I mean to say? Sir, actually, as far as my understanding is concerned, Inmarsat is a British company having global satellite services, and BSNL has only acquired license from Inmarsat. So Inmarsat is not BSNL's own satellite; it's already a British satellite service from which BSNL has gotten a license to operate in India. Because recently BSNL ventured into maritime internet services and in-flight internet services using the Inmarsat license. Might be. It might be possible. I'll have to update what you are saying that it's a British company in Marset. As per might be in this regard. I need to update. I will definitely go through it. Okay. Thank you, sir. Okay. Now the next new business is M2M or IoT. Basically, M2M is machine to machine interconnection. In this era, when we are talking about the AI and IoT and M2M, and then what does it mean basically? Basically, as human beings are interconnected with the name and address. Technically, when machine is connected to machine and machine talking to machine through some protocols, set of rules are there, procedures are there, some software, some algorithms written like this, and then machine can communicate with machine. So it is called as M2M. And IoT, Internet of Things. Internet of Things means each and every machine in future will be having some IP address, and interconnectivity would be required to connect to particular machine, smart machine. So BSNL invites proposal. It's also a opportunity in the future. BSNL invites proposal on revenue sharing basis from M2M partners. Suppose someone not having the infrastructure to create interconnectivity, but is having some kind of some sort of software development setup, and he is capable to create communication between machine to machine. So M2M partners from interested and eligible firms or small companies for association with BSNL to generate revenues from machine to machine projects being undertaken by the government or autonomous and commercial entities all across the country. M2M partner or its principal may meet the relevant eligibility criteria in combined manner. The purpose of this policy document is the empanel M2M partner for exploring and executing M2M business opportunity jointly. BSNL may enter into the agreement with non-exclusive arrangement with M2M partner based on specific requirement of the projects. The empaneled M2M partner shall be called Centrally Empaneled M2M Partner, CEMP, and shall be
eligible for partnering BSNL across its area of operation. Empaneled vendors, if selected for execution of a M2M project, may enter into the separate agreement with BSNL circles for execution of the project. BSNL is currently operating its GSM mobile services across the nation, except Delhi and Mumbai, and have a subscriber base of more than 105 millions. BSNL also have a landline subscriber base of 30 million. BSNL is providing different value-added services on SMS, MMS, GPRS, Edge and 3G cellular customers, emphasizing the progressively generating revenues from M2M and associated services, which may require partnership with external agencies acting as a technology provider, device manufacturers, application developers, field support providers, and system integrators. The technology shall enable transactions through SMS, GPRS, USSD, WAP, J2ME, and Internet, etc. The M2M partner shall be required to establish a platform preferably in disaster recovery mode and according to latest regulatory guidelines, including TRI quality of service requirements if applicable. It is expected that the M2M partner approaching BSNL for partnership in this business shall be aware of the revenue streams cost involved, business case of this business, and shall have sufficient knowledge and resources to operate the services. The M2M partner is expected to grow in all partners essential for end-to-end delivery of services to the customers. There are few services. M2M device provider would be required in the M2M services. Connectivity provider, service management platform provider would be required. Application middleware provider would be there. Managed service provider, field support provider, application provider would be there. Infrastructure provider and system integrator. Again, the responsibility of the BSNL. BSNL will do interaction with enterprise customer individually or jointly with M2M partner. In that case, where M2M business would be, it basically would be in the enterprise section, enterprise business section, bulk business. So BSNL may interact with the individually or jointly with the M2M provider. BSNL will provide telecom connectivity to M2M partner for installing M2M solution as per the requirement of the enterprise customer. Types of connectivity and even connectivity of SMS center, ERI connectivity for voice response system, and WAP connectivity, broadband connectivity for the internet. BSNL will provide short course, long course, access point names, APLs for SMS, UHSD IVR, and BSNL will provide subscriber identity module, that is SIM, for M2M solution as per requirement of the enterprise customer. BSNL will prepare special tariff plans to M2M enterprise customers as per requirement and feasibility. BSNL may use manpower for field support for day-to-day operation maintenance if required and feasible. Again, if required and feasible. BSNL will provide support for network-related problems, hosting infrastructure including AC, power, space, connectivity to local BSNL network shall be provided by BSNL for this business in case deployment is done in BSNL premises. Responsibility of M2M partner would be, they would be responsible for complete implementation of M2M solution, which includes survey, design, engineering, supply, testing, packaging, transportation, erecting, successful commissioning, putting into operation and establishing the successful performance during the period of agreement with customer and comprehensive O&M, including warranty. Complete implementation means full responsibility to implementation M2M solution for the customer as specified by them. Further, comprehensive O&M means full responsibility to undertake effective and efficient operation and maintenance activities as specified. This includes all incidentals, services, materials, manpower, permissions, license, spares, consumables, whether implicitly listed or implicitly required for the satisfactory completion and performance of the system as per the specifications meeting international codes and standards. So
the conclusion of this chapter, which we have covered today, is the new business. We have how can we increase the average revenue per user for BSNL in this comprehensive market by the exploring new business opportunities, so as to raise the revenues basically. So here, if any query you may ask, or the other faculty is waiting for the next session. M2M, and one more thing is IoT. virtual network operator. M2M, M2M means machine to machine. Any Suppose example? two machines are there in the in your equipment room. There are two machines. Both are having different IP addresses. If there some connectivity of that particular machine required, what would be there? There needed some software to operate that, where you can see the operation of both the machines, how they are working, how the false alarm are coming on that, like NMS. You belongs to some. Have you worked in some transmission section, switching or transmission, sir? Yes. In transmission room, when we use NMS, network management system, that system is connected with some equipment like 2.5G system or 10G systems. When we connect that system with our PC is a machine, and that particular device is a machine which we are connecting with. Both are having different IP addresses. So there is some mechanism required to connect these two machines. When we connect these two machines, connectivity create between these two machines and install some software for the NMS. So machine to machine contact is there. We are connected by machine to machine contact. This is kind of machine to machine. So if any new setup is going to be in any new company, and there are several machines, and the owner of that company requirement is that he need all control all machines, like CCTV camera in your home or premises. If 5 to 10 CCTV camera installed, all they are connected with your DVR system, machine to machine contact. Every camera is having some different IP address, and that connected to the DVR, and DVR connected to your television set, which is another machine. So this is machine to machine communication. Got it? Any real-time example in this scenario, like M2M partner? M2M partner is not currently we are having, because the subject is new business. Introduce new business opportunities. Now we are searching. Someone is if we will get some offer from the market, then we are open to this M2M partners. We have prepared our documentations and terms and conditions. If someone is coming with It's okay, but in future we are searching for this business opportunity. So Yes. who may be the prospective M2M partner? Perspective would be, suppose we are coming in the era of smart cities. In a smart cities, someone will having the in charge of all the CCTV connected in the whole city. Some company will get some contract. So for connectivity, they might be use infrastructure of BSNL. They might be our partner. That will be the opportunity. Who got the chance to connect the CCTV camera in all the city, in whole city, in a smart city? Who is responsible? Who will be the agency who has got the tender for making connecting all the not only camera, all the electricity meter digitally at a single database center. So these kind of services are coming future in a smart cities. It would be happen. So those companies, those small scale industries should be our customer or our partner, maybe. Got it, sir? But sir, same thing is happening in other services, like we are providing telecommunication network or other kind of mobile or internet services for the connectivity of these equipment. Then what is the relevance of this particular M2M partner?
M2M, basically, it's a different kind of work, na? If suppose you are providing a solution to a company or a city or government agency, where you come with the proposal that I need infrastructure of BSNL in case of connectivity, and I want to use your connectivity to make a connection between all 100 devices installed in that particular company or in that particular area or in that particular agency. So I need only the infrastructure of BSNL on revenue share basis or the on cost basis. So it will depend upon case to case basis which kind of agreement is going to be. But machine to machine ये एक partner चीज only. मुझे समझ में नहीं आ रही है, जैसे एक पूरा आपने जो सिनेरियो बताया कि स्मार्ट सिटी या कोई एक कैंपस, उसमें मान लो पूरा सर्वेलेंस सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो एक कोई लीज सर्किट बीएसएनएल से ले लिया, ठीक है, ठीक है, देन बेस्ड ऑन दैट कनेक्टिविटी हमने प्रोवाइड कर दिया और वो उसके हिसाब से जो है पूरा सिस्टम को कनेक्ट करके अपना मॉनिटर कर लेगा चीजों को। तो इसमें मतलब डिफरेंट कैसे हुआ ये चीज, मतलब ये कुछ क्लियर नहीं हुआ मुझे कि ये आपको क्लियर इसलिए नहीं हुआ कि अभी जो हमसे एफटीटीएच या लीज लाइन की कनेक्टिविटी लेके अपने यहाँ जो यूज कर रहे हैं, लाइक बैंक हमसे लीज लाइन लेता है, बैंक हमसे लीज लाइन लेता है और उसके बाद में बैंक अपनी इंटरकनेक्टिविटी करवाता है, चाहे वो एटीएम्स की हो, चाहे वो टीवी और अपने इक्विपमेंट्स की हो, सर्वर्स की हो, राइट। तो अभी क्या है कि कोई कंपनी, जैसे अगर बैंकों में भी या और किसी कंपनी में भी इस तरह का कार्य शुरू हो कि वो अपने कुछ मशीन्स को इंटरकनेक्ट करवाना चाहे और थर्ड पार्टी को दे कि भाई मेरे सारे के सारे एटीएम जो है वो सारे आप कनेक्ट करोगे, जैसा कि अभी भी उन्होंने किसी को दिया होगा, तो उसने उनसे डिमांड करी होगी कि आपको कनेक्टिविटी के लिए इतने उसकी लीज लाइन चाहिए, इतनी कैपेसिटी की। तो उसने बीएसएनएल से बैंक ने कांटेक्ट किया और लीज लाइन कनेक्टिविटी ली, और उस कनेक्टिविटी का वो क्या यूज कर रहे हैं हमें नहीं पता। ये हुआ पहला केस जो चल रहा है अभी। आने वाले समय में अगर कोई कंपनी बीएसएनएल को अप्रोच करती है कि भाई वो बीएसएनएल के साथ में टाई अप करके नेटवर्क बीएसएनएल का यूज करेगी और उसको मशीन टू मशीन कनेक्टिविटी करनी है बैंकों के लिए या एयरक्राफ्ट के लिए या फिर एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी करनी है, तो अगर कोई कंपनी अप्रोच करती है तो उसके साथ एम टू एम पार्टनर की तरह से हम लोग डील कर सकते हैं, जैसे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अभी भी ये काम हो तो अभी भी रहा है। ओके, कैरी ऑन सर, नो अभी इशू। क्या हो रहा है कि अभी बैंक हमसे लीज लाइन ले रहे हैं, सपोज बाद में बैंक हमसे लीज लाइन लेना बंद कर दे, वो स्विच कर दे, तो क्या ये बिजनेस चला जाएगा आपसे? तब रूप बदल जाएगा, हम सीधा डायरेक्ट एम टू एम पार्टनर से बिजनेस कर लेंगे, हमें तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करना है ना। ओके सर, तो if no other question is, then I would like to give chance to the another faculty. Javed sir is waiting for their session, and I have taken 15 minutes more for my session. And thank you for listening me Okay, sir. Thank patiently. you, sir. Thank you very much.
Good morning. Hello, good morning. Are you getting my voice? हेलो, आवाज आ रही है आपको? Yes, yes. ठीक, ओके। Okay, now let us start. Okay. Now my topic is power plant and earthing. As we know that power plant is very important and vital organ for our telecom equipment. You can say this is the heart of the exchange. That's why we know that power plant is very important for our telecom equipment, because if there is fault in any power plant, then all the equipment of our telecom cannot work. That's why power plant is called the heart of the exchange, right? No, as you know, and you are working with, again, perhaps most of you are familiar with power plant. The main purpose of power plant is to convert the AC supply, whether it maybe from our distribution company, and if that fails, then the supply will be from our AG set. Okay. Then, first of all, what is the purpose of the power plant? To convert into DC, because as we know that all the telecom equipment are designed on DC supply. And one more most important is that DC supply, there is a voltage, and voltage, it is 48. All the equipments are generally designed on 48 volt. Why? If the voltage is high, there is some advantage and disadvantage in volt. If the voltage is low, if we are designing on low voltage, then there is again some advantages and disadvantages. Okay. If you are using, suppose just like conventional, we see that 12 volt generally used, but in case of 12 volt, what will happen? High current will flow and more heating. That's why, I mean, heating is also a very big problem. If the current handling is already more than 200 and 300 ampere, then it will be difficult. That's why in case of 50 volt, what happens? You can say this is a mid 12 So your volt. voice is low, sir. Voice is low. Now it's clear? Yes, Yeah, now okay. It's Okay. That's why we are using the 48 volt, because there is you can say some a mid we are using the mid level, because the current will be high, but not comparison to 50 to 20. We are using, there is two possibilities. We can either use 220 volt DC, okay, or 12 volt conventional source, but we are using 48. There is unique level that we are using, as that there is a voltage, not so high voltage, because again in case of high voltage there is some, you can say, the safety measure is very important. We are working in telecom with equipment, then there will be a safety
safety purpose. That's why we are using 48 volt. 48 have no designed on 48, but there is some tolerance. So that's why you will see that all the equipments are, suppose power plant, you will see 54. So don't confuse from 54 to 48. Okay. No, the main purpose, it is clear that the main purpose of the power plant is to make the supply. Okay, our supply, make reliable supply to the telecom equipments. Okay, and as we know, all the electronics equipment are basically active device. There is need for biasing. Okay, and you have to supply a DC supply for biasing. That's why we are using the DC 48. Okay. No, the main purpose of this power plant is to supply DC 48 volt. Okay. Again, for reliable source of or to the telecom equipments, then there is a possibility sometimes power supply will go, and this is not possible to, you can say, to make reliable supply, you must use a battery set. That's why first telecom power, you see from this, the purpose of the power plant is to charge the battery and to supply the telecom equipment. Okay, both simultaneous. In case of when supplies goes, no problem. Power plant will not work for that period, but the DC supply from the battery will supply to the telecom equipments. Okay. No, power plant. Power plant is an equipment provides uninterrupted DC. Okay. To the power to the telecom equipment and DC to the charging current of battery, because you know that battery, we can not ideally leave the battery after charging, because there is some internal reaction and it will discharge. That's why you must give a trickle charge at least. So there will be some amount of charging current always given to the battery to make it refresh for reliable use of the battery and to supply the telecom equipment. Okay. Is it clear? Next. Hello. Sir, I have a doubt. Sir, I Yeah. just wanted to know कि मतलब why do we always use 48 volts, neither less than that nor more than that? No, that I'm saying, no, there is, there is some tolerance. Are you hearing me? नहीं नहीं You know sir, that basically tolerance, yes sir, yes, yes sir, plus minus. tolerance is clear, sir, Yeah, tolerance is clear, yeah, but yeah. then sir, I just want to know कि मतलब why we have designed our equipments that we would require मतलब 48 volts of supply, not not less than that, not more than that. Is there any specific reason of using 48 volts only, or मतलब we could have designed our systems मतलब using 24 volts or maybe using 60 volts? You actually internationally there is level of what I am saying. 48 is the mid. There is a mid. You can say current. If you are designing out 24, then what will be happen? 24, but 2 times current will be high. Okay, is it clear? If Okay, sir. 40, हेलो 48, सर yeah. सर ये फॉर एग्जाम पर्पज अगर क्वेश्चन आता है तो कितना वोल्ट है, तो क्या 48 ही लिखना है? हाँ, अगर आपको ये लिखा रहता है कि व्हाट इज स्पेसिफिक, मतलब आस्किंग द वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड देयर इज द ऑब्वियसली 48 वोल्ट. अब इन केस प्लस माइनस, देन यू मस्ट टिक आउट -48. Polarity is different. First of all, I am telling you for the exact voltage need. Okay. और सर बैटरी के लिए, बैटरी बैंक के लिए First, एक मिनट प्लीज hold.
हेलो, यस, हो गया, क्लियर हो गया। हेलो, सर बैटरी बैंक के बारे में जैसे 54 रहता है वोल्टेज उसका। हाँ, अब क्लियरली मैं आ रहा हूँ। आई एम कम ऑन दैट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर सप्लाई फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट इज वोल्टेज रिक्वायर्ड 48, you can choose it, okay, और polarity negative, ठीक है। if there is yes sir, again -48 +48, you must choose -48। नो सर हम लोग मतलब नेगेटिव पोलैरिटी ही क्यों चूज करते हैं? अरे एक सेकंड थोड़ा, हाँ जी, एक 1 by 1, ठीक है। अब मैं स्टेप से बात करता हूँ, ठीक है। अब आएगा 54 वोल्ट। यस, होता क्या है, बैटरी, यू नो, व्हेन यू आर यूजिंग बैटरी, वहाँ जो उसका जो टॉलरेंस का लेवल है ना, फ्रॉम डीप डिस्चार्ज टू चार्जिंग, इज दैट इज वेरी लो, बिकॉज वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द बैटरी बिकॉज दैट इज नेचुरल फिनोमेना। इफ वी आर यूजिंग लीड एसिड दैट इज each cell has a polarity of 2 volt, okay, and good condition. Again, variation, deep discharge 1.75, fully charged maximum 2.25 per cell, otherwise after that the cell will be damaged, okay. अब 1.7 वोल्ट, दैट इज डीप डिस्चार्ज, मतलब इसके बाद बैटरी वो खराब हो जाएगी। यू आर मतलब नॉट डिजायर टू डिस्चार्ज अप टू 1.75। आप सपोज मोबाइल यूज कर रहे हो, क्या करते हो, 10% पर चार्ज डिस्चार्ज करते नहीं। what is the range, specifically you can say the best range for using the battery from 20% to 80%, not fully charged, fully discharged, that you will see the एक होता क्या है कि आप उसमें ना लाइफ ऑफ बैटरी इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ओके। कितनी बार आपने चार्ज किया है, डिस्चार्ज किया है। अब क्योंकि हमारा पावर प्लांट अभी फिलहाल था, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ, इसलिए हम उस पर ज़्यादा अभी डिटेल नहीं बात कर सकते हैं। आप अगर वैसे ही है तो आप नेक्स्ट कभी क्लास होती है तो आप यू कैन अटेंड इट, ओके। इसलिए बैटरी को हम अब आइसोलेट कर लेते हैं क्योंकि वो बड़ा ज़्यादा लंबा टॉपिक है। अब हमारा है कि पावर प्लांट में जो 54 होता है, क्या है कि 54 टू एक सेल का वाट आई हैव सेड मैक्सिमम 2.25, 2.25 multiplied by 24, you will see 55.5, no sorry, 54 वोल्ट, ओके। दैट्स वाई आप देखे होंगे पावर 54 वोल्ट जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज करके हम एक्सचेंज को 54 वोल्ट पे रखते हैं। हेलो, यस सर, यस सर, ठीक है, 54 वोल्ट। और जो एकदम कभी कभी जो करना चाहिए, फुल्ली चार्ज 2.23 मल्टीप्लाई बाय 24, यू विल मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट 55 आई थिंक 55.2, ओके। दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज। इसके बाद अगर पावर प्लांट से ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं, इट मींस कोई सेल को आप ज्यादा दे रहे हो, कोई न कोई सेल उससे डैमेज होगा, क्योंकि वो जो बैटरी की जो प्लेट्स होती है, इफ यू आर यूजिंग द हाई वोल्टेज, क्योंकि इससे हम चार्ज जल्दी से, वोल्टेज देखिए होगे आप मोबाइल में जो आता है, बहुत सारा कहते हैं फास्ट चार्जिंग चाहिए मुझे, इट विल डैमेज योर बैटरी, लाइफ ऑफ द बैटरी विल बी डिक्लाइन। दैट्स वाई बेहतर क्या होता है कि जो डिजाइन जिस पे है
फास्ट चार्जिंग जिस लेवल का है, हमारा जो पावर प्लांट और बैटरी है वो 10 आवर्स, वो C/10 से चार्जिंग डिस्चार्जिंग आइडियल कंडीशन, दैट इज गुड। ठीक है। अब आप उसको जितना हम डाइवर्ट करेंगे फ्रॉम दैट, क्या होगा, हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा विथ द लाइफ ऑफ द बैटरी। इज इट क्लियर? अब मैडम एक आप बोले थी -54, माइनस प्लस का थोड़ा सा ये रीजन है कि माइनस में आपका कोरोशन बहुत सारी रीजन होती है, जो इलेक्ट्रोड्स का वो 2-4 रीजन है, उसकी वजह से हम माइनस यूज करते हैं, प्लस यूज नहीं करते हैं। ठीक है। बट अगेन हमारा जो है अभी बहुत सारा टॉपिक आगे बहुत है, और यू आर अटेंडिंग दिस क्लास फॉर LIC पर्पस, हमारा एग्जाम का टॉपिक है। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा उस चीज़ में अभी नहीं जाना है। कंसेप्ट के लिए बहुत सारी मटेरियल अवेलेबल है, या नेक्स्ट जब भी क्लास होगा तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, क्लियर मैडम? ठीक है। -48 हमको लिखना है, क्योंकि हमारा हमारा एम क्या है, टू क्लियर द एग्जाम। -48, if there is 54, no, they are not available 48, 50, 54, 54 लिखा है, that is also correct, because एक्सचेंज जो आपको मिलेगा जब पावर प्लांट एक्टिव कंडीशन में रहते हैं, तो आपको अगर बेस्ट बहुत अच्छा आपका सप्लाई है और लोड उसके लेवल में है, विद इन द लेवल, तो आपको 54 तक आपको आउटपुट जो है इक्विपमेंट पे दिख सकता है। ठीक है। एक्चुअली अभी देखेंगे हम डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट। वो ना जो कन्वेंशनल था वहाँ क्या था, चार्जिंग यूनिट बैटरी की अलग होती थी, तो 55.2 तक कोई पहुंचता नहीं था। यहाँ हमारे पास जो है वो जो पावर प्लांट है वो डुअल मोड में काम करता है, ट्रिकल चार्ज, बूस्ट चार्ज सारे चार्ज करते हैं। तो ठीक है, उस लिहाज से आपको जो वोल्टेज है यहाँ उतना अलग अलग सेपरेट नहीं दिखेगा। एक जनरली आपको 55 54 दिखेगा, 54 जनरली है ट्रिकल चार्ज द बैटरी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ द पावर प्लांट जो है उसका क्या है, प्रोवाइड द अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है टू द क्रिटिकल लोड। क्रिटिकल लोड हमारा क्या है, व्हाट द क्रिटिकल लोड, द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे जितने ट्रांसमिशन इक्विपमेंट हो गए, जितने एक्सचेंज हो गए, कि जो मतलब स्विच हो गए, ये सब क्रिटिकल लोड है। यूजिंग द, तो उसको अचीव कैसे करते हैं, यूजिंग द बैटरीज विथ ब्रिज। ठीक है। अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड रहने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल में हम उसको बैटरी से सप्लाई करते हैं। ठीक है। सेफ्टी के लिए है, सेफ टू द वर्क्स एंड पब्लिक, तो रिलेटिवली यही देखिए लो वोल्टेज हमारा जो हम जो यूज कर रहे हैं 50 वोल्ट, यू कैन से 48 वोल्ट या 54। 48 वोल्ट में क्या है कि यू कैन टच फ्रॉम योर हैंड। ठीक है। आपकी स्किन अगर भूल से टच भी हो गई, नो इशू, शॉक आपको नहीं लगेगा, कोई लाइफ को खतरा नहीं है, अनलेस और अनटिल कोई मेटेलिक चीज से वो शॉर्ट ना हो। यहाँ जो in telephone exchange you will see the main risk is from not shock, from heating, if there is short circuit, और क्योंकि ये जो हमारा जो पूरा पावर प्लांट एंड जो बैटरी का सेटअप है हैविंग वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो दैट्स व्हाई इट कैन गिव यू इन वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट। तो अगर छोटे से जो आप मेटेलिक पार्ट को वो गल जाएंगे, तो दैट्स व्हाई यू सी, अगर हीटिंग इतनी ज़्यादा है कि वो दैट इज मेल्टिंग ऑन द प्लेट, कोई मेटेलिक पार्ट, तो व्हाट विल बी द हैपन टू आवर स्किन। दैट्स व्हाई बी केयरफुल, जब पावर प्लांट और बैटरी पे काम करते हैं तो सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, मेटेलिक पार्ट्स जो होते हैं जस्ट लाइक यू कैन से रिंग और वॉच, वो हटा लेते हैं पहले से, तो फिर आपको रिस्क। ओके, एनीवन इज बोलिए। आस्किंग, एनीवन इज आस्किंग। बाद इधर आए। परसों दिन से टाटा में इतिहास से लिए हुए Anyone is asking something? इसका नया तो इक्विपमेंट आया है। Please mute. Please mute. हाँ वो आया Unwanted noise from anyone. Please mute yourself if there is no need. Yeah, you are not asking any question. Okay. Next. लाइफ लॉन्ग जो है हमारा जो अचीवमेंट हो पावर प्लांट एंड बैटरी का, देन व्हाट वी आर यूजिंग द कन्वेंशनल डिजाइन, जो हमारा जो डिजाइन है 54 वोल्ट, उस पे बैटरी और पावर प्लांट दोनों की एक लाइफ जो है वो बहुत अच्छी। प्लीज म्यूट, अनवांटेड वॉइस।
Please Not clear. mute yourself, those who are not asking any question, please. Online. हाँ okay. ಎಲ್ಲ You just mute from your side, sir. Okay. No. A general block diagram, you can say power plant from main supply. यहाँ पे देखें, you will see here will be a changeover switch. क्योंकि पावर प्लांट जो हमारा यहाँ जो क्रिटिकल लोड और नॉन क्रिटिकल लोड, उसके लिए हमारा ये ब्लॉक डायग्राम है ए वेरी क्लियर. If you will see in any telephone exchange, there is some non-critical AC load. They are directly goes from the supply. Okay. Next, essential AC load. There is a changeover switch. When the power supply from your distribution company is not available, then it will be change to the DG set. Okay. And a rectifier is also connected. You can say power plant is connected through such type of supply. If you either or your distribution company AC or from DG set. Okay. And after the power plant, again there is division. You will see some protected AC loads is available in your exchange. Those who are working for more than 10 years, you will see previously what we are doing. Suppose lease line circuit. Some lease line circuit are given through our dedicated modem. Okay. In that case, for reliable purpose, what we are doing, we are using the battery of sometime our battery set of the power plant and battery set, or separate battery set is for that inverter. The inverter changes from DC to AC and supplies that critical AC loads. Okay. This is basically block diagram. No need of DC power supply. Okay. Conversion of DC of speech signal to electrical signal, as we have discussed earlier, that स्पीच इलेक्ट्रिकल कोई भी सिग्नल जो है आपको जो वॉइस जो होता है उसको कैरी करने के लिए क्या होगा, वी नीड सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसके कन्वर्शन के लिए यह जो है हमारा डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है. ओके. ऑल द ट्रांजिस्टर एंड आईसी all are designed, all are active device, they are designed on DC supply, the biasing. That's why for the biasing purpose there is need for reliable DC supply. Okay. Harmonics and this much more. This is, in my opinion, no need for your examination point of view. No. The main source of power supply, DC supply, there is two, we can say the main source and secondary source. Main source में क्या होगा, from AC to DC, जो हमारा by DC drive पहले क्या होता था, previously in very early time we are using AC generator and DC generator, they are coupled, and because there was no rectified concept at that time, तो DC generator जो होती है, you know that two types of alternator. AC जो होती है, the power that engine will give the output AC supply, and one is that will give the DC supply, the AC supply, and they are coupled with the DC generator, DC, and DC जो है, you will get the DC output, that is DC drive. So main source जो था previously, that was that, but nowadays this is changed. Now we are using the solid state rectifier, we have replaced it. Okay. Then secondary or standby source, that is secondary
cells we are using the secondary cell. Again you but this is out of in my opinion syllabus. You will must use the lead acid cell, but now we are shifting to lithium ion also. Okay. See, you can see in this slide previously what was happening. A main source, main AC supplies जो क्या होता था, with driving a AC motor, and that shaft is coupled with the DC generator, and from that we are getting the reliable DC, and we are using for our telecom purpose. Now, advantage of static rectifier, because that was dynamic. There was a lot of, you can say, wear and tear was the main issue, and reliability lifelong. Again, all the things are removed after when we are using the static rectifier. Again, static rectifier, there is, you can say, different generation. They have changed. Previously, we are using the SCR and power diode. Now we have come to on SMPS, switch mode power supply. We will discuss about switch mode power supply and also in the next slide. Okay. Regulation become easy without involving any moving mechanism. अब जो regulation of the voltage, because sometimes you have to change your voltage. Suppose for the charging of the cell, you have to, when there is battery, your keep discharge, you have to increase the power voltage. So in case of static rectifier, it is easier than जो एक moving, you can say, जो DG जो होता था DC सप्लाई के लिए, उसको वेरिएशन वोल्टेज के लिए that was a difficult one. Efficiency is also very high in case of static rectifier. Okay, space is less. These are the advantages of static rectifier in comparison with DG supply. Okay, see, you can see the AC supply, they go directly to the rectifier or power plant. From there, sometimes you will see two battery sets in most of exchange, and nowadays perhaps only one are given from our store और our जो अब हम लोग जितने बना रहे हैं और जो पास हो रही हैं प्लानिंग से, उसमें अब सिंगल सप्लाई ही मिल रही है, सिंगल बैटरी सेट मिलती है, सिंगल डीजी सेट मिल रही है. बट प्रीवियसली क्या होता था कि जो भी डिजाइन करते थे, डुअल बैटरी सेट, डुअल डीजी सेट. ओके, एंड आफ्टर दैट पैरेलल में क्या होगा, ये डीसी लोड है वो आपको एक्सचेंज को जाता. नो, मेजर सब सिस्टम ऑफ पावर प्लांट. ओके, मेजर सब सिस्टम में क्या है, you see the main subsystem, load rectifier, battery charger, and switching vehicle. These are the main three, you can say, the components of our power plant. Are you getting my voice clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Load rectifier. What is load rectifier? We will discuss load rectifier, battery charger. Both are rectifier. You see, battery charger is nothing but that is also a rectifier, but there is some difference. We will discuss in the next slide. Third one is switching cubicle. Okay, you can see outdoor and indoor. You will see just like the diagram. Your view will like this. In indoor, there is open bus bar. In outdoor, obviously, there is closed bus bar. Okay, bus bar. What is bus bar? You know, bus bar is actually you can say a connector that connects all the
rectifier unit to a single bar, single connector, you can say. From where there is again there will be three division. One a pair of, you can say, red and blue or black. Generally blue you will see. Red is positive bus bar and blue is negative polarity bus bar. Okay. Again, you previous slide we have seen those bus bar where it is marked for your battery set, you must connect to battery only, not to the exchange. Okay. The bar where it is mentioned for the exchange, you must connect to the exchange. Otherwise, what will be happen? The exchange can run, but the switching cubicle cannot work properly, because the purpose of the switching cubicle is to give the correct voltage, correct amount of voltage and current to the proper equipment. For example, exchange required reliable current and voltage of 48 volt. Okay, but in case of battery, it is charge, is trickle charge, boost charge, it will be changed. That's why switching cubicles change the voltage and current requirement of the battery terminal. That's why you must connect, although all are DC volt, but you must connect the terminal, the connector, you can say the bus bar, which are written for the exchange and battery. Okay. Now, function of the float rectifier. Float rectifier is nothing but that is also from a DC to AC to DC converter, but it gives the very low amount of DC current with least ripple. Okay. As we know, in next slide we will discuss about the ripple. What is ripple? Sir, floating means the battery and load function at a time. Floating means a certain amount of current given to the battery, about a least amount of current given to the battery, and that voltage is same, you can say, as required for the exchange. But it means अगर battery required full amperes, so it means no load is idle. No, that's why there you have seen in the previous slide, there is different bar, not two bars only, positive and negative. There is, you will get the set of bars. One is written for the exchange, one is written for the battery. बैटरी वाले पे पोलरिटी पे जो है वहां पर वोल्टेज जो है और करंट जो है वो चेंज होगा. ठीक है. फ्लोट रेक्टिफायर जो लिखा हुआ है, फ्लोट रेक्टिफायर का जो यूनिट होती है, द यूनिट डिजाइन फॉर द फ्लोट रेक्टिफायर इज not to give high current charging current, is to give the trickle charge only, that have least amount of ripple. Okay, we will see. I will clear your confusion. Okay. No, battery charger unit is basically, actually there is no, we are seeing the modern power plant. Previously there was the three different set. Okay, that's why you will practically, you will see, you may confuse ki where is the float rectifier, where is the battery charger. Okay, all are in the same unit nowadays. You are seeing the power plant or in the same unit, but जो बेसिक जो पर्पस था उसको समझाने का, या यू कैन से पहले जो होता था प्रीवियसली देयर वाज डिफरेंट यूनिट. बैटरी चार्जर जो वर्ड यूज किया जा रहा है, और यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम ऑल्सो, यहाँ तीनों यूनिट जो है अलग अलग है सेपरेटली. ठीक है, सबके पर्पस अलग अलग है. नो डेज एक्चुअली यू कैन नॉट फाइंड द आउटपुट साइड, इनपुट साइड, और यू कैन से इन पावर इन जो मॉड्यूल देयर इज सम डिफरेंस, बट in SMPS all are, matlab you can say all have to become, you can say एक single ही unit होती है जो they solve the all the purpose of our float rectifier and battery charger. Okay.
बट फ्लोट रेक्टिफायर जो कहते हैं, फ्लोट रेक्टिफायर का पर्पस ये है कि हैव ए लिस्ट रिपेल इज कांस्टेंट 54 वोल्ट। ओके, या बैटरी चार्जर यूनिट जो है, देखो यू सी द डिफरेंस 55.2, बैटरी चार्जर यूनिट मस्ट गिव एटलीस्ट 55.2, व्हाई? टू गिव द itself boost charge it means जो मैक्सिमम क्या बताया था, 2.3 पर सेल। सर माय क्वेश्चन, क्या सर माय क्वेश्चन, या लोड 100 एम्पियर्स या load 200 एम्पियर्स, load of your exchange is 100 ampere, yeah, या बैटरी रिक्वायर्स 300 एम्पियर्स, 3 ampere, 300 ampere, okay, but you are working 3 modules and say 100 amperes. In this condition, first requirement of battery and first requirement of the load. just a minute, your load is 300 My ampere, yes sir, but a proper load हाँ always हाँ ठीक है, load is your 300 ampere and battery charging, required minimum 200 amperes. अच्छा 200 amperes, yeah, and your power plant module जो working is only 300 ampere, okay, हाँ, मतलब 100 into 3, yeah. ठीक है, then what will happen, your battery will not charged, that will be in ideal condition, because देखिए बैटरी के the properties of the battery that the voltage is the main, if there is high voltage then it can be charged, बट आपका लोड जो 300 एम्पियर है वो लोड तो आपको वो बैटरी में फिर जा नहीं पाएगी ना, क्योंकि उसकी वोल्टेज बढ़ेगी नहीं, Yeah. तो आपके जो एक्सचेंज चलते रहेंगे, बैटरी चार्जिंग नहीं हो पाएगी इतने मॉड्यूल से। It means के battery not charged. Battery is not charging. If there is such a scenario, you must increase the number of modules. If 100 ampere, there is again there will be a tolerance, and exact, if you are using the climb meter and showing the exact 300 100 या 70 plus 130 करके exactly 300 ampere, if you are saying like this, then it means battery is not charging. Battery in on your ideal condition, when the load will come to the, when the cut off power supply. In this situation, this is a floating condition. Float, देखिए floating current condition you can say, but floating exactly what, there is a different, there is a main purpose is voltage. What is the voltage of that at that instant? Voltage is fixed, minus 52. Minus 52. Your power plant is showing minus 52. Okay. Yeah. Achha, okay. Then that is in float mode, you can say. Float mode, but trickle charge current is not going to your battery also. But this condition is called float mode. Float mode. Yes. Okay, clear. Actually, there is you will see there is a 3 terminal. बैटरी जो कनेक्ट होगा वहां पर वोल्टेज आप यू कैन चेक दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट द एक्सचेंज। आप तो ये करंट तो मुझे सिचुएशन बता दिए, यहाँ पर किस टर्मिनल पर कितना है वो आप प्रैक्टिकली देखेंगे, वो दैट इज डिफरेंट, बट इस कंडीशन को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड फ्लोट कंडीशन। ओके, it means if the equipment load is 200 amperes, 3 modules are working. My power plant, 3 power plant working 100 amperes, 100 into 3. It means battery charge. If load is again goes down to 200 ampere, are you saying Yeah. like this? No, again. Yeah. No, again 200 ampere. Then you can say 100 ampere. 100 ampere will go to your battery for charging purpose. This condition. What is this condition? This condition again, this is called the. What I have said, there is 3 units. Okay. Yes, sir. वर्किंग जो है, ये जो पहले जो
प्रीवियस जो कंडीशन होते थे अलग अलग, पहले क्या होता था कि अलग अलग यूनिट होती थी। बैटरी को चार्ज करने के लिए अलग यूनिट होती थी, बैटरी यू कैन से बैटरी चार्जिंग और बैटरी चार्जर दोनों आइसोलेटेड रहते थे फ्रॉम द सिस्टम। या ओके। जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाता था तो उसको मैनुअली वो चेंज और स्विच से जस्ट ये जो देखते हैं ना जनरेटर और पावर सप्लाई का, वो चेंज करके उसको फ्लोट वाले पर यूनिट पर करते थे। फ्लोट वाला क्या होता था, दैट इज कॉस्टली इक्विपमेंट पहले होता था। वाई, वहां रिपेल कम होती थी और वो जो है करंट जो देता था वो स्मूथ डीसी देता था और बहुत वो स्लाइट अमाउंट ऑफ करंट जितना आप डीप डिस्चार्ज एक बार व्हेन यू आर इट इज फुल्ली चार्ज देन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रिकल चार्ज। तो वो फुल्ली चार्ज कंडीशन में फ्लोट पे वो काम करता रहता था एक्सचेंज के बैटरी के एक्सचेंज के साथ पैरेलल में, और जिस दूसरे यूनिट को फिर वो चार्जिंग पर लगा दिया जाता था। पहले ऐसे ही होता था, समझे। अभी क्या है कि आपका जो आउटपुट होता है वो नीचे से वो जो स्विचिंग केमिकल चेंज करता रहता है। आप कंडीशन जो आप बोल रहे हो, कोई ये आपसे नहीं पूछेगा कि ये इस वोल्टेज को हम ट्रिकल चार्ज कहेंगे या बूस्ट चार्ज कहेंगे या फ्लोट रेक्टिफायर कहेंगे। सी देयर इज मेनी वेरी डिफरेंस। ये डिफरेंस क्या है कि बैटरी चार्जिंग के लिए आपको याद रखना है, बैटरी इफ द यूनिट वर्किंग एज ए बैटरी चार्जर द यूनिट मस्ट बी कैपेबल टू प्रोवाइड अप टू 55.2 voltage. Okay. Yes. If it cannot provide Sir. 55.2, then it Sir. will, yeah, that is float rectifier. Also difference between both are charger, but it is float rectifier. Why it cannot provide up to 55.2 volt, मतलब fully boost charge के लिए वो यूनिट कैपेबल नहीं है। यस, अब बताइए। सर ये जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है तो इसके बाद भी ये 55.2 वोल्ट ही रहता है या अब तो करंट जो पावर प्लांट है अब जी अभी जो पावर प्लांट है जो अब डिजाइन हो रहे हैं, जब बैटरी आपकी 80% से ज्यादा डिस्चार्ज हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली स्विच करते हैं बूस्ट वोल्टेज में। यस और जब 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 ये फुल्ली चार्ज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली फ्लोट वोल्टेज पे आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर करेक्ट। तो और यही काम ये टर्मिनल ये स्विचिंग ये काम केमिकल। पहले हाँ, ये पहले मैनुअली होता था। ये पहले मैनुअली होता था, ये काम स्विचिंग केमिकल का है, वो ऑटोमेटिक आपका यह काम कर देगा। और वो इसलिए जो है टर्मिनल में बताया ना कि बार जो डिफरेंट बार है बस बार, उसको इंटरचेंज नहीं करना है। वो मॉनिटर जो करता है वो उससे बात कर लेना। हाँ, इंटरनली कर देता है वो खुद ही पावर प्लांट में, ऐसा डिजाइन है। वन बाय वन प्लीज। हेलो सर एक बार प्लीज ये वाला सेंटेंस फिर से रिपीट कर दीजिए कि मतलब जैसे जो अभी आपने बताया था ना कि 54 वोल्ट तक वो बूस्ट चार्ज करता है, फिर वो फ्लोट चार्ज अपने आप फ्लोटिंग मोड में ले जाता है। एक बार ये सेंटेंस फिर से बता दीजिए। ये जो बोल रहा हूँ क्या होता है, फुल्ली चार्ज जो करते हैं वो 80, जैसे मोबाइल को करते हैं, क्या करते हैं बैटरी जो फुल्ली चार्ज करना है तो ईच सेल को 2.3 वोल्टेज तक पहुंचाना है। तो बैटरी चार्जर जो है वो वहां तक ले जाएगा और जैसे ही वो करंट दिखेगा कि कम हो गया, इट मीन्स फुल्ली चार्ज हो गया, वो ऑटोमेटिक जो है वो आपका वो स्विचिंग केमिकल वो चेंज करके फ्लोट के कंडीशन में लाएगा। फ्लोट का वोल्टेज कितना है 54, मतलब 2.24 से ज्यादा, 2.25 से ज्यादा फिर चार्जिंग वहां पर उसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज हर सेल पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो हर वक्त रहेगा तो वो सेल डैमेज होगा। क्लियर? ओके सर, क्लियर। एंड इट बिकम डिस्चार्ज, तो क्या हो गया, उसको फुल्ली चार्ज तक ले जाना। फुल्ली चार्ज वोल्टेज 55.2, जैसे 50.2 पहुंचा और करंट वो नीचे वो लगा रहता है, वो करंट मेजर करता है। इट मीन जैसे देखता है कि वो एक्सपोनेंशियल, यू विल सी द एक्सपोनेंशियल राइज इन करंट। तो वो जैसे देखो लग जाता है कि वो अब करंट कम ले रहा है, मतलब फुल्ली चार्ज हो गया 55.2 पर, जैसे वो सेल भी पहुंच रहा, वो उसको कट करके वो फ्लोट पे ले आता। कितना उसको फिर वोल्टेज पे लाना है, 54 पे ओनली। सर Thank you. Continue the हेलो subject, please. हेलो Stop the हेलो query. Stop the doubts. सर बूस्ट वोल्टेज रेक्टिफायर का कितना होता है और फ्लोट वोल्टेज कितना रहता है रेक्टिफायर में? You are seeing this my slide? सर इसमें तो 54 फ्लोट रेक्टिफायर लिखा है वोल्टेज। हाँ, फिर फ्लोट रेक्टिफायर वही तो बोल रहा हूँ 55.2 पर। और बूस्ट कितना रहेगा सर? बूस्ट चार्जिंग का ही है ये, जो दैट इज द बूस्ट चार्जिंग का जो है वोल्टेज जो है 2.3 पर सेल मल्टीप्लाइड बाय 24। आपका 24 सेल का एक पूरा सेट होता है हमारा बैटरी सेट, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 55.2 होगा। 55.2 तक ये बूस्ट चार्जिंग के लिए ये वोल्टेज लेवल है।
मतलब बूस्ट कंडीशन में वो रेक्टिफायर का जो Don't वोल्टेज होना चाहिए stop the 55.2 वोल्ट होना please. चाहिए। हाँ सब्जेक्ट कंटिन्यू 55.2 करने दो यार, एक्चुअली सब्जेक्ट व्हेन कंटिन्यू होने दो। व्हेन देयर इज डीप और डिस्चार्ज आप कनेक्ट करोगे तो 55.2 नहीं पहुंचेगा, वो हाई करंट लेगा और वो आहिस्ता 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 व्हेन देयर इज करंट आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो वोल्ट बैटरी का सेट बढ़ेगा वो आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जो इंक्रीज। दैट विल इंक्रीज अप टू 55.2। जैसे हुआ वो उसको कट कर देंगे कि फुल्ली चार्ज हो चुकी है, उसको फ्लोट मोड में कर देंगे 54 पर। पहले इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब मैनुअल होता था क्लियरली समझ में आता था। यू कैन आई एम व्हाट आई एम सेइंग, प्रीवियसली क्या होता था, एक सेपरेट यूनिट रखते थे बैटरी चार्जर एंड डीप डिस्चार्ज, जो बैटरी चार्ज डिस्चार्ज हो गई वो बैटरी। और ये क्या होता था, द बैटरी चार्जर यूनिट वाज चीपर वन। क्यों? सिर्फ सेल को चार्ज करना है, वहां पर डीसी जो है हमारा रिपेल ज्यादा है, नो प्रॉब्लम। उसकी जो सर्किट होती थी फ्लोट रेक्टिफायर से अलग होती थी इन प्रीवियस टाइम। सॉलिड स्टेट में बताया है ना, जनरेशन सॉलिड स्टेट आने के बाद जो एसीआर और डायोड यूज कर रहे थे उसमें तो ठीक हो गया। वो पुराने में जो क्या होता था, कन्वेंशनल पावर डायोड से जो करते थे, पावर डायोड में ये प्रॉब्लम आएगी ना, पावर डायोड सस्ता होता था, ठीक है। तो वहां पर क्या है, आपको वो जो है रिपेल वहां हाई होती थी। बैटरी चार्जर जो होता था वो हाई रिपेल के साथ भी वो सस्ता यूनिट होता था, लेकिन वो दे कैन प्रोवाइड हाई करंट। वहां हमारा मेन पर्पज होता था कि बूस्ट चार्ज के लिए जो करंट ले रहा है वो बैटरी को सफिशियंट हो, अदरवाइज क्या होगा, आपको 24 घंटे तक बैटरी चार्ज ही नहीं हुई, है ना। मैक्सिमम 10% से करना है, 10% से 10 घंटे में तो डीप डिस्चार्ज को फुल डिस्चार्ज कंडीशन में लाना है। इज इट क्लियर? तो ओके चार्जिंग सर। यूनिट अब होता टेन था, लेकिन परसेंट किसका सर? 10% किसका सर? 10% ऑफ द बैटरी का मैक्सिमम कैपेसिटी। सपोज आपको लिखे होंगे बैटरी के लिखे होगी 100 ए 1000 400। एच, एक बैटरी सेट है डिजाइन जो लिखा होगा 1000 एच, इट मींस 1000 कैपेसिटी दैट कैन प्रोवाइड 1000 एम्पेयर अप टू 1 आवर। ओके, ओके यस सर। now in reverse, c by 10, c capacity is 1000, c by 10 means 100 ampere. That means maximum draw, you can draw the maximum current for the मतलब including we are aware about the safety of the battery, maximum c by 10, it means if 1000 ampere then we can draw 100 ampere up to 10 hours. Okay, ओके in the reverse, if you are charging the battery again, if there is deep discharge, no c by 10, मतलब अगर 1000 का बैटरी सेट है, 1000 के बैटरी सेट है, you should not increase the current limit of for more than 100 एम्पियर। अदरवाइज क्या होगा, प्लेट जो है वो खराब हो जाएगा ड्यू टू हीटिंग। मतलब अब 100 एम्पियर 10 घंटे के लिए हाँ, Excuse यूज me, कर सकते हैं। sir. अब Doubt may be taken after completion of this topic. Na? अब एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अभी क्या आ गया है, हमारे जितने पावर प्लांट है दे आर वेरी वेरी गुड, दे आर यूजिंग द मॉसफेट। मॉसफेट इज द एक्चुअली वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। यहाँ क्या है, करंट की लिमिट ऑटोमेटिक हो जाती है। पहले क्या होता था, दैट वी आर यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, कि वोल्टेज ही नहीं कि वो बैटरी के डीप डिस्चार्ज है और वो बैटरी चार्जर को 55.2 पर लगा के छोड़ दिए तो बैटरी डैमेज हो जाता। क्यों? वाई? 55.2 में वो इतना हाई करंट होता, क्योंकि करंट आपको लिमिट नहीं कर सकते थे, तो क्या करते थे, पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज आहिस्ते आहिस्ते उसको बढ़ाते थे, ठीक है। क्यों? आप सपोज 1000 एम्पियर का बैटरी सेट है तो 100 एम्पियर करंट को बढ़ाना नहीं है। करंट जैसे बढ़ रहा है हम वोल्टेज को देखते थे कि जैसे करंट कम रहा है फिर वोल्टेज बढ़ा है, वोल्टेज बढ़ा है, वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते मैन्युअली इट गोज अप टू 55.2 एंड इफ देयर इज अगेन 100 एम्पियर से नीचे है, नेक्स्ट वी कैन कंफर्म कि अब बैटरी चार्ज हो गई फुल्ली। उसको फिर वो अलग यूनिट से कनेक्ट करके वो कनेक्ट कर देते थे एक्सचेंज के साथ, और जो दूसरा यूनिट लगा हुआ होता था उस यूनिट को फिर चार्जर पर लगा लेते थे, उसको चार्ज करते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके वो वो बैटरी की प्रॉब्लम क्या है, देखिए देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस, 2 और 2.25 कितने परसेंट है इसमें, आपके डिस्चार्ज और फुल्ली चार्ज है बैटरी। अगर 2 वोल्ट पे कोई आपको बैटरी सेट मिल रहा है सेल कोई, इट मींस दैट इज इन डिस्चार्ज कंडीशन। जैसे टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे लोड वो फट नीचे गिरेगा, बिकॉज आपको जो ओपन सर्किट का वोल्टेज दिख रहा है ना, क्लोज सर्किट में वो वोल्टेज वो नहीं है। इसलिए यू इफ यू आर आइडियली दिस इज
मल्टीमीटर से आपको दिख रहा है ओपन सर्किट में 2 वोल्ट, इट मींस दैट इज डिस्चार्ज बैटरी। क्लियर? अब 2.25, इसलिए इफ यू आर मेजरिंग ए सेल एंड इट इज शोइंग योर मल्टीमीटर 2.2, then you can say it is charged. Again, the condition cannot be predict in open circuit, because जब क्लोज सर्किट में लगाएंगे तभी उसके जब करंट फ्लो होता है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है कि वो कंडीशन में उसकी लाइफ कितनी हो चुकी है, कितना नंबर ऑफ साइकिल वो यूज हो चुका है, कितना वो आपको टाइम तक वो डिस्चार्ज करके और आपको सप्लाई दे सकता है। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? व्हाट इज बैटरी चार्जर एंड फ्लोट रेक्टिफायर? तो फ्लोट रेक्टिफायर जो पहले यही था कंसेप्ट कि वो जो फुल्ली चार्ज हो जाती थी उस यूनिट से हटा के उसमें लगाते थे। अब वो सब सिस्टम खत्म हो गया, वी आर यूजिंग मॉसफेट। मॉसफेट इज वेरी हैज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज वोल्टेज कंट्रोल करंट डिवाइस। करंट आप शॉर्ट सर्किट भी अगर कर देंगे उसके टर्मिनल को, फिर भी वो जो रेटेड करंट से ज्यादा नहीं देगा, गर्चे एज यू नो V इक्वल टू IR, that will be not followed in your MOSFET। अगर शॉर्ट सर्किट कर लिए, करंट रेजिस्टेंस कम कर दिए, तो आई तो बढ़नी चाहिए एज पर रूल, बट यू विल नॉट सी लाइक दिस। दैट्स वाई MOSFET आने से ये हेडेक बहुत बड़ा कम गया, कि वो जो हम नॉर्मल जो SCR नॉर्मल जो पावर डायोड यूज करते थे, तो वहाँ हम जो बैटरी चार्जर को, ये नहीं कि बैटरी की डीप डिस्चार्ज को लगाए बैटरी चार्जर पे और एक बार 55.2 लगा के छोड़ दिए, वो डैमेज हो गया सेट। क्यों? कि वो बहुत हाई करंट लेता। वो अगर 100 एम्पियर क्या, वो डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस, वो सर्किट जो क्लोज सर्किट होगी उसका पूरा, वो जो आप पूरा यू हैव स्टडीड इन योर एकेडमिक, तो उसके लिहाज से वो करंट लेता है एक्सपोनेंशियल। दैट्स वाई टू प्रोटेक्ट द डिवाइस क्या होता है कि हम करंट लिमिटिंग करते थे पहले, कि करंट 100 एम्पियर से आगे नहीं जाना है। तो जैसे जैसे देखते थे वोल्टेज बढ़ रहा, करंट अकॉर्डिंगली वो ड्रॉप हो रहा है, तो फिर क्या पोटेंशियोमीटर से थोड़ा वोल्टेज और बढ़ाते थे, और वोल्टेज बढ़ाते थे। ये वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते उस चार्जर जो होता था बैटरी चार्जर, वो उसके उस विथ पोटेंशियोमीटर हमारी कैपेबल होता था वेरिंग वोल्टेज। ओके, फ्लोट रेक्टिफायर का कुछ नहीं होता था, वो सिंपली उस पर जब कनेक्ट कर दिए, वो एक्सटेंस से कनेक्ट कर दिए हैं, जब लाइट जाएगी वो बैटरी डिस्चार्ज होता था। और स्विचिंग क्यूबिकल अब जो है ये सब ऑटोमेटिक करने के लिए स्विचिंग क्यूबिकल आ गया है, वो ये मैनुअली की जरूरत नहीं है, फुल्ली ऑटोमेटिक सारा काम। तो आपको ये सब काम टेंशन अब खत्म हो चुका है। अब एनी यू हैव एनी डाउट बैटरी चार्जर और फ्लोट रेक्टिफायर में? हेलो, Doubts cleared. नो इट्स क्लियर, नो। Function of switching cubicle, no, it will be not important for your exam's point of view. Switching cubicle, as we have discussed, switching cubicle का simply क्या है, क्या the purpose of the switching cubicle to change the required voltage and connect the circuit accordingly as per requirement of the battery and your exchange. Okay, in short, basic different small exchange power plant, medium exchange power plant, and large exchange power plant. From examination point of view, you can write it or you can memorize it, because nowadays you can see, you will not see practically, you will not see like this, but as per syllabus, if there is available, so you must remember, if there is alternative, you must stick like this. Okay, 3 types of exchange: 5 to 24 ampere, 25 to 50, and greater than 50। ये 3 greater than 50 जो होती है, वो उसमें क्या होता है, वहाँ हम इनपुट 3 फेज लेते हैं, अदरवाइज सिंगल फेज पे। सिंगल फेज में क्या होता है, इट मीन्स रेक्टिफायर जो होता है वो पूरा जो पावर प्लांट होता है वो सिंगल फेज का ही होता है, छोटा सा यूनिट होता है, सिंगल फेज पे यूज करते हैं। क्यों? ताकि जो हमारा पावर सप्लाई हो 3 फेज अलग से सेपरेट ट्रांसफार्मर लेने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, नो single unit, based on the unit, single, 2 unit, 3 units, no most important, based on the type of operation. One is conventional type and second one is SMPS based. Conventional power plant, it is no, you, in my opinion, you will not get not working in India.
in our any exchange nowadays. Okay, we are using mainly SMPS based. This has a lot of advantage. That's why we have not changed it. You will not get like this. Separate यहाँ हम use कर दिए हैं conventional power plant. So actually time is limited. That's why I'm leaving these parts. Okay, this is not important for your examination point of view. This here is you see फ्लोट में क्या होता है, ये देखिए SCR से क्या होता था, स्विचिंग को हम चेंज करते थे और उसके लिहाज से क्या होता था, हमारा आउटपुट वोल्टेज वो हमारा रिक्वायर्ड उसको पहले जो चेंज करते थे ना पोटेंशियोमीटर से और ये SCR के स्विचिंग से। अब हमारा ये सब काम वो ऑटोमेटिक फायरिंग ये सब की जरूरत नहीं है। हम जो SMPS बेस को डिस्कस करेंगे उसमें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बैटरी चार्जर we have discussed in this earlier. Next, yeah, you see here in small block diagram of conventional power plant. Simply 220 आपको voltage power supply, and if you are using 3 phase, then there will be a 3 unit like this, because rectification will take place from phase to line, phase to neutral only. Okay, now single transformer पहले क्या होता था, step down transformer, we are using step down transformer, then rectifier, filter and AC repel करने के लिए वो filter use करते थे, and voltage regulator. Voltage regulation is very very important as we have discussed earlier, because voltage जो है बैटरी डिस्चार्ज और फुल्ली चार्ज के लिए परसेंटेज बहुत बहुत स्लाइटली चेंज है। बिकॉज अगर इनपुट साइड आपको 25% वोल्टेज की वेरिएशन हो गई तो आपका बैटरी तो वो चार्जर का काम नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि अगर 25% आपको वो जो है 2.25 और से 2 कितना हो गया, आई थिंक 12% वेरिएशन से आपको देखे जो आउटपुट वेरिएशन जो है, अगर 12% इनपुट साइड वेरिएशन हो गया तो वो तो बेकार हो गया आपका चार्जर यूनिट। इट मीन्स तो हमको वोल्टेज वहां पर पोटेंशियोमीटर के थ्रू इसके थ्रू उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई previously we are using the voltage regulator at output to get the required potential. Okay. Okay, sir. No. What about the internal circuit? You see input आपका आया, power diode use करते, suppose if you are using the bridge rectifier, this is the connection method and you will get the output here. You will So, see this is what my is syllabus yeah, sorry. for the knowledge. This is my syllabus or for the knowledge? No, in my opinion, this is the part of your syllabus. Yes, sir. Yeah, but chances is low. You should know. Here, why I am telling you what repel. Previously, I was using the word repel. What is repel? Everyone know? Repel. Yes, sir. English word you repel. Repel. You can पानी में जो एक आपको अगर suppose you have drop a stone, what that is also called repel. That is wave. So when you are changing the from AC to DC, using the power diode, okay. Yes, sir. What will be happen? There will be charge. That will actually power diode will convert from unidirectional bidirectional to unidirectional, because AC is sinusoidal wave in swing from positive peak to negative peak. Okay. So power diode will be changed into directional positive peak only. तो अब हमारा जो द वेरिएशन इज रिपेल, उसको हमको कम करना है। व्हाट वी रिक्वायर्ड, बिकॉज नो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और बैटरी रिक्वायर्ड रिपेल। इफ द रिपेल इज हाई, that is not good, particularly for telecom equipment. It will be damaged. Okay. And battery for best performance of the battery also, repel should be least, but we do the compromise, as we have said earlier in the previous slide. On conventional type, high repel circuit were used for float battery charger unit. Okay, but least repel for float rectifier, because our exchange cannot work on high repel.
रिपेल में क्या होगा, तो उसको कम करने के लिए क्या होता था, द सर्किट बिकम कॉस्टलियर बाय LR सर्किट लगा के उसको क्या करते थे, चार्जिंग जो है उसको पैरेलल में यूजिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर, उसके जो पिक्स की जो वेरिएशन उसको कम करते थे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड यू सी हियर द फॉर्मूला हियर, गामा इक्वल टू के, एक कांस्टेंट सी, ये है जो है रिपेल का। तो यू सी फ्रॉम हेयर, if you if you want to decrease the repel, value of the repel, you should increase the either the value of the capacitance or inductor or omega, मतलब 2 pi f frequency. If you increase the frequency, again you can decrease the repel. This is the main concept behind our SMPS. Okay, and RL we cannot change because requirement of exchange will vary, and that is we cannot change because we are working the load. We cannot you can say if the your exchange load is 5 ampere, if number of customer is 500 ampere, customer is so high, you cannot say the customer okay, don't pick the your hand receiver, our load is high. That's why you cannot change. You have three options: either increase the capacitance value, inductor value, or frequency. There is again limitation. If you increase the capacitance, the circuit become very, you can say, costly and very irreliable, because you will get the flash, high flash in on off condition. And capacitor, if you are in high capacitance, then क्या होगा कि आपका वो जो leading circuit, and you have to pay because power factor will be disturbed, and you have to pay some amount to our distribution company. They will give the penalty. That's why either you have to use the power correction circuit. Okay, that's why SMPS, in SMPS what is happening, we have if you are increasing, suppose if you increase the frequency from 50 volt to 100 times, then what will you achieve? You will decrease your repel by 100 times. If you increase the frequency by 1000 times, you can decrease your repel by 1000 times. Still with same the RL equipment, LC equipment, okay, LC circuit. This is the main concept behind the SMPS. That's why in nowadays, if you are using the PC, you will see the SMPS unit is there to give the different DC voltage. They are again using the SMPS. SMPS basically what it means, switch mode power supply. The supply is in switching mode. Of switching, why switching word is using there, we will see. Okay. Now again we are using the in our main power plant, they are all are SMPS based. Okay, they are mainly using the MOSFET as a main source for switching purpose. No, come to here from block diagram, you can see main input, rectifier and filter, just like your conventional tap. Again chopper में क्या हो रहा, chopping, we are chopping the wave after rectification. वो we will chop the मतलब chop the wave, मतलब you will increase the frequency. There is many different electronic circuit, power circuit, by which we will increase the frequency. Okay, and after that we will filter out. Then what will happen, the requirement of the filter capacity will be very small. Okay, here in next slide you see. And one more thing, in conventional tap, what we are using? First of all, step down transformer. Again, that is bulky, heavy, loss making, you can say power loss, sorry, DC loss and AC loss, you know. So all these are removed by using SMPS based. In SMPS, we are not using the step down transformer. Okay. Then how we regulate, you can say how we decrease our voltage from 220 to 50 volt
one very important question rises in our mind. Okay, here you see in this circuit we are using, suppose, or we are familiar with the transistor, working principle of transistor. Okay, suppose if there is pulse on your base, what will happen? That will transistor will operate in active mode on cutoff mode. Okay, 0 1 0 1. It means either power will be go to this circuit output side or not. Okay, now here is one small circuit. See here a diode, a L, matlab an inductor, and parallel a capacitor, and the output. Here you will see one term we use duty cycle of the transistor. That is on time divided by on time plus off time. That is duty cycle of, matlab full cycle of the pulse wave on we are using on the base. Okay. Ab input voltage equal to, sorry, output voltage equal to input voltage multiplied by the duty cycle. What we are getting from here? If the input voltage is suppose 200 volt, okay, and we required output voltage 50, it means 1/4. Okay, that means if the pulse width is in active mode, matlab you can say in positive cycle is 1/4 of total wave. It means suppose there is 1 millisecond pulse wave, so 0.25 is positive and rest 0.75 is 0. Then what will happen? 1/4. Okay, are you getting my point? Yes, sir. And multiply by the multiply by the input voltage 220. Then what will we have? We will get 50 volt output. You can say this is acting as a step down transformer also. We are replacing the, because transformer is irreliable loss making equipment. Okay, first of all with the help of this small circuit we can replace the transformer or requirement of the our step down voltage transformer. Okay, who is Ranjan JTO? Why you are making like this? खत्म हो गई। सॉरी सर, मिस्टेक। कहाँ चल रही? ये सब कौन टिक माय कर मिस्टेक। यही कहा सिलेंस, यही कहा। वो आर वेस्टिंग आवर टाइम। अगर आपके पास जरूरत नहीं है तो आप चले जाओ छोड़ के। ये बच्चों की तरह ये सब आप ये मैच्योर्ड एज में ये सब करने की हरकत अच्छी बात है? ये बताओ। ओके, माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी बॉस, माय Those who मिस्टेक, are not interested, don't do other works. This is not mandatory. सॉरी सर, बाय मिस्टेक। Please. Sir, in this case, the transistor is working. Please unmute. Please mute yourself. Those who are not asking the question. Okay. Yeah. Please, madam, tell me. Sir, in this case, so the transistor is working in which mode? I mean, it is a common collector kind of arrangement, and common emitter है ना? Common emitter. Yeah. Common emitter. Active and cut off. Why? Because we are using the on base side we are using the pulse, high pulse ना, कि एक स्क्वायर वेव यूज कर रहे हैं, स्क्वायर वेव नहीं यूज करेंगे, इसमें हम अपना यूज करेंगे वो पल्सेटिंग, जो पल्स की जो विड्थ है वो वेरिंग पल्स, बिकॉज हमको वो चेंज करना। अगर स्क्वायर वेव यूज करेंगे तो 50% होगा। यस सर, क्लियर सर, क्लियर। अगर डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, यहाँ क्या हो गया कि मैनुअली आदमी यू कैन नोट, सपोज 50 हर्ट्ज, in 1 second 50 times voltage is changing. It is not possible for any manually to regulate. That's why this is automatic circuit. You will get the output like only controlled. Why? क्योंकि वो जैसे वो पल्स चेंज हो रहा है, वो यहाँ ट्रांजिस्टर जो है इधर
कट ऑफ और सैचुरेशन मोड में रह रहा है ना। तो या तो पूरा वोल्टेज मिल रहा है या तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अब वो Yes, जो sir. वोल्टेज जो जिस कंडीशन में अब नो वन वन क्वेश्चन इन आवर विल रेज इन आवर माइंड, तो आउटपुट में वोल्टेज जो है फिर उस वक्त कहाँ सब एनर्जी कहाँ से आएगी? द एनर्जी स्टोर्ड इन योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर दैट विल बी सप्लाई फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, वो क्या होगा Yes, जिस sir. वक्त एक्टिव होगा उस वक्त क्या होगा? व्हेन एज यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टर, इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो दे रेजिस्ट द चेंजेस। वो जैसे वन होगा तो वो रेजिस्ट करेगा, बढ़ो नहीं। मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्रिएट हो जाएगा तो वो रेजिस्ट करेगा, उसको घटने नहीं देगा वोल्टेज को। अगेन तो क्या होगा उस ड्यूरेशन में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कटने के बाद, तो वो जो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई है इंडक्टर में, इन द सेम वे एट दैट टाइम कैपेसिटर विल बी ऑल्सो चार्ज। तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर बोथ विल बी डिस्चार्ज थ्रू द लोड एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो वही जो हमारा जो ड्यूटी साइकिल जो चेंज कर रहे हैं, तो व्हाट इज आर यूजिंग, तो उस ड्यूटी साइकिल से क्या होता है कि इसकी इंडक्टर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो हमारी वो जो यू कैन से नंबर ऑफ चार्ज जो हमारा स्टोर हो रहा है उसको हम वेरी कर रहे हैं। दैट्स वाई हमारे आउटपुट वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द ड्यूटी साइकिल। ओके, Yes, sir. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया एसएमपीएस में हमारा वो ट्रांसफार्मर को, जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसको वी कैन रिमूव इन एसएमपीएस। दैट्स व्हाई यू विल सी एसएमपीएस का जो पावर आप जो भी देखे होंगे बहुत लाइट वेट होता है। हैव यू रियलाइज इट? एक नॉर्मल चार्जर जो होता है वो बल्कि होता है, भारी होता है, कॉस्टली होता है। क्यों? उसमें पूरे कॉपर आप यूज करेंगे मोस्टली, आप अगर डीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस कम हो, और वो कॉस्टली भी होगा, वो बल्कि होगा, भारी भी होगा, उसमें बहुत सारे लॉस होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, ऑल दैट। ये ऑल आर रिमूव यूजिंग दिस ए स्मॉल सर्किट, वेरी चीप। कंपेरिजन अगर करें आप ट्रांसफार्मर के लिहाज से ये बहुत सस्ते होते हैं। ठीक है, अब आपके जो भी है मोबाइल चार्जर सब मत देखिए एसएमपीएस बेस्ड है सारे रेक्टिफायर, क्योंकि ये एक छोटी सी सर्किट लगती है, वो आपका वो वोल्टेज भी डाउन हो जाता है, आपको रिलायबिलिटी है। वन मोर इम्पोर्टेंट, वहाँ वोल्टेज रेगुलेशन था, दैट वाज ए बिग चैलेंज इन आवर प्रीवियस कन्वेंशनल टाइप। दिस इज आल्सो रिमूव्ड यूजिंग दिस सर्किट। वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज ओवर। One more important, this circuit is called flywheel circuit. You can write down. Okay, this is important one. The circuit, this is tank circuit. This is called flywheel because the in mechanical, oh, you have perhaps you have heard the word flywheel. Flywheel is used in engine. Okay, four stroke or two stroke. Why? When there is no energy, that energy is stored in your flywheel that is discharge on that time, है ना, we are using that time. In the same way here this is the electrical flywheel. In when transistor in the cutoff mode, this circuit is providing the electrical energy. Here ये voltage regulation, as you have seen in the earlier, we are using the potentiometer, this that to change the to increase or decrease the voltage. Here very simple circuit. If you are working on your ITI module, you have seen there is a small preset, very small resistance, but the variable resistance preset they are using. You can change simply the resistance. That what happens, it changes the reference voltage. And what is happening, if you are increasing or changing the reference voltage, then pulse width is changing. If you are changing the pulse width, what will happen? The charging of that's why output voltage will be changed. Okay. This is the voltage regulation. So main the complex part was the step down and voltage regulation. All are solved by this circuit only. This is the actual block diagram of the SMPS. We are using actually the main circuit. We are not using the diode. We are using MOSFET. MOSFET has some more advantage, as we have discussed earlier. This is voltage controlled current device. It means if you will short circuit the output terminal,
again a fixed amount of current will be flowed through the circuit, not infinite. Okay. That's why our battery is protected. If you are if you the requirement of your battery charging is 100 ampere, and then power plant will be only give your 100 ampere output. If you are connecting power plant properly and designed on properly. Okay. Now, this is from examination point of view. This is for concept point of view. Examination point of view, you must remember we are using SMPS bus power plant. Okay. Reliability advantage in all these things. Leave it. Most important here. Now come to our specification, technical specification. Okay. Input voltage. You see here is a lot of variation. You see 350 to 480 voltage if in three phase. If there is so many variation, again you can achieve the 55.2 volt output, even if there is 320 voltage input. This is the main, we can say, the unique property of SMPS. High variation, because in ruler exchange we will see there is a lot of variation in power supply, lot of variation. Okay. Most important, the high variation from 320 to 480. It may ask in your question. Frequency, again, there is variation 45, although you will not get 45 hertz from your distribution company. Sorry? Sir, Yeah. if the face-to-face voltage one phase is absent, or SMPS is working or not? Depending on the design of the manufacturer. Sorry, unwanted, please mute your unwanted person, please. देखिए, depending on the manufacturer, some manufacturer for the safety purpose they doesn't operate the power plant in single phase mode. But previously suppose in ITI in single phase वो operate हमारा हो जाता था. But जो है आपका क्या होता है उस केस में क्या होगा, रिपेल विल बी हाई. दैट्स वाई जो है ना अपनी क्वालिटी के लिए वो मोस्टली जो है आप जितने आप लेटेस्ट जितनी आप बना रहे हैं पावर प्लांट उसमें नहीं मिलेंगे आपको वर्किंग हो रहेंगे. अगर एक फेज भी गया तो आपका पावर प्लांट अलार्म देगा और कट ऑफ में चला जाएगा. सिर्फ ITI का जो कुछ मॉड्यूल है वो ऑपरेट होता है. ऑब्वियसली दे विल गिव द आउटपुट. ओके. फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इज वेरी हाई, वेरी गुड. ये तो आपका डीजी सेट में ही हो सकता है, क्योंकि आपका पावर सप्लाई जो है वहाँ 49.5 से लेके 51 भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो पूरा ग्रिड कनेक्टेड है, वो सारे ट्रिप कर जाएंगे. वो पॉसिबल ही नहीं कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना वेरिएशन हो. लेकिन अगेन हमारा मॉड्यूल जो है, हमारा पावर प्लांट जो है SMPS बेस्ड, दैट इज डिजाइंड फ्रॉम 45 टू 65 हर्ट्ज. इतनी वेरिएशन को भी वो आपके सेव कर देगा, उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपके आउटपुट वोल्टेज वो एंड करंट वो मेंटेन करके रखिए. देखो इतनी वेरिएशन पे भी. ठीक है. नेक्स्ट, आउटपुट वोल्टेज फ्लोट मोड, यू मस्ट रिमेंबर -54 प्लस माइनस 0.5. ठीक है. पावर प्लांट का एडजस्टमेंट जो है -48 टू 56. 48 से नीचे जनरली हम वो है एक्सचेंज को नहीं ऑपरेट करते हैं, तो जनरली कहीं कहीं पे आप उसको कट भी कर देते हैं. इसलिए आपको एडजस्टमेंट का ये ऑप्शन मतलब उसमें रहता है एक्सचेंज में. अब तो मैनुअल नहीं, अब तो ये सब फुल्ली ऑटोमेटिक आपको रहेगा. वो कुछ कुछ एक्सचेंज में कुछ कुछ जो आप आते हैं, समटाइम इन सम कंपनी यू विल गेट द देयर इज द एडजस्टमेंट रेंज. यू परहैप्स आई थिंक डेल्टा आई थिंक एंड HFCL शायद देयर यू विल मतलब ऑन panel. You first of all when you install the battery set, there will be matlab using the username password. Okay, you can change all these parameters. After that you set it and the power plant will work as per your requirement. Okay. Charging mode -55.2 plus minus 0.5. तो मॉड्यूल जो होगा इधर 100 एम्पियर और 200 एम्पियर.
अब 50 के भी आती हैं, वो तो डिफरेंट है। एक स्टैंडर्ड जो है ये जो परफॉर्म जो था हमारा ITI का, अब तो आपके जो BDS पे है वो तो कम के आते हैं, ठीक है। बट जो बेसिक कंसेप्ट जो है वो सभी का सेम है, सब SMPS जब यूज कर रहे हैं। वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज फॉस्फोमेट्रिक नॉइज। दिस इज नथिंग, मतलब डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज सिंपली रिपेल। ओके, repel noise, but usually they are using the noise means unwanted variation, unwanted signal। तो फॉस्फोमेट्रिक इसको वर्ड यूज करते हैं। ये जो हमारा बैटरी जो चार्जिंग में यूज करते हैं, मतलब AC टू DC कन्वर्ट किए, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट मैथमेटिकली जीरो। ओके, इज इट क्लियर? यू विल गेट द एग्जैक्टली जीरो थ्रू DC सप्लाई, आइदर वो जो DG सेट और आपका जो मेन है आपका सेल, एनी सेल गिव्स जीरो रिपेल। ओके, लेकिन जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 100% जीरो नहीं होगी। दैट्स वाई देयर इज रेंज लेस देन 4 mA विदाउट बैटरी इन फ्लोट। अगर फ्लोट पर कनेक्टेड बैटरी नहीं है तो हमारा लेस देन 4 mA, और बैटरी कनेक्टेड है तो लेस देन 2 mA। ये हमारा रेंज है ऑफ दैट रिपेल नॉइज। ओके, ऑटोमेटिक नॉइज। इनपुट पावर फैक्टर, जो पावर फैक्टर है हमारे पावर प्लांट का, दे आर वेरी गुड, बहुत इम्प्रूव्ड है। 0.95 लैगिंग आपको मिलेगा बस। विथ 25% टू 100% लोड में आप यूज कर रहे हैं तब भी इससे ज्यादा लैगिंग नहीं होगी। ओके, इफिशियंसी इज 90, मोर देन 90% यू कैन से। प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन उसमें रहते हैं। अगर सपोज भूल से कहीं शॉर्ट भी हो गया तो आपको वो पावर प्लांट बर्न नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, वो वो आपका वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन हो गया मॉड्यूल का। जनरली व्हाट वी आर यूजिंग, सपोज 100 एम्पियर है मॉड्यूल, तो आप जो है वेरिएशन जो है 80 टू 110 तक दे सकता है ना। कांस्टेंट करेंट फ्यूचर अगर 100 एम्पियर लिखा हुआ है तो आपको वो 110 तक आपको आउटपुट दे सकता है। दैट्स वाई वो जो आप एक कोई पूछ रहे थे क्वेश्चन, एक्चुअली द आवर एक्सचेंज लोड इज आल्सो वेरिएबल, नॉट फिक्स। ये कोई मतलब जस्ट लाइक इफ वी आर यूजिंग द हीटर, इट विल ड्रॉ द फिक्स अमाउंट ऑफ करंट, बट आवर लोड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कस्टमर। कस्टमर की वेरिएशन से आपका एक्सचेंज का लोड चेंज होता रहता है। ओके, एंड अगेन मेनी थिंग्स, इसलिए वेरिएशन, अगर वेरिएशन होगा तो थोड़ा देर वो बैटरी के जो है जितना एक्स्ट्रा करंट होगा बैटरी चार्जिंग पर जाएगी, अदरवाइज वो आपको एक्सचेंज वो चलता रहेगा। ओके, दे आर डिफरेंट अलार्म्स। अलार्म्स आई थिंक दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू मस्ट go through all these things. No, a very important thing is earthing. Earthing of our exchange is very important, as you know. Are you getting my voice clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, earthing is very important. ठीक है, actually this is very essential part for our electrical and electronics. You will see a word electrical, electronics earthing and electrical earthing in our exchange. These are not many, मतलब don't get confused. Both are earthing, but the resistance जो parameter है उसकी that is there is some difference in the standard of that. Okay. तो अर्थिंग के लिए हमारा बहुत ज़्यादा उसमें एक्चुअली वी मस्ट टेक केयर कि अर्थिंग हमारी प्रॉपर काम कर रही है नहीं काम कर रही है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू विल नॉट गेट द रिलायबिलिटी इन योर पावर प्लांट ऑल्सो। बिकॉज अगर अर्थिंग आपका सही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका वो जो है ना वो मॉस्फेट में चांसेस होंगे मॉस्फेट दैट मॉस्फेट विल बर्न आउट, बिकॉज एक्सेस जो लीकेज करंट ऑफ डिफरेंट चीज होता है दैट। अगर इलेक्ट्रिकल का आर्थिंग आपका प्रॉपर नहीं है, आपके जो 3 पिन में अगर वो जो आर्थिंग जो टर्मिनल है, इफ द वोल्टेज बिटवीन वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन योर अर्थ टर्मिनल, अर्थ यू कैन से अर्थ टर्मिनल एंड neutral is more than 0.5 volt, then the supply is very bad and your power module will burn out. Okay,
So Sir, yeah, AC earthing and AC earthing are separate or common? no, both must be separate. जहाँ as far as possible दोनों को डिफरेंट होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं हम लोग उसमें 0.5 वोल्ट बेस्ट मानते हैं, उससे नीचे ही होनी चाहिए, नॉट मोर देन 2 वोल्ट। What is the range of AC earthing? सॉरी 2 एम्पियर, और उसमें 5 एम्पियर तक भी चलता है। बोलिए। What is the resistance of AC earthing and DC earthing? मतलब minimum resistance. मैक्सिमम आवर ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थिंग मैक्सिमम 2 एम्पियर। देखिए एज फार एज पॉसिबल व्हेन इफ द लो रेजिस्टेंस that is good and that is ideal one, okay, but generally we use less than 0.5 ohm for electronics earthing, ठीक है, and in case of electrical earthing actually in condition maximum not more than 5 ohm. In your text, one thing, एक minute, I am going to that your Resistance of both. मतलब what is the maximum resistance? if you are measuring the resistance, वो जो अर्थिंग मेजर करने की इक्विपमेंट आती है ना, उससे आप if you will Yes, measure yes. the earthing, the not exceeding, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थिंग की 2 ओम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। 2 ओम क्या मतलब सर? DC अर्थिंग या AC अर्थिंग? यूनिट और ये डीसी अर्थिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थिंग वर्ड यूज करते हैं, डीसी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थिंग के लिए जो आप यूज करते हैं या डीसी आप वर्ड बोल रहे हो, वो नॉट मोर देन 2 एम्पियर, एकदम दैट इज वर्स्ट कंडीशन, ठीक है। Yes sir, yes sir. बट 0.5 ओम जो है दैट इज जनरली हम उसको अचीव करते हैं, 0.5 ओम से बिलो होनी चाहिए, ओके। Identically 0.2 ohm. 0.2 दैट वेरी गुड, 0.2 आप अचीव कर रहे हो, दैट्स नाइस एक्चुअली। देखिए इट वेरीज ऑन ज्योग्राफिकल एरिया, सपोज जहाँ ड्राई क्लाइमेट है अगेन वो सॉइल की कंडीशन है उसके लिहाज से ये वेरी करेगा, आप वहाँ पर इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट टू 0.2 ओम एवरीवेयर इन इंडिया, ओके। In a hilly area again you there will, when there is a dry condition you will get the increased resistance, okay, but it should not increase 2 ohm। अगर 2 ohm से ज्यादा है आप उसको नया अर्थिंग प्रपोज करके जल्दी से जल्दी उसे लगा उसको चेंज करवा दिए to get the reliability in your telecom equipment। and one more thing, जो इसमें different electrode use करते हैं from exam point of view, this is are important, हम अभी वही टच करेंगे, ठीक है, क्योंकि time is again we are very less time, okay, 120। अच्छा, ये जो डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स जो होगा फर्स्ट इलेक्ट्रोड से नॉट ग्रेटर देन 375 सेंटीमीटर, यू कैन राइट इट। अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस इससे ज्यादा होने चाहिए, बेसिकली डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स जो डालते हैं ना तो वो अलग अलग स्पेस में डालते हैं, इससे कम में नहीं डाल देंगे हम, ठीक है। और वेस्ट जो है ये लिख लीजिए आप, लेस देन 0.5 ओम और जो है 2 ओम फॉर आवर इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थिंग, ओके। थैंक्स फॉर bearing me। Is there any question? सॉरी, हेलो। हाँ बताइए। या नमस्कार सर। अच्छा या मुझे ये बताइए थोड़ा, अभी एक मिनट में बता दो, ये थोड़ा -48 वोल्ट क्यों रखते हैं, और ये वोल्टेज का थोड़ा दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे क्या, अभी इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए जो है ना माइनस, हमारा जो। देखिए माइनस प्लस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, व्हेन यू आर कनेक्टिंग द पोलैरिटी ऑफ माइनस देन इट इज कॉल्ड माइनस, पॉजिटिव प्लस। अब माइनस क्यों यूज करते हैं, देयर आपको कोरोशन होता है पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो वो सब और भी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं अगर हम पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव यूज करते हैं, समझ रहे हैं आप, रिलायबिलिटी इससे आपकी बढ़ जाती है।
अच्छा, तो कोरोशन वगैरह जो है वो पॉजिटिव के केस में ज्यादा होता है, उसलिए हाँ, अवॉइड करने के इसलिए लिए आपको हम इस बैटरी टाइप का टर्मिनल आपके घर में इन्वर्टर में देखे होंगे कि थोड़ा दिन बाद जो है नेगेटिव। वहाँ बनती है। एक नहीं, ऐसे कई सारे फैक्टर हैं। शॉक लगने के चांस उसमें कंपेरिजन टू पॉजिटिव नेगेटिव में कम होते हैं। अगर मान लीजिए सेम वोल्टेज है, अगर पोटेंशियल डीसी का लगा, डीसी में अगर पॉजिटिव से लगा और नेगेटिव से लगा उस बंदे को शॉक, तो नेगेटिव की सीवियरिटी कम होगी, पॉजिटिव की सीवियरिटी ज्यादा होगी। ओके ओके, मतलब प्रोटेक्शन पर्पज से, ह्यूमन बहुत प्रोटेक्शन सारे और पर्पस है। इसलिए हम्म एडवांटेज है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन, यू हैव ऑप्शन, यू कैन कनेक्ट द इक्विपमेंट आइदर थ्रू माइनस टर्मिनल और थ्रू प्लस। हम्म तो दैट्स वाई -48 सारा टेलीकॉम -48 इंटरनेशनली चला हुआ। ओके ठीक है, ओके ओके। फर्क कुछ नहीं पड़ता है। आप पावर प्लांट का जो है पॉजिटिव टर्मिनल जो है, पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं। आपके पास यू हैव टू ऑप्शन, आइदर यू कैन कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल टू योर टेलीकॉम इक्विपमेंट, बट नहीं चलेगा यहाँ, यहाँ वो डैमेज कर देगा अगर वो सेफ्टी नहीं होगी तो। क्यों? एग्जैक्टली। पॉजिटिव को ग्राउंड करते हैं। पॉजिटिव को पावर प्लांट के, पॉजिटिव बैटरी सबको देखिएगा आप वहां एमडीएफ रूम में, पावर प्लांट रूम में, अगेन वहां पर सबको देखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल को वो जोड़ देते हैं अर्थिंग से, है ना। हम्म और नेगेटिव रन करते हैं। नेगेटिव रन करने से वो फायदा बहुत बहुत सारे हैं। दैट्स वाई डोंट कंफ्यूज। देखिए कोई नेगेटिव अलग से कुछ नहीं है। वो टर्मिनल को मुझे जो एज ए सेपरेट यूज करते हैं ना आप, मतलब वो किसी से टच नहीं करे, मतलब उसकी सपोज बॉडी, कोई भी एक्सचेंज की जो बॉडी होगी वो कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा बॉडी। हमको नेगेटिव प्रोटेक्ट करके ले जाते हैं और उसके ऊपर आप देखेंगे यू विल सी इन द डिफरेंट जो हमारा इक्विपमेंट होता है उसमें फुल्ली इंसुलेटेड रहेगा वो नेगेटिव टर्मिनल, उसको कनेक्ट करके वो एक्सचेंज में लगाते हैं, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। वरना जनरली आप जो नॉर्मल हाउस होल्ड में क्या करते हैं, हम पॉजिटिव को करते हैं प्रोटेक्शन। तो वहां इसलिए करते हैं कि क्योंकि अगर वो टच कर गया बॉडी से भी तो शॉर्ट होगा, फ्लैश होगा। क्यों? बिकॉज पॉजिटिव तो ऑलरेडी ग्राउंडेड है, ग्राउंड के थ्रू कनेक्टेड बॉडी भी है। ठीक है। अच्छा, एक जो ऑर्गेनाइजर से थोड़ा ये पूछ लीजिए, आपको पता है तो बता दीजिए, ये सिलेबस जो है अभी, ये एक नया सिलेबस सर्कुलेट हो रहा है, एक पुराना है जिसके अंदर सेक्शन डिवाइडेड है, सीएफए चूज किया है किसी ने, सीएम चूज या किया या है, या, या। लेकिन उसके बाद जो है ना कॉमन सिलेबस आ गया है, तो सिलेबस जो है कौन सा अभी कंसिडरेशन में रहेगा पेपर के लिए? सर ये आपको अभी जो देखिए, आई फ्रॉम फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको ये लेक्चर लिया हूँ अभी, जो जो आपके जो करवान बैच इंचार्ज हैं आप उनसे कंफर्म कर लें, शायद वो हायर अथॉरिटी से कंफर्म करके आपको कुछ गाइड कर पावे। मैं तो आपको बस इस टॉपिक पर ज्यादा डिटेल जो भी चीज था मैं ओके बता दी। ओके, थैंक ओके। यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू, वेलकम। हेलो हेलो ओके ओके, हाँ। सर ये 375 जो सेंटीमीटर किस पोल का डिस्टेंस है ये बताया था अर्थिंग ये में? जो ये अर्थिंग जो डिफरेंट ग्राउंड जो करते हैं ना, सपोज जो क्या होता है, कॉपर के प्लेट है, कॉपर के जी जो प्लेट्स नीचे अर्थिंग करते हैं उसमें, जमीन में। हाँ जमीन में, उसमें एक एक प्लेट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस वो 375 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एक ही जगह पर नहीं होना है। वो अगर उससे जितना कम कर देंगे क्या होगा, उसकी रिलायबिलिटी कमेगी और आगे और भी कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ये जो है हमारा पॉइंट, जो इसलिए बोल रहा हूँ ये सब मार्क कर लो कि हो सकता है आपको आ जाए 370, नहीं 375 करने आपको जो चूज करना है। ठीक है। सर समझ में नहीं आया इस 375 कहाँ प्लेट में नीचे कहाँ दो दो अरे प्लेट कहाँ पे रहती है सर? नीचे, जमीन में? नीचे जो केबल जाती है ना वो पाइप के थ्रू नीचे जाती है। जी जी अब जी जी। अलग अलग वो जो है ना वो इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं जमीन में। अच्छा उसमें दो डाले जाते हैं सर अंदर? हाँ हाँ, दो तीन चार, चार डालते हैं, चार ओके डालते हैं ओके इलेक्ट्रोड। ओके ओके तो ओके उसके ठीक। बीच का जो इंटर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ओके ओके ठीक है सर ओके ठीक थैंक यू सर। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर। ओके।
अरे खाना अरे कड़ी बनाई लो हमने आपने इतनी जल्दी जल्दी खाना है फिर लंच अभी तो हुआ है क्यों क्लास नहीं है क्या
आपकी अगली क्लास 2:30 बजे शुरू होगी। वो टीचर कहीं कोई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल वर्क में लग गए हैं। आपकी क्लास जो है 2:30 बजे शुरू होगी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सबको? यस यस, हाँ ठीक ऑडिबल है। सर। अच्छा, एक चीज बताएंगे सर, आप अपना ऑर्गेनाइजिंग टीम से हैं क्या? हाँ बताइए बताइए। ये सिलेबस अपना जो दो दो सिलेबस सर्कुलेट हो रहे हैं, ओल्ड एंड न्यू, तो हाँ जिसके अंदर पीएफए सीएम वगैरह जो है अलग अलग सेक्शन सेलेक्ट किया है फॉर्म अप्लाई करते टाइम, तो कौन सा मतलब कॉमन आएगा या ये सेक्शन वाइज आएगा, कैसे? मैं आपको ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखो ना। तो मेरा नंबर देता हूँ 80। हाँ मैं हाँ आपको हाँ, नंबर सेंड कर दो। हाँ हाँ सिलेबस शेयर कर देता हूँ, जो सिलेबस आना है तुम्हारा, हाँ है ना? हाँ ठीक है। हाँ, थोड़ा पॉलिसी भी बता देना भी कॉमन आएगा सभी के लिए पेपर या सेक्शन वाइज आएगा? मैं सब कुछ दे रखा है, वो देख लेना। अच्छा ठीक है, ओके। स्ट्रीम वाइज है वैसे, फिर भी देख लेना। स्ट्रीम वाइज है? हाँ स्ट्रीम। ठीक है, आप मुझे लिखो 9 नंबर, मैं बता रहा हूँ, डाल देता हूँ ग्रुप में ना। हाँ ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। हाँ डाल दे रहा हूँ अभी। एक्चुअली उस हिसाब से टाइम हमारे पास कम है, जो शेड्यूल बनाया है कॉर्पोरेट ऑफिस, दिन कोई शेड्यूल है, तो हम जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। बेसिकली आपको एक तरीके से स्टार्टअप मिल जाएगा थोड़ा पढ़ने के लिए ना। हाँ नहीं, ये तो ठीक है, ये बात तो ओके, इसमें इशू नहीं है। मुझे तो ये जानना है कि दो टाइप के सिलेबस जो है सर्कुलेट हुए हैं, जो एक तो ओल्ड सिलेबस है जिसमें जो है ना सेक्शन वाइज डिवाइडेड है भाई, आपने पेपर में जो आना है भाई सीएम सेक्शन सेलेक्ट किया है, किसी ने सीएफ पे किया है, और एक उसके बाद कॉमन सिलेबस आया है कोई बात नया नहीं। नया, जिसमें 4GB इंक्लूडेड है और ये सब ना। हाँ हाँ, जो वो है वही ठीक है, वही ठीक है। मैं आपको चिट्ठी नंबर बता देता हूँ, 1 मिनट रुकना जरा। एक 3/7/2023 को एक लेटर निकला है। 30/8/2023? 3/7/2023 को हमारे पास एक चिट्ठी आई है, और जो आप वो आपको मिला है 10 दिसंबर 2014। उसमें है आपका सारे एनेक्सर्स ना। ओके, तो वो शेयर कर दीजिए सर प्लीज है। आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैंने आपको व्हाट्सएप दिया है। 94180 वाला नंबर है ना? आपका नंबर 9434000401 ना? 180 वाला 94180। एक सेकंड, नंबर, हाँ 941180445500 ना? बिल्कुल बिल्कुल यही। चलिए ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच।
ODO.
हेलो हेलो అమెరికా దేశంలో హలో హలో హలో
Good afternoon to all of you. Am I audible? Hello. हेलो। करने की आवाज आ रही है आपकी? आप साफ हैं? आ रही है? बिल्कुल ठीक है। आप क्लास शुरू कर सकते हैं। 86 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी। 2:30 बोला था, तो चाहे 5 मिनट और आप चलो इंट्रोडक्शन। ठीक है, रुक जाते हैं 4-5 मिनट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट राइट। हेलो 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 सर, व्हाट अबाउट CM classes, sir? CM classes are over. Over, but COND guidelines, CM classes will start on first February. सिलेबस ऑफ CM है ना, कल हमने खत्म कर दी है ना। Corporate letter, CM classes will start from No, no, 1st classes of February. are over now. IT, sir, IT? IT will be done tomorrow actually. Tomorrow. Okay, sir. Thank you. Second general, sir. Pardon? 2nd February. Yes, sir. General paper. The first paper is general and second paper is, I think, is stream wise, na? Okay. Right, sir. Thank you. एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा सर, ये पेपर कॉमन ही आएगा क्या, या सेक्शन CFA CM जो जैसा फिल किया है फॉर्म उस तरह से आएगा? व्हाट्सएप करिए, मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था। मैं आपको जो सिलेबस है वो आपको सेंड कर देता हूँ। नहीं, सिलेबस तो जैसे सेंड हो गया है। हाँ हाँ, मुझे तो तो उसमें ये जानना है कि भी इसमें कंप्लीट स्ट्रीम सिलेबस। हेलो। उसमें तो दे रखा है ना स्ट्रीम वाइज। सिलेबस पढ़िए तो पूरा आप सिलेबस पढ़िए पूरा। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। जी सर, ये CFA की क्लास कब होगी सर? CFA की क्लास अब कल ही होगी। कल पूरा कंटिन्यू CFA होगी कि IT होगी? नहीं, IT भी है, CFA भी है। हमारे पास टाइम कम है ना एक्चुअली। 4 दिन के अंदर कॉर्पोरेट ऑफिस ने हमको पूरा सिलेबस कवर करने को बोला है, तो उसके हिसाब से जो हम कर पाए सिलेबस वो हमने कवर कर दिया मैक्सिमम, जितना कर सकते हैं टाइम पीरियड में। CFA कल होगा सर? कल CFA होगा जी, थैंक यू। चलिए। चौहान जी, मुझे लगता है काफी सारे पार्टिसिपेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो शायद स्टार्ट करना ठीक रहेगा। हाँ शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू।
Myself, Tarun Karnik, I am working as AGM EB in ELTTC. और आज का हमारा सेशन है एंटरप्राइज सर्विसेज। और दो टॉपिक हम इस सेशन में कवर करेंगे, दो सेशन है हमारे पास। पहला सेशन हम कवर करेंगे एंटरप्राइज सर्विसेज और सेकंड में हम कवर करेंगे सर्विस लेवल एग्रीमेंट, SLA। ठीक है सर। तो मेरी आवाज सभी को पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल, क्लियर? हेलो। यस सर। ऑडिबल सर, ऑडिबल। हाँ, कोई एक या दो लोग जो हैं थोड़ा सा एक बार रेस्पॉन्ड कर दिया करें तो पता लग जाता है, नहीं तो क्या है ना, पढ़ाते रहेंगे और फिर अगर आवाज वगैरह नहीं आ जाएगी तो कुछ पर्पस सारा फोरफिट हो जाता है इस सेशन का। तो हम शुरू करते हैं सर सेशन एंटरप्राइज सर्विसेज। ठीक है सर। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एंटरप्राइज सर्विसेज की जरूरत क्यों है और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है। आप लोग सभी जानते होंगे कि हमारे यहाँ पे जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां पे हमारा एक वर्टिकल क्रिएटेड है एंड अ डायरेक्टर लेवल ऑफिसर, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं वो उसको हेड करते हैं एंटरप्राइज को। और ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे BSNL में ही ये ट्रेंड शुरू मतलब स्टार्ट हुआ। ये ट्रेंड जो है सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स और सभी सर्विस सेक्टर्स में फॉलो करा जा रहा है। सर्विस सेक्टर आप समझते हैं ना, सर्विसेज हमारी सभी तरीके की सर्विसेज सर्विस सेक्टर में आती हैं, लाइक इंश्योरेंस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, इवन गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्विसेज हो गया और ऑटोमोबाइल हो गया, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। और टेलीकॉम भी उसी का पार्ट है, टेलीकॉम सर्विसेज। तो हम तो एक छोटा सा पार्ट है इस पूरे सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर एक बहुत वाइड टर्म है, काफी बड़ी। टेलीकॉम उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो ये जो पूरा सर्विस सेक्टर जो है उसमें ही एंटरप्राइज सर्विसेज लाई जा रही हैं। ऐसा क्यों है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सर? मैं मतलब एक क्वेश्चन पहले इस सेशन को स्टार्ट ही इस क्वेश्चन से करना चाहूंगा। कैन एनीबडी आंसर? Somebody is saying that please speak in English. So, okay, I will try. I will make my lecture in both the languages. Okay. So my main concern is I would like to start my session with asking a question that why the enterprise services? Why? Why? What is the need for this enterprise? Because we already having a well established, our sales and marketing cells are there. These sections are there in every circle, even at corporate level. Then what is the need? ऐसा क्या हुआ? What are those changes and what happens this overnight that we require this enterprise? Any answer? You can answer in chat also. I am seeing your chats also. Because before going for this enterprise services, we should understand what is the important, what is the requirement of it. Otherwise, there is no use of learning enterprise services, what are the types of services, and what is this all about. Somebody has answered to provide customized solution to corporates. Good, very close, sir. To focus on high revenue customer. Okay. Okay. Any other answer, sir? To focus prime customer. Okay. That's a good one. Good. You are quite close. Some of you are very quite close to my whatever I have asked and whatever I am expecting from you. Some of you are very close to that. That it is there to primarily focus on prime customers and big revenue customers. Okay. So why we are focusing on this prime customer or highly paying customer? Why enterprise is required for them? Are they don't be Is it not necessary that these customers will also be dealt by our sales and marketing team? Why is it so? Why we require a special cell to treat such person? Is there some VIP treatment we want to give them? Or there is some demarcation or any other purpose?
because if you see the enterprise services of BSNL, you find most of the services which we are using for our own customer, for our own normal customers, they are there. These existing services are there in our enterprise services. Customer retention to earn profits, some of you are writing. That's applicable for our normal customers also. So why we require is BSNL is doing some partiality to these highly paying customers, or it is impartial? But why it is so? Why it is required? I think one of you have answered it at very first instance, and you might be also seeing that this chat. It is written by some subdivisional engineer to provide customized solution to corporates. Customized solution. What is this customized? You need to understand this thing. What is customized? I will quote one example here so that you can easily understand this thing. Suppose if you are selling some one, I will quote one story, some small story here. There was one small vendor is there who was selling some fast food snack items at roadside. Okay, previously he was working at some petty jobs like plumber and mason and all these things, and he was earning his livelihood from these petty jobs. But he has a passion for cooking also. So at one point of time, he realizes that whatever he is earning from these odd jobs, it's not sufficient. So he consulted his friends and asked them to what to do to earn something more, to have some handsome livelihood. So they are afraid. सर मैं चाहूंगा थोड़ा सा हिंदी में भी बोलिए, थोड़ा थोड़ा। Okay. बहुत लैंग्वेज यूज कर लीजिए, बहुत लैंग्वेज। Okay, agreed. So he was consulting his friends, and जो friends थे उन्होंने they suggested him, उन्होंने suggestion दिया कि भाई आपको एक passion है cooking का, so why not you try in that field also. तो उसको suggestion पसंद आया कि भाई ठीक है भाई, मेरे को पकाना अच्छा भी लगता है, खाना बनाना, तो why not venture out in this particular field. So he started, उसने क्या करा, उसने शाम को अपना उसी एरिया में एक कार्ट लगाना शुरू करा जिसमें उसने फास्ट फूड स्नैक्स बेचने शुरू करे। बिजनेस अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया से चल पड़ा। धीरे धीरे उसे लगा कि भाई यहाँ का जो मतलब मैं थोड़ा और कमा सकता हूँ, आई कैन अर्न मोर इफ आई वेंचर आउट सम मोर डीप बाय डीप थॉट प्रोसेस, कि मैं क्या और करूं कि मेरे को और आमदनी हो जाए इसमें। सो ही अगेन कंसल्टेड हिज फ्रेंड्स। भाई दोस्त और सभी जगह होते हैं ना भाई, अपनी अच्छी सलाह देने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड्स को कंसल्ट करते हैं। सो ही कंसल्टेड हिज क्लोज फ्रेंड्स अगेन। उन्होंने फिर सजेशन दिया कि भाई एक काम करो, आप यहाँ तो अच्छा कमा ही रहे हो, सो व्हाई नॉट यू try the opportunity or take the option of selling these fast foods and some other locations of the city. तो ये भी उसको सजेशन पसंद आया कि ठीक है भाई, मैं थोड़े टाइम तो यहाँ बेचता ही हूँ, लेकिन मेरे पास समय है तो मैं कहीं और भी उस सिटी में कहीं और भी जाके उसे बेच सकता हूँ। सो ही सर्वेड द सिटी एंड फाइंड आउट 2-3 लोकेशंस लाइक इन द मॉर्निंग। उसने देखा सुबह के टाइम कुछ स्कूल के बच्चे हैं जहाँ पे भाई लंच होता है, तो कुछ बच्चे टिफिन नहीं लाते, तो वो आके स्नैक्स खा सकते हैं जो वो बनाता था। उसने वो आइडेंटिफाई करा। दूसरा, उसने शाम को देखा कि आजकल जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पे शाम के टाइम जब छुट्टी होती है तो जितने कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं, दे केम आउट एंड हैव सम स्नैक्स देयर। तो उसने कहा बोला भाई शाम को भाई मैं इस जगह लगा सकता हूँ, एंड लेट इवनिंग आवर्स वो उसका अपना सेम जो एरिया था जहां वो शुरू से बेच रहा था वहां उसके पास था। सो ही स्टार्टेड डूइंग लाइक दिस। मॉर्निंग में एक जगह स्कूल के पास, इवनिंग में मतलब आफ्टरनून या इवनिंग में कोचिंग सेंटर, और एंड लेट इवनिंग इन हिज ओन एरिया। सो बाय दिस टाइम ही इज स्टार्टिंग अ गुड प्रॉफिट एंड गुड लाइवलीहुड एंड एक्स्ट्रा इनकम ऑल्सो। और जब तक उसकी अच्छी इनकम होनी शुरू होगी तो उसने जो अपना पुराना काम था स्लोली एंड स्लोली उसने वो छोड़ दिया। देन वन डे, क्योंकि अब उसका भाई नाम फैलने लगा बहुत जगह जगह पूरी सिटी में, देन वन डे वन वेरी रिच बिजनेसमैन केम टू हिज शॉप। उसने बोला भाई कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारे घर में शादी है
और स्नैक्स का आप ही हम आपको देना चाहते हैं जितना भी जो काम है। तो उसने बोला ठीक है सर, आई विल डू इट, नो इश्यूज। लेकिन उसने बोला कि भाई देखो, जो आप बनाते हो आपका टेस्ट तो बढ़िया है, बट आई एम अ रिच पर्सन, और मेरे घर का फंक्शन है तो उसमें सब एफ्लुएंट क्लास और जो सारे जो अमीर घराने के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब आएंगे, तो उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए स्नैक्स में। तो उसने बोला बताइए साहब क्या करना है। तो उसने बताया कि भाई देखो, जो आप बनाते हो, आप कुछ भी सपोज कर लीजिए, जैसे समोसा है कि भाई उसमें ड्राई फ्रूट्स डालो, जो आप दाल का चीला बनाते हो उसमें आप पनीर लगाओ, अभी तो आप पनीर नहीं लगाते। फिर उसके बाद कि भाई जो आप कुछ स्वीट्स बनाते हो उसमें केसर डाल के रखो, लाइक दैट, मतलब कुछ कॉस्टली आइटम्स बता दिए उसे। ही सेड कि सर मैं बनाता तो यही सब चीज हूँ, बट लेकिन आप इसमें इतनी महंगी चीज डलवा रहे हो, तो भाई ठीक है, काम करो, आप मेरे को एक कंफर्म करो कि भाई कितने आपका और कितने मतलब कस्टमर्स रहेंगे, उस टाइम कितने लोग रहेंगे आपकी उसमें गैदरिंग में। तो उसने बोला भाई आई एम अ रिच पर्सन, तो भाई ऐसा है भाई, कम से कम 2 से 2,500 लोग रहेंगे। तो उसने बोला ठीक है, ओके, अगर ऐसा है तो आप मेरे को कुछ एडवांस पेमेंट दे दीजिए, और मैं इन सब चीजों को आपके हिसाब से चेंज कर देता हूँ। So that person, he gave him some advance payment, and he changed his item, modified his items, whatever existing items, whatever he is preparing. समोसों में उसने कुछ वो डाल दिया, ड्राई फ्रूट और पनीर और जो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट कर दी। आफ्टर दैट ही गॉट द बैलेंस पेमेंट ऑफ। So that is a example basically to understand why we require the enterprise service. Because at first instance, what he was doing when he was selling his products in his own area only, जब वो अपने ही एरिया में सिर्फ बेच रहा था, he was doing actually sales, कि बस उसे बेचना है। he doesn't know about what other opportunities are waiting for him in other area। उसे पता ही नहीं था कि आगे बाहर भी कुछ इस पर्टिकुलर एरिया के बाहर भी उसके लिए कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम ही वाज डूइंग सेल्स, कि भाई मेरा प्रोडक्ट है, आई एम सिटिंग हियर, और मेरा प्रोडक्ट मुझे बेचना है टू अर्न सम रेवेन्यू। देन इन सेकंड केस व्हेन ही सर्वेड द मार्केट, जब उसने मार्केट सर्वे करा और देखा कि भाई और भी कई जगह ऐसी जगह है जहां पे वो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जहां पे वो पैसा कमा सकता है। एट दैट टाइम व्हाट ही हैज डन द सेकंड पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज मार्केटिंग, कि नीड बेस्ड सेल्स, कि भाई जहां रिक्वायरमेंट है वहां जाके सेल्स करो। अगर मेरे को सुबह अगर वहां ज्यादा बिकता है तो मैं वहां जाके सेल्स करूं, शाम को यहाँ ज्यादा बिकता है तो से इस एरिया में सेल्स करूं। देन इन थर्ड केस व्हाट हैपेंस, कि एक आदमी आके मेरे को बोलता है कि भाई मेरे को आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मुझे आपकी सर्विसेज में इंटरेस्ट है, और मुझे आपकी सर्विसेज बल्क में चाहिए, बड़े ऑर्डर में चाहिए, बट फॉर दैट ही वांट सम चेंज। वो चाहता है कि मैं उसको कुछ मॉडिफाई करूं, जो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको मैं मॉडिफाई करूं। क्योंकि उस केस में भी जो उसका पर्टिकुलर जो भाई, वो तो नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स यूज नहीं करता, लेकिन उसको करवाया गया कि भाई इसको चेंज करो, मॉडिफाई करो और इसमें डालो इसमें। तो जब मेरे को ऐसी कोई प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें मेरे को बल्क बिजनेस मिल रहा है, बट आई हैव टू कस्टमाइज माय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट as per the customer needs, in that particular area I require the enterprise unit, because enterprise people, they only have the power to customize the existing product। अगर कोई मेरे पास कोई कंपनी आती है कि सर मेरे को आपके 500 पोस्टपेड कनेक्शन चाहिए, बट मेरे को एक स्पेशल प्लान चाहिए अलग, मेरे को एग्जिस्टिंग प्लान्स में से कुछ नहीं चाहिए, या इस प्लान का ये चाहिए, इस प्लान का बी पार्ट चाहिए, तो एंटरप्राइज जो ईबी सेल जो है, ही कैन गो फॉर इट, ही कैन आस्क हिज जो सीजीएम है या कॉर्पोरेट है, उनको बोल सकते हैं कि सर हमारे पास इतना बल्क कस्टमर आ रहा है, वी आर हैविंग सच एंड सच रेवेन्यू एनुअली, और उसके चलते, लेकिन ये हमें तभी मिलेगा जब हमें हमारे ये जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं इन्हें थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो क्योंकि मेरे को एक बल्क में रेवेन्यू आ रहा है, एक बल्क में बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, सो आई कैन कस्टमाइज इट। और आने वाला समय सर इसी का ही होता जा रहा है। आप आगे देखिएगा कि जो कमिंग टाइम है,
not only in telecom, even in insurance, even in automobile, enterprise, whosoever is strong in enterprise services, जो भी उसमें strong है वही आगे लंबी रेस का घोड़ा बनने वाला है, अदरवाइज नहीं तो सब पीछे रह जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड हो गई है। एंड नॉट ओनली बीएसएनएल सर, जिन जो हमारे जो कंपिटिटर्स हैं मार्केट में, लाइक एयरटेल, जियो, all the other telecom operators, they are also emphasizing on this field. And this is how the importance, why we are having a director level officer who is heading this particular segment, because ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ it is, ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುವಂತ ಅದು ಯಾವ ತರದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದ ಮೊದಲೇ ಹೆಂಗಂತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ pardon sir, ಅಲ್ಲ ಇವ್ರದೇ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದೇ Please ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ mute yourselves. म्यूट कर लीजिए अपने आप को। Mr. जो लोग भी म्यूटेड है म्यूट करें। तो सर जो मैं आपको बता रहा था, that is what is the importance, you have to understand this need and importance of enterprise. Okay, but whatever you are seeing, ऐसा नहीं है, देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसने ऐसा नहीं करा कि उसने अपने स्नैक्स छोड़ के वो मेन कोर्स बनाने लग गया, कोई ही स्टार्ट। सर मिस्टर हरीशा इज देयर, कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक सर। हरीशा, हरीशा आप वहां से म्यूट कर दो। हाँ हो गया सर, हो गया। ठीक। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंस सर। और इसमें सबसे बड़ा कैच पॉइंट क्या है सर, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, दैट सेलर ही हैजंट चेंज हिज फील्ड। ऐसा नहीं कि कोई बल्क कस्टमर आया और उसने बोला कि भाई ऐसा है, भैया आप तो स्नैक्स बनाते हो, बट मैं आपको जो है, मैं आपको इतने 3,000 लोगों का ऑर्डर देता हूं, यू स्टार्ट मेकिंग चपाती एंड वेजिटेबल, बट ही हैजंट चेंज हिज एग्जिस्ट, मतलब उसने अपना जो कोर जो प्रोडक्ट है उसको ऐसा नहीं कि उसको ऑल टुगेदर ऑल्टर कर दिया हो। मतलब बेसिकली वो उसने दिया उनको स्नैक्स में समोसा ही, बट विद ड्राई फ्रूट्स। So that is the catch point, that whatever we are having in our enterprise services, these are our own services which we are using for our normal customers. क्योंकि कई लोग कभी ये वो करते हैं कि सर एंटरप्राइज सर्विसेज में सारे नाम तो वही हैं जो हम अपने बीएसएनएल में यूज करते हैं, लाइक MLLN और ये MPLS एंड ऑल दिस थिंग। तो इसमें नया क्या है? तो नए के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि एंटरप्राइज का कंसेप्ट क्या है। You have to understand these things, because in training center, as we are posted in EV cell in training center, हमारा काम भी यही रहता है। हमारा काम क्या रहता है कि मान लीजिए कोई कस्टमर आया और उसने हमसे ट्रेनिंग की कोई रिक्वायरमेंट रखी, so what we search, we search for our existing training products, but we are having as our with us with our training products, like हमारे पास कोई 2 हफ्ते का कोई कोर्स है, तीन दिन का कोई हमारे पास MPLS का कोई ट्रेनिंग कोर्स है, then we have some 2 days advanced cyber security course, because people are here who are getting their induction training also done at ALTTC. कुछ organizations ऐसी हैं जिनके induction trainees ही यहीं पर ही ज्वाइन करते हैं। So what they want, वो बोलते हैं कि सर हमारे तो जो लोग हैं वो 6 हफ्ते यहाँ ट्रेनिंग करेंगे, and you have to train them in each and every field. आपको उन्हें टेक्निकल भी सिखाना है, आपको उन्हें HR इश्यूज भी सिखाने हैं, आपको उन्हें डिसिप्लिनरी एक्शन भी सिखाना है, विजिलेंस भी सिखाना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको उनका सबका छोटा छोटा ब्रीफ देना है। अगर मेरे पास एंटरप्राइज सॉल्यूशन ना हो तो मैं उनको ये बोलूंगा, साहब हमारी 6 हफ्ते की तो इसकी ट्रेनिंग है, 3 दिन की इसकी ट्रेनिंग है, 2 हफ्ते की इसकी है, 4 हफ्ते की इसकी है, पूरा मिला के लो जी 56 हफ्ते का आपका ये प्रोग्राम हो गया। बट दे वोंट स्पेयर देयर इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर 50 वीक्स और 56 वीक्स। तो वो हमसे क्या बोलते हैं, आपको 6 हफ्ते में करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे कस्टमाइज करते हैं उन ट्रेनिंग्स को, कि भाई 3 दिन का हमने यहाँ से उठाया, 2 दिन का कहीं से लिया, 5 दिन का, और से कंप्लीट पैकेज बना के दें। So that's what we want in our scenario also, क्योंकि we are also customers, but whosoever are joined here in this session, आप लोग, मैं और जितने हमारे यहाँ पे हमारे ALT के स्टाफ जुड़े, हम सब भी कस्टमर्स हैं, हम सब भी यही चाहते हैं। हम भी आज की तारीख में अगर कोई चीज खरीदने जाते हैं
तो हम भी ये चाहते हैं कि हमें एक सिंगल विंडो सिस्टम, एक पैकेज मिल जाए। हम जैसे एक छोटा सा एग्जांपल की, बट वेन एवर वी आर गोइंग फॉर कंडक्टिंग सम फैमिली फंक्शन, आज की तारीख में एज ऑन डेट वी वोंट प्रेफर टू गो फॉर सेपरेट पर्सन फॉर लाइटिंग, सेपरेट पर्सन फॉर टेंट, सेपरेट पर्सन फॉर दिस फूड एंड बोर्डिंग, सेपरेट पर्सन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वी वांट सिंगल सिस्टम। तो जो बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो आपको सिंगल विंडो एक पैकेज सिस्टम देती हैं कि सर ठीक है, आपको हम देंगे आपको, आप अपना बजट बताइए। उसके हिसाब से वो कस्टमाइज कर लेते हैं कि भाई इनका यहाँ खाने का अच्छा है, इनका ये अच्छा है, इधर से ये ले लिया, इधर से ये ले लिया, और बना के एक पैकेज सॉल्यूशन दे दिया। सो व्हाट वी आर डूइंग इन BSNL, whenever a customer requires some telecom solutions, okay, now we have come to the this word solution, बिकॉज जो अब जो सिनेरियो है वो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स का नहीं है। नाउ द थिंग केम्स, जो आज की तारीख में सिनेरियो है वो है सॉल्यूशन का। वी हैव टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, नॉट अ प्रोडक्ट, नॉट अ सर्विस टू कस्टमर, बट यू हैव टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। तो अगर कोई कंपनी, बड़ी कंपनी हमारे पास कोई टेलीकॉम सॉल्यूशन के लिए आती है, सो वी assign that particular big revenue opportunity to our EB cell कि सर आप अब देखिए कि इसको कैसे करना है। सो वट एवर वी ही हैज आस्क्ड कि भाई मुझे इतनी ब्रांचेज हैं उनकी, मेरे को इतनी कनेक्टिविटी चाहिए, या उतने का मेरे को साइबर सिक्योरिटी चाहिए। सो वी choose some of the our existing products like some MLLN, some MPLS, some security, some firewall, जो भी हमारे पास existing services है, some FTTH, then some Wi-Fi hotspots. We combine all these services, existing services, and give a complete packaged solution to that particular organization. So that is how we have developed our enterprise cell, enterprise services. And I request all of you to please go through. We have some special tab on our corporate website here where some drop down menu is there, and all the services are there, enterprise services which we are offering. But you are amazed and you find all our normal telecom services are mentioned there, because there is no specific I can say कि नहीं ये product ये package बन गया, it is now a enterprise services, because that is not an enterprise services for all the customers. We cannot generalize in EB cell particular service that it is a general service for all the EB customers, because different customers have different requirements. Okay, so that's how we proceed in this session. Okay. So now we come to this part. What is the why customer require enterprise service? Why he requires some packaged solution? Why? Especially in telecom. Why? Because customer requires complete reliable services from one interface organization. That is very quite evident, क्योंकि जो हमारे जो लोग हैं, जैसे हम भी जो कस्टमर है, हम भी एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन चाहते हैं। आज की डेट में आप भी अगर बैंक जाते हैं, अगर हमें एक विंडो से दूसरी विंडो पर भेजा तो भी ठीक है, लेकिन अगर दूसरी से तीसरे पे अगर कोई भेजता है तो हमारे लिए हम भी एक एनॉय हो जाते हैं। हम भी मतलब कहने लगते हैं अरे किस तरीके का बैंक है बताओ, एक खिड़की से दूसरी खिड़की, दूसरी से तीसरी, कमाल है। आज की तारीख में तो एक खिड़की पे जाओ वहीं सारा काम हो जाना चाहिए। वाई? Because we also want a single window system, one interface organization. Then supply of not only bandwidth, it is actually very specific, because we are this particular session is about enterprise services of lease circuits. तो उसमें ये बताया हुआ है कि भाई हम बैंडविड्थ ना मिले, हमें मॉडेम भी मिल जाए, राउटर थी, कंप्लीट टेलीकॉम सॉल्यूशन, सिक्योर्ड नेटवर्क। एंड दो जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है सर, इसको आप अपने माइंड में रखिएगा। सबसे जो दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, डिजायर है एंटरप्राइज कस्टमर का, दैट इज द ओपेक्स मॉडल इंस्टेड ऑफ कैपेक्स। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज कस्टमर आज की तारीख में दे डोंट वांट टू spend a single penny in the area for this which is not related to their core business.
लाइक अगर मेरे पास बैंक है, अगर कोई बैंक का कोई कस्टमर है, तो बैंक कनेक्टिविटी, इन सब चीजों पे कोई भी पैसा खर्च करना नहीं चाहेगा अगर वो उसके कोर बिजनेस से रिलेटेड। हाँ, अगर आपके कोर बिजनेस से रिलेटेड वो कोई ऐप डेवलप करवा रहा है, या मान लीजिए कोई और कोई, मतलब जो भी अपनी बैंकिंग से रिलेटेड कोई सर्विस दे रहा है, वहां वो पैसा खर्च कर देगा। बट अगर उसको यूं बोलेंगे कि नहीं साहब, आप अपनी कनेक्टिविटी के लिए अपनी केबल डलवा लो, अपना फायरवॉल ले लो, अपना ले लो, तो वो बोलेगा भाई मैं अगर इसमें लगूंगा तो बैंकिंग कब करूंगा। सो डेट इज द मेन क्राइटेरिया, द पैराडिम शिफ्ट। पहले क्या होता था, पहले शुरू में पुराने टाइम में लीगेसी सिस्टम्स में क्या होता था, जो कंपनीज होती थी वो कैपेक्स अपना पैसा ही खर्च करती थी। ठीक है, कि भाई आपको जो भी आपको रिक्वायरमेंट है अपने सॉल्यूशन के लिए, आप उसमें पैसा लगाइए, अपना इक्विपमेंट खरीदिए, अपनी फायरवॉल खरीदिए और उसको मेंटेन करिए। तभी आपने देखा होगा, पहले कभी आपने ध्यान दिया हो कि जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक एसबीआई एंड सम पावर सॉल्यूशन, पावर कंपनीज आर देयर, they time and again and very on frequent basis they recruit some technical officers also in higher grades, but right now it is somehow reduced. Why? Because they are now going for this enterprise model. Whatever which is not related to my core business, I will let it out to, and I will assign this particular task to some other person who is more, I can say, more well versed and more expert in that particular field. तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो भी हैं, वो सारे टेलीकॉम सॉल्यूशंस के लिए आइदर दे गो फॉर बीएसएनएल और सम अदर ऑपरेटर। ओके, if some networking is requirement is there, they don't go for this spending their own capex on this particular this thing, and they outsource or allot this particular, I can say, the responsibility to whosoever is more expert in that field. You can take the example of some this fast food joints also. आजकल तो बहुत सारे फास्ट फूड जॉइंट्स खुलते जा रहे हैं, एमबीए चाय वाला एंड ऑल दिस थिंग्स, लाइक हल्दीराम, बीकानेर वाला, एंड दोज हु हैव joined from this south region, Anand Bhavan, Adyar Anand Bhavan branch is there. Their core business is this refreshments and food and all these things, lunch, dinner, snacks, and all these things. But they also require network connectivity. They also require their network security, because although they are dealing with finances also, but if they go for spending all these things कि भाई ठीक है, मेरे को अगर राउटर चाहिए, राउटर खरीद रहे हैं सिस्को का 14,000 सीरीज और 12,000 सीरीज, भाई खरीदो, फिर उसको कॉन्फ़िगर करो। So they are somehow deviating their themselves from their core business. तो वो अपने कोर बिजनेस पे तो पैसा खर्च करेंगे, बट डोंट गो फॉर दिस दिस ओपेक केपेक्स। Then the next point is, which is very important, which is guaranteed SLA. That is our second topic of our today's session. कि इसमें जितनी भी सर्विसेज है, बिकॉज मैं आपको सॉल्यूशन तो दे रहा हूं, बट हाउ मच इट इज रिलायबल, that is accounted for from both the sides by signing an guaranteed SLA. SLA is service level agreement. Their terms and conditions are there, and कि भाई जो भी आप एक पैकेज सॉल्यूशन दे रहे हैं, वट एवर इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द टेक सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एंड वट एवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन सीकर, जो भी आपसे मांग रहा है वो क्या चीज प्रोवाइड करेगा। भाई ठीक है, आपने राउटर खरीद लिया, बट उसका जो प्रेमिसेस में लगाने की जो जगह है वो तो वही देगा जो कंपनी आपसे मांग रही है। सो ऑल दीज थिंग्स वो वहां पे रहेंगे, वहां पे कि भाई कौन सा आदमी क्या काम करेगा, एंड व्हाट आर गारंटीड सर्विसेज, टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है ना, तो वो सब उससे मांगा जाएगा कि वट एवर द पेनल्टीज और वट एवर द जो भी उसके पेनल्टीज हैं, मतलब अगर आप कोई सर्विस को मीट नहीं करते एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपका कितना कटिंग होगी या जो भी होगा वो सब उसमें रहता है। तो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, guaranteed SLA and OPEX model instead of CAPEX. Then these are some of the services which are BSNL provides following services products to the enterprise customers. तो आप देखेंगे इसमें सारी जो मोस्टली सर्विसेज हैं वो सारी हमारी वही सर्विसेज हैं जो हम
ऑलमोस्ट अपने नॉर्मल कस्टमर्स के लिए बात करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नाउ ऑब्सोलीट ऑल्सो। सो जो मेन है वो एमपीएलएस, वीसेट, आईएसडीएन, पीआरआई, एमएलएलएन, डोमेस्टिक लीज लाइन, आईएलएल, फ्री ईपीबीएक्स, वायरलाइन मैनेजमेंट, एमएनएस, these are some of the services which comes under EV services। तो एक एक करके थोड़ा सा एक बार इनको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। एमपीएलएस, एमपीएलएस जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये हमारा अपना इन हाउस सॉल्यूशन है। दिस वी हैव डेवलप्ड फॉर आवर ओन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सिस्टम इन बीएसएनएल। When in 2000, way back in 2003 or 2004, when BSNL has launched its broadband services, there our organization has realized that we require this particular service. We require some our own backbone, because 2003 और 2004 में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने एक पैराडिम शिफ्ट देखा कि नाउ कस्टमर्स आर नॉट एट ऑल, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द वॉइस, नाउ दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर डेटा, डेटा की बैंडविड्थ, and I can say data bandwidth, and the most important is data security. Then BSNL realizes that क्योंकि ये चीज उनको दिख रहा था, we are anticipating this thing कि भाई ये चीज ऐसा नहीं है कि यहाँ रुकेगी, it is going to expand। ये जो पैराडिम शिफ्ट है ये कंप्लीटली शिफ्ट होने वाला है फ्रॉम वॉइस टू डेटा। So we realized that now this is the time that we should develop and expand our own broad bandwidth network, जो हमारे बैकबोन में काम करता रहे, that will be a secured also, हमारी अपनी सिक्योरिटी हो, हमारी अपना बैंडविड्थ नेटवर्क हो, और उसमें हम कुछ ऐसा चलाएं जिससे हमारे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका डेटा इट इज सिक्योर्ड। एट दैट टाइम वी गो फॉर दिस एमपीएलएस बैकबोन। हमने एक बैकबोन तैयार करी, वी लेड ओएफसी केबल्स जो भी हमारी ऑलरेडी थी, कुछ हमने ले करी, एंड वी हैव डेवलप्ड सम एक कोर नेटवर्क पूरा, जिसमें हमने अपने राउटर्स लगाए। आप जानते होंगे लैब फोर राउटर्स हैं, देन टायर 1, टायर 2, देन एज राउटर्स, पी राउटर्स, ये सब मिलके एक पूरा एक उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया एमपीएलएस, ओ सॉरी बीएसएनएल ने एमपीएलएस नेटवर्क। तो this is how we have developed, but now some of them, these particular services, they are used for providing the EV solutions also। अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है, like some giant, some fast food giant is there, like take the example of Haldiram, he comes and say, sir, I am starting my this particular services in Ladakh also, because now it has opened to this government has opened the gates for the investment also, so I want to open my some branches in Ladakh and I want connectivity from there। So we readily agreed because we have some particular solution there for some broadband bandwidth is already there from BSNL, and whatever is there, we just want to add them to our network। So this is how we are providing the solution। फिर उसमें एक हमने एक टर्म जोड़ दिया VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कि क्या कि भाई अभी तो ये था कि भाई जो हमारे पास पीछे बैकबोन है वो सब आपस में मिलके यूज कर रहे हैं, एवरीबडी हु इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर बैकबोन विच इज, उसको हम बोलते हैं अपना निब, नेशनल इंटरनेट बैकबोन। तो उसमें जो अपना डेटा लेके जा रहा था वो अपना ठीक है, अपना सब शेयर्ड रिसोर्सेज यूज कर रहे थे। बीएसएनएल का डेटा भी उसमें ही जा रहा है, उसमें जो हमारा कोई एंटरप्राइज का कस्टमर है उसने जो डेटा लिया वो भी उसी में ही जा रहा है। तो somebody has some concerns कि नहीं सर हमें तो कुछ अलग बना के दीजिए। देन वी डेवलप्ड, हमने क्या डेवलप करा, मतलब इट्स अ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड ग्लोबली, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नाउ विद दिस टेक्नोलॉजी व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, हम एक अपने ही नेटवर्क में एक नेटवर्क बना के दे रहे हैं विच इज सोनली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर। हमने हल्दीराम का लद्दाख के कुछ साइट्स को हमने जोड़ा और उन्हें एक VPN में डाल दिया, और हमने लद्दाख हल्दीराम को ये बोला कि भाई साहब दिस पर्टिकुलर नेटवर्क दिस इज सोनली बिलोंग्स टू यू ओनली, हल्दीराम का ही एक नेटवर्क है बस उसमें,
जो भी आपका डेटा है वो उस नेटवर्क में जाएगा एंड नोबडी हैज द एक्सेस टू दैट नेटवर्क. दैट इज हाउ वी कैन कन्विंस द कस्टमर फॉर वीपीएन. तो वीपीएन क्या है सर, हमारा अपना नेटवर्क है, क्योंकि हमें अपने नेटवर्क में वीपीएन रिक्वायर्ड था बिकॉज वी वांट टू सेग्रीगेट सम ऑफ द आईपी पूल्स अमंग O&M एंड अदर, जो हमारे अलग जो और भी कई जो फील्ड्स हैं उनमें हमें सेग्रीगेट करना था. तो डेवलप फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, बट नाउ वी आर ऑफरिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दिस पर्टिकुलर सर्विस फॉर ईवी सॉल्यूशन. ओके सर. Then coming to next service, this is the benefits of MPLS based VPNs. These are secured and easy to configure and manage it, better traffic engineering, easy introduction of new services. और मतलब ये सारे उसके पॉइंट्स हैं वो हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं. सो ये है हमारी ये सर्विस, बट नाउ वी आर काउंटिंग इट एज ए एंटरप्राइज सर्विस बिकॉज वी आर टेकिंग दिस एज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन, enterprise solution. Okay, then come the next, sir, VSAT. VSAT is very small aperture terminal and it is a, basically it is a, I can say it is a, जिसको बोलते हैं ना कि हमारे पास एक alternative है where we can't reach our connectivity neither through this OFC, neither through our microwave link, any other. तो हम किसी से जहां नहीं पहुंच सकते वहां हम VSAT लगाते हैं बिकॉज VSAT वर्क्स ऑन सैटेलाइट. तो जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जो हमारे ऐसे टेरेन्स हैं विच आर इनहेबिटेबल एंड विच आर नॉट रीचेबल, देयर वी कैन प्रोवाइड द कनेक्टिविटी थ्रू VSATs. Okay, so we have imbibed this particular technology in BSNL for our own convenience because you know that we are in obligatory services also. BSNL USOF services are there, and most of you are very well know that these USOF sites, ये जहां भी होती है USOF साइट जो होती हैं ये हमेशा बहुत दूर के इलाके में होती हैं जहाँ पे वैसे ही आप कनेक्टिविटी तो छोड़िए, आदमी का पहुंचना ही बड़ा मुश्किल होता है. सो दीज आर सो रिमोटली लोकेटेड एंड कई बार क्या होता है कुछ जगह ऐसा भी होता है कि भाई जहाँ पे हमारे पास रिमोटली लोकेटेड तो नहीं है लेकिन वहां हमारे पास अभी फिलहाल में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बट लेटर ऑन स्टेजेस में हम कनेक्टिविटी लाएंगे आइदर थ्रू आवर माइक्रोवेव लिंक्स और OFC. But customer wants solution connectivity at that particular moment, so we use VSATs. So VSAT because this work on satellite and it can be accessed from any part of the earth. So this is quite reliable. No doubt it is not as fast as other connectivity service solutions like OFC or this thing, microwave link. लेकिन जहाँ कुछ नहीं है वहां थोड़ा होना कुछ नहीं होने से तो बेहतर है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग VSAT सर्विसेज देते हैं. ये कैसे एंटरप्राइज सॉल्यूशन में काम करता है, मान लीजिए आपके जो हमारे बैंकिंग सेक्टर है उन्होंने लद्दाख में, टेक द एग्जांपल ऑफ दिस SBI, उन्होंने कुछ लद्दाख में कुछ अपना खोले कुछ कि हमारे ATMs रहेंगे, हम 50 न्यू ATMs वी आर नाउ स्टार्टिंग देयर. तो हमने हमारा कुछ वहां पे नेटवर्क OFC पर है जिससे हमने उनको कनेक्टिविटी दे दी थ्रू आवर MPLS बैकबोन. बट एज ए लार्ज रेवेन्यू एंड बल्क अपॉर्चुनिटी कस्टमर हम उसको क्या है एक कॉम्प्लीमेंट्री एक सर्विस देते हैं फॉर बैक हॉल कनेक्टिविटी. तो हम उसको क्या करते हैं उसके हर ATM पे एक VSAT भी लगा देते हैं, एक डिश लगा देते हैं कि whenever this particular the main connectivity goes down, the connectivity shifts to VSAT. Okay, because running an ATM, I think, as far as I know, a large bandwidth is not required. A very small bandwidth is required. So it can run on VSAT also. तो जब भी वो OFC या कुछ ऐसा होगा या हैवी स्नोफॉल की वजह से या कुछ ऐसा हो गया कि भी रास्ता बंद हो गया, इट कांट बी मेंटेन्ड, सम फॉल्ट इज देयर इन OFC, the connectivity automatically shifts to VSAT. So that's how we are providing a complete solution to our customers. So VSAT is part of that, and you can see very small. The bandwidth of this VSAT is very small, up to 2 Mbps from 64 kbps to 2 Mbps on this here. Then our next service is ISDN PRI. This is basically a, ISDN PRI. So those who have joined the department way back in 2000.
So they might be knowing this ISD and PRI. Okay. So whatever we are doing this ISD and PRI, you know, the 30 basic channels are there and one data channel is there. So some people still, some organized still requires EPBX service. Pardon, ma'am? Is there any doubt? Okay, I think वो वैसे ही on हो गया. So EPBX solution, some companies still want this particular solutions, and sometimes these particular services we give them complimentary also. Sure. Suppose if particular organization, if some particular organization, if some particular organization, they are going for some bulk postpaid sims, like अगर वो हमसे 3-4 हजार अगर सिम लेते हैं, मान लीजिए कि बस सर हमें पोस्टपेड कनेक्शन दीजिए विद CUG कनेक्टिविटी, सभी को आप कनेक्ट कर दीजिए. सो एज ए कॉम्प्लीमेंट्री कि भाई ठीक है भाई, आप इस पे तो बात करेंगे ही, बट अगर मान लीजिए हमारा कभी नेटवर्क डाउन हो जाता है तो यू कैन यूज आवर दिस पर्टिकुलर EPBX. तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री उन्हें एक EPBX भी दे दिया विद सब शॉर्ट कोड्स कि भाई ठीक है, आपका एटलीस्ट जो कॉर्पोरेट जो हेडक्वार्टर है उस पे कुछ फोन जो लैंडलाइंस हैं वो चलते रहेंगे विद दिस पर्टिकुलर ISD एंड PRI. तो और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सर इसे मेन सॉल्यूशंस के तौर पर ही लेती हैं कि सर हमारे पास हमें इतने सिम सही हैं, इतने हमें लैंडलाइन सही हैं, तो आइदर इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग दिस पर्टिकुलर कि भाई सबको इंडिविजुअल लैंडलाइन, तो हम एक सॉल्यूशन दे देते हैं, भाई आप यू कैन गो फॉर EPBX सॉल्यूशन. So that is how we are customizing the existing product to work out a solution, basically workable solution. Then comes the MLL and managed lease line service. आप सब you all very well know that MLLN हमारे पास लीज सर्किट्स पहले हम प्रोवाइड करते थे पॉइंट टू पॉइंट, आज वो हम जो है MLLN के थ्रू प्रोवाइड करते हैं. The only thing is that we can manage the our lease line through this particular solution, manage lease line. उनके हम बैंडविड्थ को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग हो सकती है. इंस्टेड ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स टू यू रिगार्डिंग दिस कि सर ये लाइन डाउन है, you yourself monitor the health of all the lease circuits in the morning itself at your own. यहाँ भी कौन कौन से लीज सर्किट डाउन है वो सारा आके सुबह ही एक बार देख लिया, तो MLLN से हमें ये सब चीज मिल जाती है. तो अब हम लीज सर्किट अगर किसी को देते हैं तो वी कैन ऐड दिस पर्टिकुलर थिंग कि सर आपको कंप्लेंट करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज अ पैकेज सोल्यूशन दैट वी मॉनिटर ऑन आवर ओन, and this particular clause we can enter in our SLA also कि सर आपको कंप्लेंट नहीं करनी, वी विल मॉनिटर इट. अगर ये डाउन रहा इतने इतने से ज्यादा टाइम, वी विल पे द पेनल्टी. So that's how we can go for the customized solution for EV. Then come domestic lease line services. It is a lease line again, so nothing more to explain here. Then ILL, it is again a lease line, but it is mainly used for this internet. Basically, it is a lease line taken by our universities, educational institutes for their students for having a internet connectivity in their hostels or in their college or जहाँ भी उन्हें जरूरत, classrooms and this thing. Then comes the intelligent network services, IN services. Most of you know that BSNL, whenever some new technology is being imbibed in this our organization, we also purchase this IN solution also. Sir, जी सर sir, बताएं. जी बताएं. sir, what is the basic difference in ILL and in internet? मतलब FTTH. नहीं सर, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब उसमें कोई बेसिक ऐसा डिफरेंस नहीं है. इट इज ओनली फॉर एक्चुअली फॉर इंटरनेट पर्पस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ILN. Basically, it is also a lease circuit. Hello. As a customer, ki you take ILL without instead of सर देखिए, internet. उसका मैं आपको एक एक एग्जांपल बताता हूँ. नाउ इट इज अ कस्टमर ओरिएंटेड वर्ड, और आपको चीज कैसे बेचनी है ये आपको आनी चाहिए. आप हलवाई की दुकान पे जाते हैं, गुलाब जामुन दो तरीके के मिलते हैं सर, काला और भूरा. उन दोनों में क्या फर्क है सर बताएं. इज देयर एनी मेजर डिफरेंस? राजन जी.
राजन जी। यस सर, यस सर। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्या उन दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है? दोनों ही गोल हैं, दोनों ही चाशनी में रहते हैं, दोनों ही मिठाई हैं। सर बीच में ऑफलाइन हो गया था, क्वेश्चन पूछ सुन नहीं पाया सर। नहीं, मैं आपसे, आपने पूछा कि आईएलएल और लीज सर्किट में क्या फर्क है। मैंने आपको ये बताया कि भाई इट इज ऑल्सो अ ली- लीज सर्किट, बट आईएलएल इज नहीं ऑल्सो। नहीं, लीज सर्किट नहीं, लीज सर्किट नहीं, इंटरनेट मतलब जैसे एफटीटीएच है सर। एफटीटीएच ब्रॉडबैंड में और आईएलएल में डिफरेंस क्या है? मतलब क्या हम एक कस्टमर को, मान लीजिए हम गए हाँ हाँ कहीं भी हाँ हाँ। और कस्टमर को रिक्वायरमेंट है कि हमें 50 एमबीपीएस का इंटरनेट चाहिए, ठीक है। तो उसको हमने प्रेफर किया आईएलएल के लिए जी बिल्कुल। एज ए ईबी, ईबी। ठीक। लेकिन वो उसका यूज 100 एमबी एफटीटीएच भी लेगा, उसमें भी हो जाएगा। तो ठीक है। क्या उसको जस्टिफिकेशन दे कि वो आईएलएल ले? ठीक है सर। अच्छा, जी आप ही बताइए सर, क्या डिफरेंस होगा? एक बार मेरे को एक बार बताइए, क्या क्या डिफरेंस है दोनों सर, हमें तो यही है, इतना ही पता है कि ये डेडिकेटेड लाइन होती है इंटरनेट की, अपलिंक डाउन अपलोड डाउनलोड सेम होता है। देखिए, क्या है जो आपका एफटीटीएच सिस्टम है या जो आपका ब्रॉडबैंड है, वो आपका सिक्योर्ड शेयर्ड, होता है। वो आपका शेयर्ड रिसोर्सेज पे चलता है। जी जी लेकिन जो लीज सर्किट होता है वो डेडिकेटेड आपके लिए होता है। जी, दैट इज वेयर ये द तो है, डिफरेंस लाइज। ये तो पता है। हाँ, तो तो दैट्स हाउ यू कैन कन्विंस द कस्टमर। भाई आप उसको और ज्यादा निटी ग्रिटी में नहीं फंसा सकते सर, आप उसको ज्यादा कन्विंस, उसको ज्यादा आप, अगर आप इसमें जाओगे कि सर इसमें एरर रेट ये होता है, या बिट्स एंड बाइट्स में जाओगे, तो वो हो जाएगा। आपको उसे उसके हिसाब से समझाना है। तो आपको तो उसे ये बताना है कि साहब ये अगर आप लीज लाइन पर जाते हैं तो डेडिकेटेड आपका और बीएसएनएल का एक कनेक्शन है जो सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा, इसमें और कोई बीच में आना ही नहीं है। भाई पर सर जो आईएलएल है वो तो इंटरनेट है, एज ए इंटरनेट यूज करेगा वो, सर पब्लिक इंटरनेट तो डोमेन में यूज यूज करेगा, करेगा। लेकिन किस सड़क, किस बैंडविड्थ पे यूज कर रहा है, वो तो डेडिकेटेड है उसके लिए। वहां वो शेयर्ड रिसोर्सेज के थ्रू इंटरनेट यूज कर रहा है, जो आपका एफटीटीएच है। यहाँ पे वो अपने डेडिकेटेड पाथ पे यूज कर रहा है। आपको इंटरनेट से नहीं कंफ्यूज करना, आपको ये उससे करना है कि जो बैंडविड्थ है वो किस टाइप की है, वेदर इट इज डेडिकेटेड और शेयर्ड। अच्छा अच्छा। जी, इंटरनेट तो सर दोनों पे ही दिख जाएगा। आप एफटीटीएच के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और एमएल आईएलएल के थ्रू भी। द ओनली थिंग जी इज वेयर यू आर गेटिंग इट फास्टर एंड हाउ यू आर गेटिंग इट। आप एक जगह से कहीं चीज एक ऑर्डर कर रहे हैं, आपके पास जो चीज चल के आ रही है वो आपकी बनाई हुई सिर्फ ऐसी सड़क से चल के आ रही है जो सिर्फ आपने अपने लिए बनवाई है। ILL is highly secured and providing a fixed bandwidth, not variable. सर देखिए, अगर आपने आईएलएल लिया, कोई लीज सर्किट लिया है, इवन इफ यू आर गो फॉर कस्टमाइज सेटिंग यू कैन गो फॉर इट, बट एफटीटीएस एक शेयर्ड सॉल्यूशन है ना, एक शेयर्ड है चीज है। आप उस पर अपने मुताबिक कोई काम नहीं करवा सकते, नहीं जी मेरे को इसको इसमें ये करके दो। वट एवर इज प्रेजेंट इन द डोमेन इट इज देयर। सो डेट्स वाई जो आईएलएल जो है वो इसीलिए एंटरप्राइज सॉल्यूशन का पार्ट है, बिकॉज देयर वी कैन कस्टमाइज इट। ठीक है सर, आगे चलें सर। ओके सर, ठीक है सर। देन कम्स द आईएन सर्विस सर। आईएन, व्हाट इज आईएन सर? हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमने जितनी भी बीएसएनएल आज की तारीख में न्यू टेक्नोलॉजीज हम लोग लेते हैं, उसमें उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का एक आईएन सॉल्यूशन जरूर परचेज करते हैं या प्रोक्योर करते हैं, वट एवर इज देयर। व्हाई वी गो फॉर आईएन? बिकॉज सर, एनीबडी सर हु इज हैविंग एनी आंसर? कोई बताएगा सर कि भाई आईएन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? टोल फ्री नंबर्स। It's for prepaid services, sir, I think. प्रीपेड सर्विसेज, ओके, प्रीपेड तो सर हम वैसे भी दे देते हैं सर। और कोई, नहीं, चलिए ठीक है IN तो ठीक है प्रीपेड, चलिए ठीक है, मैं प्रीपेड को कंसिडर करता हूँ। एनी अदर सर नीड सर फॉर आईएन? ओके, क्या जरूरत है सर आईएन की? हम आईएन के हेलो। पहले तो हमने, जी सर बताएं। टोल फ्री सर्विस इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय आई। हाँ सर, टोल फ्री है सर, टेली वोटिंग है,
यूएएन है, प्राइमरी एक्सेस प्राइमरी नंबर है, प्राइमरी रेट सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आईएन के थ्रू यूज करते हैं। बट आईएन की जरूरत क्यों है हमें? उसका रीजन ये है सर कि पहले भी आईएन जब नहीं होता था तब भी हमारे पास कई बार काम चलता था, में कोई दिक्कत नहीं थी, हमारी चीजें काम कर रही थी। बट एज सून एज द अदर प्लेयर्स एंटर इन टेलीकॉम मार्केट, तो जो कस्टमर के लिए जो सर्विसेज हैं वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए। इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट्स हमारी जो सर्विसेज थी वो बहुत जरूरी हो गई। जरूरी कैसे हो गई कि मान लीजिए सर हमारे पास कई बार ऐसा होता था कि बहुत सारे प्लान्स ऐसे होते थे कि हमने प्लान कुछ आपको ध्यान हो, हमने कुछ एसटीडी के कुछ प्लान्स होते थे पहले। पहले तो एसटीडी भी लगती थी लैंडलाइन सर्विसेज पे, तो उसमें ऐसा होता था कि रात की पल्स घटा दी या हॉलीडे पे पल्स बढ़ा दिया, कुछ ऐसा कि भाई वो जो चार्जेस हैं वो छुट्टी वाले दिन थोड़े से हमें कम लगे या ज्यादा लगे, इस तरीके से होता था। फिर जब मोबाइल आया तो ये चीजें और बढ़ गई कि भाई ये जो प्लान है इसमें रात आज रात से जो है ये जो ये पर्टिकुलर पल्स है ये इतनी हो जाएगी तो लोगों को कुछ टाइम के लिए फ्री मिलेगा। न्यू ईयर पे 2 घंटे के लिए फ्री कॉलिंग होगी, नाइट कॉलिंग फ्री हो जाएगी। तो क्या होता था कि जो हमारी जो ये सर्विसेज थी या जो भी हमारी ये चीजें थी जो हम कस्टमर को देना चाहते थे उसका रोल आउट बहुत स्लो होता था। बिकॉज वी हैव सम लीगेसी सिस्टम्स इन देयर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन कि भाई लेटर्स निकलते थे, चिट्ठियां निकलती थी, वो फैक्स के थ्रू जाती थी या पोर्टल पे अपलोड, तो पहले तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, पोर्टल ही नहीं था हमारा। तो फिर वो किसी तरीके से जाती थी, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट पीपल इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज। तो एक बड़ा एक चक्कर था, किसी ने उसको नाइट कॉलिंग मान लिया, किसी ने उसको अलग से इंटरप्रेट करा, उसने बोला नहीं कॉलिंग तो ठीक है नाइट में भी कुछ ऐसे, मतलब डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। तो होता क्या था कि जो कस्टमर के लिए आप डेडिकेटेडली जो कोई सर्विस देना चाहते थे उसका रोल आउट स्लो था एंड इट वाज नॉट इन द सेम एक्सपेक्टेड मैनर बट द आवर हेडक्वार्टर हैज एंटिसिपेटेड कि भाई जो भी हमारे कस्टमर्स हैं अगर उन्हें रात से कॉलिंग फ्री होनी थी तो वो ऐसा नहीं था कि 100% पे वो हो जाए। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ बंडल्ड प्लान आने लग गए कि भाई लैंडलाइन भी इतने पे और लैंडलाइन जो ये प्लान लेगा उसको इस वाले जो लैंडलाइन है इसमें इतनी कॉल्स फ्री हो जाएंगी, कुछ इस तरीके बंडल प्लान आने शुरू हो गए। तो उसमें दोनों में कि भाई इसको भी इंस्ट्रक्शन निकालो लैंडलाइन को भी और वी हैव टू पास द इंस्ट्रक्शन टू मोबाइल ऑल्सो। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन देन वी developed and procured this system that IN intelligent network service system is there। उधर हमने अपने सारे जो हमारी जो टेक्नोलॉजीज थी उन्हें हमने इंटीग्रेट कर दिया। नाउ वी विल गिव ओनली वन कमांड इन आवर IN सिस्टम, that particular system will take care of all the changes in all the exchanges and equipments। क्योंकि एक ये सिस्टम था, एक ये मैंडेटरी वो था कि अगर मैं कोई भी एक्सचेंज या स्विच या बीएससी बीटीएस जो भी लगाता हूँ उसकी मुझे कनेक्टिविटी आईएन सिस्टम के थ्रू आईएन सिस्टम तक लेके जानी, दैट हैज टू बी इंटीग्रेटेड, इट इज मैंडेटरी। वो इसीलिए होता था कि जैसे ही मेरे को मान लीजिए आप रात से कुछ फ्री करना है तो मैं आईएन में सिर्फ उसको चेंज करूंगा और वो पूरे सिस्टम में अपने आप रात रात क्या 2 मिनट में चेंज हो जाता था। तो मुझे किसी को अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी या अलग से इंस्ट्रक्शंस निकालने की जरूरत नहीं थी। आई विल आई विल हैव टू इशू द इंस्ट्रक्शंस टू आवर माय आईएन टीम। ओके, सो दैट इज द वन पार्ट ऑफ दिस आईएन सिस्टम, बेनिफिट्स ऑफ आईएन सिस्टम। सेकेंड इज कि जब मेरे पास आईएन सिस्टम लिया तो उसके साथ मेरे को कुछ बुके ऑफ सर्विसेज, आई गॉट सम बुके ऑफ सर्विसेज देयर फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरर। सो व्हाट आर दोस बुके सर्विसेज? लाइक यूएएन सिस्टम, यूनिवर्सल एक्सेस नंबर, टोल फ्री नंबर्स। टोल फ्री नंबर्स एंड यूएएन दे आर सेम। लाइक मारुति का नंबर है, टोल फ्री सर्विस है, आप मारुति के इंडिया में खड़े होके आप कहीं भी रिंग करिए, जो नियरेस्ट सर्विस सेंटर है वहां घंटी बजती है, आइदर ऑन लैंडलाइन और आइदर ऑन मोबाइल, वहां घंटी बजेगी और वो ही विल अटेंड यू। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज दैट पर्टिकुलर नंबर दैट इज ओपनड इन आईएन, ठीक है, एंड इट इज देयर, oh sorry, opened in local suite but it is mapped with IN system। okay, so whenever we call this particular number, ठीक है,
सो इट विल सर्च फॉर दिस कि भाई ये कहाँ से कॉल आई है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेगा, किस एक्सचेंज से आई है, उसके नियरेस्ट नंबर कौन सा मैप्ड है, आइदर इट इज मोबाइल और लैंडलाइन, उसको वहां वो घंटी भेज देगा। ठीक है, क्योंकि आईएन सिस्टम जो है वो आपस में भी कनेक्टेड है, लैंडलाइन का और मोबाइल का ये भी आपस में इंटीग्रेटेड है। So if it is meant for mobile, it will transfer the call to the mobile IN. IN वो search करेगा कि it is meant for which BSc, MSc. It will transfer the call to that particular. So that is how this system works. And one of you has very well brilliantly mentioned the police service, the 112 number, or previously it was 100. आप 100 नंबर ही डायल करते हैं, चाहे आप चेन्नई में खड़े हो या चाहे गुवाहाटी खड़े हो, चाहे आप गुजरात में अहमदाबाद में खड़े हो या आप लद्दाख में खड़े हो, कोई नंबर चेंज नहीं होता। आप 100 डायल करते हैं और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिंग बजता है। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज ओनली थ्रू आईएन सिस्टम नाउ। एंड समटाइम्स आई डोंट नो हाउ इट इज प्रेजेंट डे सिनेरियो क्या है। आई थिंक कई 100 नंबर जो हैं वो तो पुलिस स्टेशन के आजकल मोबाइल नंबर पर भी मैप्ड है, जो वहाँ के कंसर्न इंचार्ज है उनके मोबाइल नंबर पर ही मैप्ड है। सो इट इज लाइक दैट। और अगर वहाँ कोई नियरेस्ट वो नहीं है तो इट इज गो टू दिस पर्टिकुलर जो भी 100 का जो वो जो क्या बोलते हैं कंट्रोल रूम जो होता है वहां ट्रांसफर। सो दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू आईएन। सो जो इसके जो बुके ऑफ सर्विसेज है वो हम एज ए ईबी सॉल्यूशन देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एसबीआई का कोई कस्टमर आया, एसबीआई ने हमसे बहुत जगह कनेक्टिविटी ले रखी है, सो एज ए कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, और हम उनसे क्या करते हैं, हम उसे एक आईएन का यूएएन नंबर दे देते हैं कि सर आपको एक टोल फ्री नंबर और एक मतलब एक टोल फ्री और एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर आपको दे देते हैं। आपके कस्टमर्स इसमें कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको कभी भी डायल कर सकते हैं। So that's how we provide the complete solution. ओके सर, ये वाली सर्विसेज जो है ये आईएन पे थी, फ्री फोन, यूनिवर्सल एक्सेस, प्रीमियम रेट सर्विसेज। प्रीमियम रेट सर्विस आपने सुन देखी होंगी, कई बार मैसेज आते हैं कि नंबर डायल करिए और अपना भविष्य जानिए। तो उसमें क्या होता है, रिवर्स चार्जिंग का कंसेप्ट होता है। मतलब आप कॉल करोगे आपको चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जिसको कॉल जा रहा है वो आपका पैसा पे करेगा। So this reverse charging concept, it is possible only through IN. Then voice VPN is there. जैसे हमारा MPLS में VPN है, एक वॉइस VPN भी होता है। मान लीजिए अगर चार कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 4 जगह मेट्रो सिटीज में हेडक्वार्टर है, एंड ही वांट सम सीयूजी अमंग देम, तो वो क्योंकि अलग अलग शहर में अलग अलग स्विच से जुड़े हुए हैं, तो अब लेकिन वो अगर वो सीयूजी मांग रहा है उनके बीच में, तो इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू वॉइस VPN थ्रू आई। वो आपस में शॉर्ट कोड डायल करके दिल्ली में नंबर मिलाएगा, तुरंत नंबर मिल जाएगा। देन आईटीसी कार्ड, एसीसी कार्ड, दीज आर ऑल डिसकंटिन्यूड नाउ, बट 2000 जो अर्ली 2000 जो थे उसमें तभी काम करते थे, बट ये आईएन से ही काम करते थे। देन कम्स मैनेज सर्विसेज। दीज आर द लेटेस्ट बज़वर्ड इन आवर टेलीकॉम सिनेरियो। मैनेज सर्विसेज, एमएनएस जिसको हम बोलते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, मैनेज में बहुत सारी आती है, मैनेज को लोकेशन और मैनेज को लोकेशन सर्विसेज, मैनेज नेटवर्क सर्विसेज, मैनेज आईटी सर्विसेज। ये सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनमें हमें एक सिंगल विंडो, हमें कोई एक सर सर शॉर्ट स्क्रीन आ रही, कटी कटी स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन ठीक से नहीं आ रही? नहीं सर। अच्छा, आपका लोकल कोई इश्यू हो सकता है, ये ओके आ रही है, आप उसको थोड़ा वो कर लीजिए ठीक। कई बार जो है ना। ओके सर, ओके ठीक। तो मैनेज सर्विसेज क्या है सर? मैनेज सर्विसेज में हमारे पास जो कंपनीज हैं, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट बज़वर्ड इन आवर एंटरप्राइज सेक्शन। तो कंपनीज क्या है, दे कम टू अस एंड गिव अस देयर रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग दीज आईटी, वेबसाइट एंड ऑल दीज सर्विसेज कि भाई आई वांट बीएसएनएल टू मैनेज माय आईटी सर्विस। सुनने में बड़ा आसान सा और छोटी सी चीज लगती है यार, आईटी का क्या है, आईटी तो कोई भी मैनेज कर सकता है, बट इट इज अ बिग सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करते हैं, बीएसएनएल का जो ईबी सेल है, दे डिजाइन एंड कस्टमाइज दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन कि ठीक है भाई आईटी में क्या क्या चाहिए होगा। कुछ यूएसबी हब्स रिक्वायर्ड है, कुछ लैन केबल्स रिक्वायर्ड हैं, कुछ राउटर्स रिक्वायर्ड हैं, पीसीज रिक्वायर्ड हैं। और ये सब इससे एक जो जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर जो है, कस्टमर को क्या फायदा होता है,
बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका उसे ज्यादा टेंशन लेने या उसके लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं होती। लाइक अगर मेरे को किसी कंपनी ने बोला कि भाई यू यू प्रोवाइड द PCs along with the softwares and hardwares and all these things you have to manage. No doubt he is paying for that. लेकिन क्या है उसमें उसको एक गारंटी क्या रहती है कि अगर मान लीजिए आगे चल के वो पीसी जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है ऑब्सोलीट हो गई, दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज आल्सो टेकन बाय आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, अगर आपका पीसी अब भाई ये काम नहीं कर रहा तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ऑब्सोलीट हो गया तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। फायरवॉल अगर ऑब्सोलीट हो गई या उसका नया वर्जन आ गया, वी विल अपडेट इट। So for these particular things, now customer don't have to bother. These particular things, the botheration will be on the solution provider part. Yes, but the solution provides a guarantee कि भाई ठीक है, आपका जो डेटा इट इज हाईली सिक्योर्ड, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट एंटर्ड इन द सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अगर उसमें अगर फायरवॉल का कोई मॉड्यूल जो है वो अब अपडेट नहीं हो रहा है तो ये मुझे देखना है, वो नहीं बोलेगा कि भाई आपको ये चेंज करना है कुछ करना है, क्योंकि मेरे पास इस सर्विस लेवल पे मैंने उसे गारंटी करा हुआ है। तो आई विल ऑलवेज रेगुलरली मॉनिटर कि भाई कोई ऐसा तो नहीं मॉड्यूल एक्सपायर हो गया हो या ऑब्सोलीट हो गया हो, तो मैं उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करके प्रोएक्टिवली सुओ मोटो अपने आप उसको चेंज कर दूंगा या अपडेट कर दूंगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग। वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा रेवेन्यू फॉर दिस पार्ट बिकॉज वी आर टेकिंग, भाई तुम तो कुछ कर नहीं रहे, कस्टमर को बोलेंगे भाई आप तो कुछ देख नहीं रहे, आप मैं ही देखूंगा, तो भाई यू हैव टू पे सम प्रीमियम अमाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वो एग्री भी हो जाता है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। He doesn't have to bother for running his network, and on the other side the solution provider he is getting some handsome or smart revenue out of it. So that is how we are managing this thing, BSNL managed solutions। और बहुत छोटी छोटी चीजों की सर सर्विसेज है, लाइक मैनेज को लोकेशन, वेब मैनेज वेब होस्टिंग सर्विस। मान लीजिए मैंने अपना एक सर्वर ले रखा है, उसमें मैंने अपनी वेबसाइट होस्ट कर ली है, उस पर मेरे पास कुछ स्पेस खाली है उस सर्वर पे। अगर मेरे को कोई कंपनी कहती है कि सर आप मेरे को उस पर वो दे दो, कुछ स्पेस मुझे भी दे दो, आई विल पे यू, क्योंकि मैं सर्वर अपना नहीं खरीदना चाहता अलग से, वेबसाइट मेरी है और आपको सिर्फ उसे होस्ट करना है। और मैं भाई सर्वर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, विच सर्वर टू बाय एंड हु विल मैनेज इट। तो आप मेरे को वो जगह दे दीजिए सर्वर पे, you host my website, I will pay you the charges for its that particular space and including the maintenance also। जो भी आप उसकी मेंटेनेंस करेंगे उस सर्वर की, उसके चार्जेस भी आई विल पे टू यू। एंड समटाइम्स द कस्टमर वांट्स द पैकेज सॉल्यूशन, सर यू विल डेवलप माय वेबसाइट आल्सो, so we will request our the EB cell of corporate office, they will request our specialized units in ITPC to develop the particular site and get it hosted on our server, on BSNL server, and manage it. But he has to pay, that particular customer has to pay the premium amount, like he has to pay the amount for managing it. Whatever we are spending the on salaries of the engineers and our officers who are maintaining it, whatever charges we are incurring, the expenditure we are incurring on AC, on our infra, if it is a lease site, तो जो भी हम किराया दे रहे हैं उसका किराए का सारा, तो वो सब हम उससे एक वर्केबल पूरा निकाल के एक अमाउंट और उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट बताते हैं, भाई यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट, देन ओनली वी कैन, दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज फीजिबल। नो डाउट वी प्रोवाइड सम कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज ऑल्सो, कि ठीक है आप अगर इतना सारा प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हैं, वी विल प्रोवाइड अ DR सॉल्यूशन ऑल्सो फॉर इट। इफ दिस प्राइमरी सर्वर फेल्स इट विल रन फ्रॉम द our DR side। So that's how we are providing the managed services, managed co-hosting, managed server services, managed IT, lot of services are there। Then software as a service, we are all know it is also a part of managed services। Managed business mail, we have our this particular, we are own NIC system। आपको इससे पहले याद हो हम लोग, हमारा अपना एक BSNL का सर्वर था, वी आर मैनेजिंग इट, तो वो पहले हमने अपने लिए लॉन्च करा था। फिर कुछ कंपनीज ऐसी हैं विच आर नॉट
मतलब that big enough and they want some their own business managed email system. तो वो BSNL से डेवलप करवाती, सॉरी, तो वो लोग हमसे सॉल्यूशन लेते रहे कि सर आप डेवलप कर दीजिए एक हमारा ईमेल सॉल्यूशन एंड वी विल यूज इट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर आवर इंटरनल कम्युनिकेशन. So many or companies that time when BSNL was having its own email system, they got developed that system from BSNL itself. So that's how, because जो BSNL का ईमेल सिस्टम था वो हमारा ही अपना पार्ट था, हमने अपने इंटरनल सिस्टम के लिए डेवलप करा था. But we offered that particular service as an enterprise solution also, because many companies are there who are not so big and they are not having so much this particular thing, but I can say that revenue them with them, finances with them, कि भाई वो इतना पैसा खर्च कर सकें कि वो अपना ईमेल सिस्टम डेवलप करवाएं किसी को. तो वो ये सारी चीजें हमें दे देते हैं क्योंकि इन्हें पता है BSNL को दिया तो भाई एक तो सिक्योर सिस्टम होगा, रिलायबल होगा, इन सब चीजों की वो रखते हुए वो दे विल गेट द सॉल्यूशन फ्रॉम BSNL. ग्लोबल कॉन्फ्रेंसिंग सर, ग्लोबल कॉन्फ्रेंसिंग हम पहले हमने VC जो हमारी कॉन्फ्रेंसिंग, आपको ध्यान हो जो आजकल तो बहुत नाउ-अ-डेज VC इज लाइक अ चाइल्ड. हमें अगर VC करनी होती है हम जूम को लॉग इन करते हैं, और जूम भी छोड़िए सर, आजकल तो people are doing VC through WhatsApp call, because so many basic features are there in WhatsApp call also, video call. So VC was there, but in previous times in early 2000s, this video conferencing labs are there, specially designed rooms are there which are having dedicatedly high bandwidth connectivity with good cameras and good speakers, all these things. So these VC labs were there to conduct this video call conferencing through different our different units. But that particular video conferencing labs we have developed for our own purpose, because हमारा corporate जो था headquarter था, they want some face to face talk with our circle heads or some other organizations to discuss some important things, because traveling uh, waste so much time. That's a precious time of any organization and any employee working in it. So to save on that particular aspect, video conferencing was developed. बट हमने क्या करा सर, उसके बाद हमने देखा कि भाई ये हमारा जो फीचर है, कोई ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही VC करते हैं. सो वी ऑफर्ड दिस फॉर एज एन एंटरप्राइज सर्विस ऑल्सो. So those who are big corporates are there, they do hire our video conferencing lab. We do have some bookings and reservations for our VC lab still till now, nowadays also, because these have some dedicated infra is there. But no doubt that particular requirement is reduced nowadays because of all these Zoom and this online platforms, but it is still there. Okay, sir. BSNL global conferencing, then managed hosted email that I have already told you. IDC is there, BSNL IDC Internet Data Center. We are having, I think, 5 to 6 locations are there where we are having our internet data center. So this particular data center, this we have developed for ourselves, because हमारे जो customers हैं उनका data हमें manage करना है, कहीं store करके रखना है. So we don't have so much of expertise, so we developed this particular IDCs for our own purpose. Okay, but we have hired this service from some third party, and we have hired quite a large amount of space on their servers or database. So we have some हमारे पास उसको कुछ जगह spare पड़ी थी, so we offered that particular space to our this customers. So whosoever wants to uh, put their data in some secured environment, they can hire the space from us. So many organizations are there, many corporates and customers are there who hired that particular space in IDC servers or database, and they have some specialized authorizations are there for them to authorize to access that particular data from our data center.
तो वो डेटा वहां उनका रखा हुआ है और उनको हमने स्पेशलाइज्ड लॉगिन आईडी और ये सब दे रखे हैं, उसके थ्रू वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने, जरूरत तो हमारी थी, बट लेकिन चूंकि उस पर जगह कुछ खाली पड़ी थी तो हमने उसे एज ए एंटरप्राइज सॉल्यूशन में शामिल कर, कि भाई ठीक है अगर आप हमसे नेटवर्क कनेक्टिविटी लेते हो तो अगर ठीक है आपका कुछ कनेक्ट डेटा जो हमारे पास आएगा कुछ कस्टमर्स का, उसे हम सेव भी करते रहेंगे। दैट्स हाउ वी प्रोवाइड द सॉल्यूशंस। Hello, sir. जी सर Where बताइए। the where the situated in this data center? क्या चीज? कहाँ पे है सर ये डेटा सेंटर? सर इसकी लोकेशन एक फरीदाबाद है जो मेरे को अपने नॉर्थ में पता है, और कुछ इसमें पहले भी लिखी हुई है, देखिए आप, अहमदाबाद, फरीदाबाद, एक नोएडा में थी वो शायद बंद हो गया, धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। फरीदाबाद आई नो इट इज स्टिल वर्किंग, अच्छा इट इज देयर। क्योंकि ये हमने क्या है ना सर, इट इज वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर वेरी स्पेसिफिक पर्पज। द मोस्ट ऑफ द जो हमारे जो पानी पिएगे। फील्ड ऑफिसर्स हैं शायद दे माइट नॉट बी नोइंग अबाउट दिस थिंग, but the people who are working in that particular data centers like the Faridabad BA, some of the people they are working in that IDC, so they know all the details there. Okay, sir. Thank you. ठीक है सर। एंड okay sir, this is how this is all about our enterprise services and co-location IT that I have already told you. That video conferencing service na sir, it is given a name V Sangoshti, virtual Sangoshti. Sangoshti means conference sir. Hindi it is called Sangoshti. Then fleet tracking is another service sir. The company that whatever whosoever the customers who are having that mobile services there, so what we provide sir, हमने क्या करा है, हम सिम तो सर सबको दे ही रहे थे सर। हम सारे कस्टमर्स को अपने जो पोस्ट पेड सिम्स हैं, प्रीपेड सिम्स हैं, वो हमारे पास से ले रहे थे। हमने क्या एक दिमाग लगाया बीएसएनएल ने, एंटरप्राइज सेल ने, ईवी सेल ने, हमने उन्हें बोला कि हमारा जब भी आपका आदमी, जो आपका कस्टमर जो है, जब भी आपका एम्प्लॉई या जो आपके ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो आपके जो भी वैन ड्राइवर्स हैं, वो जब भी हमारे बीटीएस के पास से गुजरेगा वो सिम से उसकी लोकेशन उठा लेगा तुरंत और उसको उठा के आपको फैच कर देगा। तो जो लोग, जो ओनर है उसे पता लग जाता है कि भाई मेरा व्हीकल जो है इस टाइम कौन से, वो बीटीएस की लोकेशन बता देता, भाई फलाना कानपुर फलाने के उसके पास आपका कहीं ट्रक है। वो हो सकता है उसमें कुछ वो दूरी हो भाई 200-300 मीटर या 500 मीटर की, लेकिन उसको एक आइडिया हो जाता है कि भाई फलानी एरिया में वो इस टाइम पास कर रहा है। दैट इज हाउ फ्लीट ट्रैकिंग इज वर्किंग। बट ये एसएमएस भेजना, किसी कोई पर्टिकुलर सर्विस मैसेज को फेच करना, इट इज डूइंग, वी आर डूइंग फॉर आवर ओन पर्पस सर, बट नाउ वी हैव रियलाइज दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट वी कैन रियलाइज फॉर अर्निंग द रेवेन्यू ऑल्सो। तो जितने ट्रांसपोर्टर्स हैं और जितने फ्लीट सर्विसेज हैं, हमने उन्हें ये चीज बता दिया कि सर आप हमें हमसे सर्विस हायर करिए, तो आप हमें नंबर दीजिए सारे, हम उनसे आप लोकेशन आपको टाइम टू टाइम हर 15 या हाफ एन आवर बाद आपको लोकेशन भेजते रहेंगे। That's how it is working. Somebody has asked, what is V Sangoshti? V Sangoshti is, but I have already talked earlier, conference, video conferencing. The conferencing, it is, in Hindi, it is called Sangoshti. So virtual Sangoshti means virtual conferencing, video conferencing. ठीक है sir? So that is all about our, this thing, EB services, sir. So now we will move to our another session, this SLA. Any doubt in this session, sir? Anybody is having any doubt, sir? You can ask. सर एसएलए के फुल फॉर्म क्या थे सर? सर्विस लेवल एग्रीमेंट सर। अभी आ रहे हैं सर, उसी उसी को स्टार्ट कर रहे हैं।
सर पिछले उसमें किसी को डाउट है सर कुछ? सर ये एनोटेशन प्लीज इसको बंद कर। सर पिछले सेशन में इज देयर एनी डाउट सर? देन अदरवाइज वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट सेशन सर. Okay, sir. Oh, everything okay, sir. Move on, please. Okay. Then we will move to our next topic, that is SLA. So SLA, sir, I have already told you that it is sir, is it visible, sir? The screen is visible in this manner? Okay, sir. Yes, sir. Okay, okay. I will run this PPT in this format because otherwise it is in auto run mode. So it will be difficult for both of us, you and me also. Okay, sir. So our next topic is service level agreement. As I have already told you that service level agreement, sir, whenever we are providing some, we are committing some services or guarantees something to particular customer. So कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना रिटर्न में कि हाँ भाई तब आपने ये बोला था, ये होना चाहिए था. It has been committed, it has been guaranteed by you at that particular time. Okay, this particular time you have guaranteed this thing that it will be available. So something, this particular sort of thing should be there. And if some defaults on his commitment, then what will be the penalty? What will be the punishment for him? So that's the basic requirement of SLAs, service level agreement. And this you will find this particular agreement in case of services only. Because product, what is product? आपने किसी को एक प्रोडक्ट लिया, बेचा और वो उसके जो ट्रांजेक्शन है वो वहीं खत्म हो गया. ओके, बट सर्विस इज अ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप. भाई मेरे को सर्विस देनी है आज, आपको इतने समय तक देनी है, क्योंकि वो इट इज अ नॉन टेंजिबल एंटिटी. दैट्स व्हाई दिस एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड. So most of the solutions in enterprise cell what we are providing to our customers, it is bound to be accounted or jotted down under some particular agreement which is called service level agreement. ठीक है sir? Then service level agreement or an SLA is a contract between service provider and its customer. This we have already understood that it is an agreement between two parties. One is service provider, or I precisely say here it is the solution provider, and the customer. The customer can be either internal or external depending on the organization and service arena. ठीक है sir? Customer can be either internal or external. अब आप इस चीज को देखिए, एक्सटर्नल कस्टमर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इन आवर प्रीवियस सेशन कि अगर कोई एसबीआई है या कोई और कस्टमर है, वो आया, उसने हमसे कनेक्टिविटी मांगी, हमने उसे जो भी प्रोवाइड करा, ही इज एक्सटर्नल कस्टमर. इंटरनल कस्टमर्स कौन से हैं सर? वहां क्या सर्विस लेवल एग्रीमेंट है? द बेस्ट एग्जांपल इज आवर ओन. जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं सर, जब भी हम डिपार्टमेंट एंटर करते हैं, तो हमसे बहुत सारी अंडरटेकिंग, बहुत सारे ये साइन करवाए जाते हैं कि भाई मैं
कानून का पालन करूंगा, आई विल अवॉइड बाय द सर्विस रूल्स, आई विल अवॉइड बाय द conduct and disciplinary rules, I will be a good moral character, I will not indulge in this particular political activities, I will not indulge in anti government activities. ऐसी सारी चीजों को हमसे अंडरटेकिंग ली जाती है. So what is that? It is actually a part of SLA, service level agreement, and whatever committed to us. जब वो एडवर्टाइजमेंट निकलता है उसमें सब लिखा रहता है कि भाई आप हमें ज्वाइन करो, हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे. यू विल ज्वाइन अस, वी विल प्रोवाइड यू दिस मच सैलरी. You will join us, we will provide you this much, your this promotion aspect. You will join us, we will provide you this type of house. You will join us, we will provide this particular type of education to your children. ठीक है? Both sides, some of the things which are in written and signed manner. So these are internal service level agreement. Something which are committed by department, something which are committed from on behalf of, which are committed by employees. Then through an SLA, service provider states the terms and that take and required towards this we have already discussed कि दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो वो कमिट करते हैं. लाइक कि भाई अगर मैंने कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देन आई विल टेक केयर अबाउट द सॉल्यूशन प्रोवाइड इज सेइंग दैट आई विल टेक केयर अबाउट द ऑब्सोलिसेंस एंड इट्स अपडेशन. ठीक है, आई विल टेक केयर अबाउट इट, बट on that particular part, if I fail, I will pay this much of penalty. But as it is a premium service and I am responsible for this particular task, then you have to provide me this particular amount quarterly, because I have to be on my toes. I have to be always alert for this particular aspect. So you have to give this particular payment quarterly in addition to the annual amount under the agreement. Okay, this is particularly agreed. But if you fail to provide this amount by quarterly, then you have to make this much penalty in the next one. तो दोनों के लिए जिम्मेदारी है, दोनों के लिए नुकसान भी है. नुकसान तो मैं इसमें कभी कुछ नहीं बोलूंगा, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, बिकॉज बोथ आर गॉट बाइंड नाउ इन बाय दिस लीगल agreement. Okay, an SLA helps service provider describe the scope of work and by doing so exempts them from any unwanted liability. It is a very good point because अगर आप उसी में define कर दोगे कि किसकी क्या responsibility है, that solution provider says I will provide the equipment, I will provide the connectivity, I will provide this, I will provide that, but the infra and building, the AC inside the building, the security guard for securing the building, that will be provided by you. Clear cut, all the terms and conditions should be demarcatedly, exhaustively mentioned in that particular SLA. So people, both the sides has to be very, very, very alert while drafting an SLA. कोई unnecessarily का clause ना उसमें enter हो जाए and कोई unnecessarily की responsibility ना हो. So make sure that the SLA, whatever we have drafted the SLA, it is agreed to both the sides. Only then it should be signed. Otherwise, it will go to litigation. Okay, sir? Then what is a service level agreement for customers? And SLA gives them a clear idea about the work that can be done and any exclusion, which helps them from compare the service provider with other and make an informed decision. इसमें कस्टमर को पता लग जाता है कि भाई उसका क्या काम हो, वो क्या काम करेगा और जो दूसरी पार्टी है वो क्या काम करेगी. So it is a very clear cut, a very good document for going for any solution provider. If BSNL is going for any solution from some other third party, we should have a service level agreement. Like field में channel partners हैं हमारे, they have committed something for us. So they have agreed and entered into an agreement at corporate level or at circle level. ठीक है, आप हमें इतना रेवेन्यू शेयर, हम आपको BSNL कहता है we will share our revenue with you, but in turn you have to do this much work, commit that work to us, and that's why there are penalties also for them. If you don't bring this much of revenue or this much of business to BSNL, we will have a right to deduct this much of penalty from your commission amount. So that is how this particular SLA works. Now, how to draft it?
It's a very important document. So what are the objectives and what are the key ideas how to draft it? First of all, we have to identify what is the goal and objective of our SLA. For what purpose we are defining, what purpose we are drafting this SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट. ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और उसको आइडेंटिफाई करके सही वर्ड्स में लिखना, to jot it down in actual words, it is also very important. Like the objectives of these agreements are provide a thorough understanding of service ownership, roles and responsibilities. This agreement represents a concise description of the services provided by service provider and match perceptions of expected service provision with actual service support and delivery. कि इसमें सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाएंगी दोनों पार्टीज की. इन एडिशन परसेप्शंस भी बता सकते हैं आप इसमें कि भाई एक्सपेक्टेडली इतना रेवेन्यू आ सकता है, एक्सपेक्टेडली. ठीक है, बट हमारा जो एक्चुअल सर्विस सपोर्ट एंड डिलीवरी है वो ये है, उसमें इतना है. लेकिन हाँ, अगर हम इतना काम करेंगे तो इतना मतलब अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि बोथ द पार्टीज विल एग्री टू. ओके सर, इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है. देन व्हाट डज अ सेल्फ service level agreement consists of? A basic service level agreement acts like a list which actually defines what work can be done, what is excluded. ये हम already discuss कर चुके हैं. ठीक है सर. Then these are the 5-6 important points of service level agreement. ये हमें ध्यान रखने जब भी हमें कोई SLA ड्राफ्ट करना है. First is implementation, performance, financial requirements, operational responsibilities, governance, then periodic review. इन 6 पॉइंट को हमें हमेशा ध्यान रखना है. इसके मुताबिक ही सर हमें हमेशा अपना SLA ड्राफ्ट. फर्स्ट इज इट्स इम्प्लीमेंटेशन क्लॉज, देन परफॉर्मेंस क्लॉज, देन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. इम्प्लीमेंटेशन कैसे इम्प्लीमेंट होगा, परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस को जज कैसे करना है कि भाई ये कुछ पैरामीटर्स बताएंगे ना कि हाँ भाई इसने ये परफॉर्म कैसा कर रहा है. भाई मेरे को इसको इतने पैसे देने हैं तो किस परफॉर्मेंस में देने. मेरे को चैनल पार्टनर, आई हैव टू पे चैनल पार्टनर 10% कमीशन इफ ही ब्रिंग्स मी 10 lakhs ऑफ या 10 lakhs ऑफ बिजनेस इन पर्टिकुलर क्वार्टर. दिस इज हाउ वी हैव टू मेजर द परफॉर्मेंस. कहीं तो हमें कुछ बताना पड़ेगा ना कि किस बेसिस पे हम उसकी जो हमें जो कमिटेड जो उसका पैसा है वो देना है या नहीं देना. So that is how we have to judge the performance. Then financial requirement, कि क्या क्या फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स हैं उन दोनों की तरफ से, किसको कितनी पेनल्टीज देनी है, किसको कितना पेमेंट करना है, कितने टाइम पर करना है. that are all, these are all the financial requirements. Then operational responsibilities, कि जब वो सॉल्यूशन जब इन वर्क हो जाएगा. ठीक है सर, पहला था इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट के टाइम क्या होगा. देन जब वो पूरा इम्प्लीमेंट हो गया, अब ऑपरेशनल मोड में आ गया है, तब उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है. हु विल प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी, who will provide the AC, who will provide this particular thing, transportation cost, everything, every bits and bytes, these had to be jotted down in this agreement. Then governance, who will govern that particular agreement. भाई दो पार्टी हैं, उन्होंने आपस में बैठ के कुछ डिसाइड कर दिया, बट एक कोई ऊपर भी तो एक कोई आदमी होना चाहिए ना कि हाँ भाई मैंने देख लिया भाई ये सब ठीक है बिल्कुल. ठीक है, कोई एक ऐसी पार्टी या गवर्नेंस. जनरली क्या होता है कि जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो हायर अमाउंट के होते हैं, दे आर रजिस्टर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू हैव समथिंग अबव बोथ द पार्टीज. ठीक है भाई इन दो पार्टीज के ऊपर भी कोई है. लाइक टू ऑर्गेनाइजेशन हैज एंटर्ड इनटू एन SLA लाइक BSNL एंड SBI, बट हु विल गवर्न देम. ठीक है, तो वो होता है. देन पीरियोडिक रिव्यू, एट व्हाट टाइम वी विल हैव द रिव्यू ऑफ दिस एग्रीमेंट. मान लीजिए 3 साल तक बहुत अच्छा चला, नाउ वी हैव टू रिव्यू द एग्रीमेंट कि वेदर वी विल कंटिन्यू दिस एग्रीमेंट इन द सेम लेटर स्पिरिट or we have to modify the terms and conditions. That's how we have to periodically review it. Okay sir, so these 6 points, they are very important sir. Please note it down somewhere. It is very very important. If at all some agreement or some कुछ आपके पास कोई काम आता है, आप ये 6 पॉइंट अपने पास रखिए. Then these are explained here, all the 6 points. Implementation, this covers the scope of work. Then performance consists of performance metrics that list outcomes and certain agreed upon output.
कि परफॉर्मेंस हमें चेक करनी है। ये बोल रहा है ना कि द लिस्ट ऑफ आउटकम्स एंड सर्टेन एग्रीड अपॉन आउटपुट, लाइक आई हैव ऑलरेडी कोटेड वन एग्जांपल that I will give 10% commission to my channel partner if he committed to give 10 lakh of business per month to me or per quarter. That is how we can judge the performance. Then financial requirements, financial arrangements such as fee structures, adjustment, hikes, complete transparency is expected while listing out any variable factor. Very, very important. Here you have to put your brain here, sir, because in each and every simple, चाहे वो कितना भी इरेलीवेंट हो, बट उसको एक बार जॉट डाउन जरूर करिए अपने एग्री कि क्या बिट्स एंड बाइट्स हैं। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको लगता है कि नहीं ये पेनल्टी लगनी चाहिए तो पेनल्टी लगाइए, और अगर आपको लगता है कि नहीं इसके बेसिस पर उसे कुछ रिवार्ड देना चाहिए, दैट शुड ऑल्सो बी देयर, कि अगर मैं इतने उस पर अगर परफॉर्मेंस पे अगर उसको कोई रिवार्ड देना है, दैट विल गिव मी बेटर अपॉर्चुनिटी और बिजनेस बूस्ट टू माई ऑर्गेनाइजेशन, पुट इट देयर। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर चीज निचोड़ के ही बिजनेस बढ़ेगा। अगर आपको आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपको अपने चैनल पार्टनर्स को भी मोटिवेट करना पड़ेगा, एंड हाउ दे आर मोटिवेटेड थ्रू रिवार्ड्स। तो आपको ये चीज भी लिखनी पड़ेगी, आपको उधर एंटर करनी पड़ेगी। देन ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज fall on the service provider that is relevant to the operational requirements of the service। कि भाई मान लीजिए चलते चलते आपकी कोई आईटी की रिक्वायरमेंट थी, पता लगा कि जो सॉफ्टवेयर था वो उसका वर्जन ही ऑब्सोलीट हो गया, उसका कोई वो ही क्या बोलते हैं उसका सपोर्ट ही कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, देन हु विल बियर द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अपडेटिंग इट। देन गवर्नेंस क्वेश्चंस, who does what, why, who answers for results, who decides what and answered in the गवर्नेंस। ये सब चीज का हमें पता करना है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो कौन उसको देखेगा, कौन क्या काम करेगा। तो गवर्नेंस की क्या इसका पूरा पकड़ रहेगी उसमें। एक्सेप्टेंस, कि जब भी कोई एग्रीमेंट साइन होता है सर, उसमें नीचे दोनों के साइन करे जाते हैं पार्टीज के, और उसमें विटनेस के भी साइन होते हैं कि भाई इनकी प्रेजेंस में ये साइन करा गया। अदरवाइज समडे इन फ्यूचर सम पार्टी कैन चैलेंज इट कि सर ये तो मेरे से जबरदस्ती साइन करवा लिया था सर, मैं तो इसके लिए एग्री नहीं था, मैं तो नहीं कहता था कि मैं अपडेट करूंगा, अब ये मेरे पर जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं कि भाई ये करो, नहीं तो मैं तो पेनल्टी काट। तो विटनेस होते हैं वहां पे दोनों पार्टीज के, एंड इन लार्जर अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट्स इट इज रजिस्टर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। बिकॉज हम कितने भी हमारे रूल्स रेगुलेशन सीडीए रूल्स हो कुछ भी हो, बट above all they all come under law of land, the court of law, all of this। सबसे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके नीचे ये सब चीजें आती हैं। तो अगर हम किसी एग्रीमेंट को हम कोर्ट ऑफ लॉ में अगर हम उसको रजिस्टर करा रहे हैं, सो वी आर गिविंग आवर कंसेंट टू दिस आवर constitution of our country, that we are now abide by all the provisions under it। ठीक है ना। Then the periodic review, I have already the revisions to the agreement shall be carried out every fiscal year। वो हम डिसाइड करते हैं कि भाई कितने टाइम बाद इसका रिव्यू होगा, वेदर ईयरली, एनुअली, वेदर 3 इयर्स के बाद, 5 साल के बाद। वो डिपेंड करता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन और व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट वी आर एंटरिंग। ठीक है, अगर कोई छोटा मोटा है तो हम बोलेंगे ठीक है यार चलने दो उसे, 3-4 साल बाद देखेंगे। हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट एंड यू थिंक इट इज बीइंग द मार्केट सिनेरियो इज चेंजिंग डे बाय डे, तो आप उसका रिव्यू एनुअली रखिए। लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर मैनेज्ड आईटी सर्विस, इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनी सोल्यूशन फॉर आईटी सर्विस, आईटी में डे बाय डे कुछ ना कुछ नया आ रहा है, एआई, आईओटी, सम न्यू सॉफ्टवेयर्स आर देयर, न्यू एप्स आर देयर। तो अगर आप पुराने लीगेसी सिस्टम में अगर आपने 5 साल का डाल दिया क्लॉज, तो आप उसी पुराने सिस्टम से ही काम करते रहेंगे। So better it is that you have to judge yourself. What is the optimum and what is the justified frequency for this periodic? Then all these 6 sections, they are now uh, uh, discussed in detail, like service agreement, service scope is there, service provider requirements, service assumption, service support, service request, and customer requirement। ऑल दीज आर देयर इन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है सर, सेक्शन ये हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर्विस प्रोवाइडर रिक्वायरमेंट क्या होंगी, सर्विस की एजम्पशंस क्या होंगी, कि व्हाट वी रिक्वायर, व्हाट आर द एजम्पशंस। लाइक मैनेज्ड आईटी सॉल्यूशंस में हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आईटी की जो सर्विस है, दे आर नाउ अप टाइम फॉर 99.9999%।
These are assumptions. Then service support, what type of support it is there under this agreement? Like an engineer should always be there 24/7. Okay. Then whatever major fault is there, type of fault, it should be rectified within 2 hours. If it is like a second grades level 2 fault, it will be in 8 hours. If it is matlab journal fault, it will be within 3 working days. Like this, support is there. Service request, then customer requirements will be there. Then service scope, what type of services for which we are entering into this agreement. So here we should write the name of services. Number 1, number 2, number 3. Clearly, what type of services, like IT solutions में भी जाते हैं. If you want to segregate in 2 parts like IT and network, then segregate it. First service is IT, then second service is network. So very, very intelligently, I can say very, you have to keep your eyes and ears open while drafting your this SLA. Then service provider requirements adhering to appropriate responses time associated service related incidents. I have already told कि भाई कितनी देर का fault है. अगर बहुत critical है तो 2 घंटे में ठीक हो, उससे ज्यादा है तो फिर भाई 8 घंटे में, और अगर जनरल फॉल्ट है तो भाई 3 वर्किंग डेज में हो सकता है. देन एडवांस नोटिफिकेशन टू द कस्टमर फॉर ऑल मेंटेनेंस, कि अगर कोई मेंटेनेंस होनी है सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, देन ही शुड गिव एन एडवांस नोटिस टू द कस्टमर कि भाई हम 3 दिन बाद आएंगे, एडवांस नोटिस होगा, आप अपना बैकअप वगैरह लेके रखिए. Such type of requirement, service provider requirement should be given. Then service assumptions, changes to services will be communicated and documented to all stakeholders. Whatever assumptions are there. And service management for maintaining adequate customer support of this agreement lists the available scope of services provided by service provider. This list detail regarding availability, monitoring and others relevant factors. वो हमने सर्विस assumption की वही उसी का ही एक derived part है जो हमने इससे पहले अभी डिस्कस किया. तो इसमें भी सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं. सर्विस सपोर्ट, ये अभी मैंने बताया था कि सर्विस सपोर्ट हमें कैसे करना है कि भाई ठीक है, हमारा जो ये जो ऑनलाइन नंबर, जो हमारा टोल फ्री नंबर है, कितने से कितने बजे तक, कितने वर्किंग डेज कौन कौन से रहेंगे, या 24/7 रहेगा. ईमेल सपोर्ट हमारा कौन कौन सा रहेगा, और जो हमारा एस्केलेशन मैट्रिक्स है वो क्या रहेगा, वो सब यहाँ पे आएगा सर्विस सपोर्ट. ठीक है ना. Service request की 0 to 8 hours during business for issued classified as high priority, then 48 hours for medium priority, 5 working days for low priority cases. These are service request की अगर कोई ऐसा होता है तो कैसे अटेंड होगा. Then customer requirements, payment for all support cost at agreed interval. कि अगर मैं ये सब चीजें सही से कर रहा हूँ जो सोल्यूशन प्रोवाइडर, तो मुझे पेमेंट भी टाइम से मिल जानी चाहिए. तो मैं उसमें सारा लिखूंगा माइलस्टोन पेमेंट्स, दोज आर कॉल्ड माइलस्टोन पेमेंट्स इन SLA. कि भाई अगर मेरा सारा कुछ ठीक है तो उससे पहले भाई मेरी क्वार्टरली इतनी पेमेंट आ जानी चाहिए. अगर मेरा ये सारा सिस्टम ठीक चलता है तो फिर मेरी इतनी पेमेंट आ जानी चाहिए. तो दीज आर कॉल्ड माइलस्टोन पेमेंट्स. तो वो सब वो भी एग्रीड अपॉन होनी चाहिए सारी चीजें. Then we have taken one example of this lease circuit uptime availability. How you are, but they have example how to draft an SLA for this type of particular. If you have some uptime, you are going for some lease circuit. So how you draft your this particular SLA. Other important conditions in SLA like force. These are the conditions which are by default they are there in every SLA. And they are quite rigid, I can say. Rigid or I don't say rigid, they are quite fixed. उसकी भाषा बिल्कुल लीगल टर्म्स के हिसाब से सब डिफाइंड है. आप देखेंगे it is there on BSNL procurement portal, it is there in procurement manual. So people generally copy them and paste in their SLAs. Force majeure clause is there. ठीक है कि भाई जो सारे ऐसे तत्व हैं जिन पे किसी इंसान का कोई किसी पे इंसान का जोर नहीं है, वो उनके उसमें नहीं है, कंट्रोल में नहीं है. द एक्ट्स विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन इन दैट पर्टिकुलर, बट दिस एग्रीमेंट टेक द रूट. लाइक कोविड, किसी को नहीं पता था कोविड में लॉकडाउन लग जाएगा, बट इट इज देयर. So it comes under force majeure. It is there that if some untoward condition is there which is beyond the act
which are acts of God, basically it is called, which are beyond the powers of human. तो उस केस में कुछ होता है कि भाई the agreement should subside for 6 months or these the agreement should 6 महीने की पेमेंट हो जाएगी और the bare minimum support should be provided. Like this force majeure clause is there. Then dispute resolution. This is very important. Some people think it is a very uh, some organization take it very casually. Dispute resolution. क्या होता है कि भाई मान लीजिए अगर आप दोनों के बीच में कोई मतभेद हो गया उसकी कोई क्लॉज या पेमेंट या पेनल्टी को लेके तो ऐसा तो नहीं कि यू विल गो फॉर सम फिजिकल असॉल्ट ऑन ईच अदर यू विल गो फॉर लिटिगेशन यू विल फाइल सम लॉ सूट और ऑन ईच अदर और वन पार्टी ऑन अदर so where this particular resolution should be resolved, what is that particular geographic location that is decided here? Dispute resolution. Normally, it is basically by default to be the location of the customer where he wants the services. Basically it is there. But अगर आपको अगर चाहते हैं agreed upon है, you can agreed upon some in between solution. वो मान लीजिए कोई चेन्नई में solution दे रहा है, कस्टमर दिल्ली का, you agreed upon लखनऊ. ठीक है, ओके, ठीक है, दोनों को ठीक है, क्योंकि दोनों के अपने एक ब्रांच ऑफिस लखनऊ में है तो दोनों एग्री करें. ठीक है, देन कहाँ किस कोर्ट ऑफ लॉ में ये रेजोल्यूशन होगा इसका? सो दैट इज डिसाइडेड हियर. देन वारंटी, पेमेंट टर्म्स, एग्जिट क्लॉज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है दैट वंस यू साइन द SLA it is bound upon you that you have to be in this particular what I can say in this particular SLA you are bound to be in there. No, you can exit the service level agreement, but some termination contract is there. You have to pay some charges or you have to provide this much of service support free of cost, at least 2 months advance notice. Like such type of clauses should be there in an exit clause. Then comes the modifications. It is always there in SLA in which we are procuring something or we can say for some service, purely service agreements also. Like if you are going for some managed IT solution, packaged IT solution from BSNL. Initially, you have gone for some 1,000 PCs or 1,000 systems. But later on, your business expanded and 200 more PCs are entered into it. Now, अगर 10-20 हो तो ठीक है, चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लॉज होता है कि 10 से 15% एडिशन और डिलीशन इज अलाउड इन SLA. भाई 1,000 के लिए वी हैव एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट फॉर 1,000 पीसीज, but practically we have found that there are only 950 PCs are there. So okay, it is okay. But if you have some major changes there, like 300 or 400 PCs are added into the system, then there should be some clauses there. Up to what percentage this particular modification is required, addition or deletion is required. मान लीजिए मैंने एक IT solution दिया और मैंने अपने सारे लोगों को उस particular project पे लगा दिया. Now I am spending my particular organization resources on that particular team which is maintaining that IT solution. And later on, by the end of second year, you have said, sir, we have now done, we are winding up our half of the business. So हम तो भाई अभी उसको 50% कर रहे हैं. You provide the solution, but 50% हम कर रहे हैं. और but 50% करने से मेरा तो सारा रेवेन्यू चला गया ना, मेरा जितना जो खर्चा हो रहा है, whatever revenue I was getting, it was now drastically reduced. So such type of drastic changes, modifications, they are not at all allowed. But some agreed upon percentage is always there in service agreements. But क्योंकि future nobody can predict how much addition or deletion should be there. So this much particular amount, this particular clause should always be there. Modification. Then comes sir फोर्स मेजर. सर ये सारे उन्होंने जो अभी हमने डिस्कस करा है सब उसको उन्होंने डिटेल में बताया. नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक सच एज प्लेग, कोविड, any event or circumstance, war, political events, chemical contamination, like this. Then penalty, how much penalty should be there? It should be defined there. Okay, sir. Sometimes some
सीलिंग इज ऑल्सो देयर। लाइक ऐसा नहीं है कि भाई सारा जो उसको पेमेंट होनी थी आपने सारा पेनल्टी में ही काट दिया, ठीक है। तो सम सीलिंग इट इज देयर, लाइक कि भाई मैक्सिमम पेनल्टी टू बी डिडक्टेड इट इज अबाउट 25% और द एग्रीड वैल्यू। Beyond that, you can't. This is the maximum penalty you can deduct because the solution provider, he is putting his resources and time and money also. वो अलग बात है कि भाई वो कमिटेड चीजों को मीट नहीं कर पा रहा, बट he has put some money and resources into it. So ये कहा जाता है लॉ ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ में कि भाई उसने पैसा तो लगाया ना, तो आप उसको ऐसा नहीं कि सारा उसका एलडी में डिडक्ट कर लो। बट ऐसा भी नहीं है कि ये पूरे उस पर लागू होता है। मान लीजिए उसमें कुछ एग्रीमेंट का पार्ट ये है कि आपको कुछ इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है, सेकंड पार्ट ये है कि उसे मेंटेन करना है। या अगर उसने प्रोवाइड ही नहीं करा और आप बोलोगे नहीं उसको एलडी नहीं लगानी है, उसको पेनल्टी लगानी ही नहीं, उसने कुछ दिया ही नहीं, आप उसके नहीं 25% काटोगे, और उसने कुछ दिया भी नहीं फिर भी उसे 75% दे दो, डेट शुड नॉट बी देयर। सो दैट पर्टिकुलर सिनेरियो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उस पर्टिकुलर पार्ट में आपको सोचना है कि उधर सीलिंग नहीं रखनी। But on service part, you can put some ceiling. Then dispute resolution, I have already told which jurisdiction you decide where you want to go for negotiation, disagreement, and all these things. Then warranty clauses, their period of contract, I have already told you. Payment terms, the milestones which are agreed upon, exit clause, then modifications, क्या वो allowed है या नहीं allowed है. Then this is how this is conclusion. Sir. So this is very important, sir, SLA, because day by day the paradigm is now shifting on enterprise section. Important, very important section, and SLA is integrated part of this enterprise sales. अगर आप एंटरप्राइज कर रहे हैं, आप कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा और आपको एसएलए ड्राफ्ट करना और उसकी नेटिग्रिटी आनी चाहिए. So this is all about the SLA, sir. If you have any questions, sir, you can ask me, sir. The session is open now. Calculation of uptime downtime is important, sir, in this. Sir. Actually, that I have told that they have given one example that how to draft an SLA for providing some lease circuits. So how to calculate that uptime, how to Hello, sir. Hello. Hello.
46 40 40 40 ఉన్నారు 40 40 మెంబర్స్ ఉన్నారు బాసు చెప్పు బాసు हेलो